Hello. तो बताओ पता क्या Good morning, all. Hello, Babita ma'am. Hello. Hello, Babita ma'am.
पीपीटी पे नहीं करके डायरेक्ट चल जाओ। हाँ उनको आ रही है। अब मुझे कहता हेलो अभी हमारी प्रेजेंट हो रही है ना ये। हेलो हेलो सुषमा मैम, क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हुआ सुषमा मैम? मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। सरस्वती की आवाज आ रही है, सरस्वती वंदना की। नहीं, वंदना की तो नहीं आ रही। शो हो रही है उस पे। शो भी नहीं हो रही शो भी नहीं हो रही ना। ना। शो भी नहीं हो रही है। अपनी चला जो, अपने उस पे है व्हाट्सएप पे, वो चला कुछ, अगर कुछ शो चल जाए नहीं हो तो। रही है। पहले बताओ कहाँ है सारी वीडियो। कॉन्फ्रेंस। गुड मॉर्निंग हरमीत मैम। गुड मॉर्निंग। ये प्रवीण को हटाना, प्रवीण को थोड़ा सा रोकेंगे मैम। हरमीत मैम ये चला दे, ये चला दे। अभी जो चलानी है तीनों वही चलानी है हाँ, लाइन से। ये जनगण मन है, ये चला और फिर सरस्वती वंदना चलेगी, ऊपर है वो। सबसे पहले क्या चलना है? ये चला देना जब तक सरस्वती वंदना, तो जब प्रोग्राम बिगिन होगा तब होगी। अभी मैम एक बार टाइम ट्राई पास कर ये रही हूँ चला मैं। पूरा। ये प्रेजेंट कर रही हुआ मैम? हरमीत मैम आई क्या? हूँ तो बोलो। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है मैम। नहीं आ रहा ना। वीडियो भी नहीं आ रहा। हाँ, वीडियो अब भी नहीं आई। आ रहा। आ गई, आ गई वीडियो। आवाज आई। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही है। वीडियो दिख रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। एक बार यहाँ से आवाज का देखना इसका। फोटो आ रहा है, मुझे आवाज आ रही है, उधर नहीं जा रही है। हम पहले आपने इसको ट्राई किया था ऐसा, मतलब जब तक ये वीडियोस वाला ऑन चलाते। नहीं होगा ना तब तक अकॉर्डिंग टू ट्राई मी करें। वीडियोस रन होती नहीं है, मतलब वॉल्यूम रन होती नहीं है। किस पे? हेलो, हेलो शारदा। हाँ, आवाज आ रही है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो रही। मैम प्रेजेंट हो रही है? आवाज नहीं आ रही ना हरमित मैम? नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा आई है अभी। नीलिमा बेटे, बेटे वो हुआ अभी। एक बार अगर आपने कर लिया तो उसे जरा प्रेजेंट करो।
मैं देखती हूँ नीलिमा दुबे। डायरेक्टली यूट्यूब पे चलेगा, मेरे में डाउनलोड नहीं हो रहा है। रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है, ये विन से रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है, ये विन से संभल जाएगा। हाँ, रख हौसला, ये वक्त भी धीरे से फिसल जाएगा। जो लड़खड़ाया देश है, ये फिर से संभल जाएगा। तू लड़ाई जारी रख, यूं हार के तू न थक। तेरे आंगन में देखना, फिर बहारें आएंगी। ये खोई खोई रौनकें फिर से लौट आएंगी। ये खोई खोई रौनकें। हेलो। हाँ बेटे, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा साका आप Good morning, ma'am.
A very good morning to one and all present in this National E-Conference titled COVID-19 Impact on Education in India. I, Harmeet Kaur, Assistant Professor in Mewar Institute of Management, a premier institution in higher education in Delhi NCR, would like to extend heartiest welcome to all the dignitaries, experts, our chief guests, chairpersons of today's programs, research scholars, and all the members of education fraternity who have joined us today on Google Meet app and on YouTube channel. My dear colleagues and my dear students, I would also like to extend my hearty welcome to our inspiration, guide and mentor, our director ma'am, and our head of the department, Mr. Amit Kumar, Dr. Babita Singh, our Deputy HOD. So let me begin the day's program with the blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge. I would request Dr. Sushma ma'am to play Saraswati Vandana.
अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे, वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को, मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे, वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। So, after the blessings of Ma Saraswati, we would like to welcome our guest of today's. As we have this parampara, Atithi Devo Bhava. So, let me take this opportunity to welcome our guest in a formal manner. For this, I would invite our head of the department, Mr. Amit Kumar. Sir, please. Amit sir. अमित सर, बबीता मैम सर को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। ओके। माँ शारदे को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम जिस विषय को लेकर के कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो बड़ा ही समसामयिक विषय है। और सबसे पहले मैं इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं उनमें डॉक्टर सुमनलता मैडम है जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नागली पूना दिल्ली से। उसके बाद डॉक्टर अश्वनी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से जुड़े हमारे साथ। इसके साथ अगले जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अजीत के बहोट असिस्टेंट प्रोफेसर जो जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हैं हमारे साथ में दिल्ली से। मिस्टर अंचित टेरेंस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि जुड़े हमारे साथ प्रयागराज से। और इसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर संदीप कुमार जो कि जुड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहले मैं मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बिहाफ पर और अपनी पूरी टीम के बिहाफ पर सभी गेस्ट स्पीकर्स का जो है बहुत ही अभिनंदन करता हूं और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ जितने भी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे व्यूवर्स हैं उसमें खास तौर से जो गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं बहुत दूर से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। काफ़ी सीनियर लोग हैं बहुत ही विद्वान व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करते हुए उन सब का भी अभिनंदन करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज जो विषय है वो
सब परिचित है कि जो कोविड-19 के कारण हमारे सामने जो चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, जो परेशानियां खड़ी हो गई हैं, वो खाली अपने इंडिया में नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में इसका कहर जारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब माता पिता और उसके बाद फिर अध्यापकों पर आ गई है, और आने वाले समय में माता पिता की और अध्यापकों की जो जिम्मेदारियां हैं वो और भी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अगर हम बात करें कि इस पैंडेमिक का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा, खासतौर से इंडिया में, तो इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम है, उसके ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे छात्र रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे भी है जो टेक्नोलॉजी से उतना अवेयर नहीं है। जहाँ तक आजकल हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं तो सबकी अप्रोच में भी नहीं है। और हायर एजुकेशन में तो फिर भी हम लोग सभी को जो है कुछ डायरेक्शन दे पा रहे हैं, कुछ उनको कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और वो जो सेल्फ स्टडी या सेल्फ लर्निंग से भी कुछ बात बन जा रही है, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग है और ख़ासतौर से जो टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसके हिसाब से बहुत लिमिटेशंस भी हैं। जहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन की हम लोग बात करें, वहाँ भी 10-12 के बच्चे फिर भी इससे थोड़ा बहुत लाभ उठा पा रहे होंगे। लेकिन जो छोटी क्लास के बच्चे हैं और ख़ासतौर से जो प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जो लर्निंग है या कह सकते हैं उनकी जो शिक्षा है वो बिल्कुल इस समय बाधित हो गई है। और इस समय पूरी दुनिया के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब पॉज में चले गए हैं और रुक रुक करके ज़िंदगी इस समय चल रही है। चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं, जो प्लानर्स हैं, गवर्नमेंट है, सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और कुछ बातों का प्रभाव हमारे ऊपर डायरेक्ट तो पड़ ही रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जिसका प्रभाव हमारे ऊपर इनडायरेक्ट पड़ा है और आगे आने वाले टाइम में और बुरा प्रभाव इस पर पड़ने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये विषय चुना गया है कि खासतौर से इंडिया में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके जो 3 लेवल्स हैं, और उसमें भी हमारा कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो रूरल बैकग्राउंड का है, रिमोट एरियाज़ का है, वहाँ तक तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि उनकी क्लासेज हो पाए, उनकी परीक्षा हो पाए, उन्हें आगे प्रमोट किया जाए और उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आगे बढ़े। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, छोटे क्लासेज के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज है। और टीचर्स को ये नहीं पता था कि ये समस्या इस तरह से आ जाएगी। तो जो भी टीचर्स इस समय अपना कर रहा है, तो पूरे इंडिया के जो टीचर्स इस समय ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जो उसके विकल्प तलाश रहे हैं और बच्चों को कनेक्टिंग लर्निंग से या उसके को कंटेंट से जोड़े रखने की जो बात कर रहे हैं, वो रियली बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब जो चैलेंज है इसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे सामने आई है, तो उनको हमें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है। इसके जो विकल्प तलाशे जा रहे हैं, तो क्या क्या उसके विकल्प हो सकते हैं और किस तरह से हम इसका रास्ता निकाल सकते हैं। और अगर आगे चल करके हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और स्मूथ करने के लिए या इसको हम लोग और बेहतर करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से या किसी और तरीके से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार से हम इसमें कुछ नया इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ नए तरीके निकाल सकते हैं, तो इसको इस डिस्कशन को करने के लिए या इससे एक अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए ये एक विषय रखा गया है। और इस विषय में बेसिकली जो थीम है, 4 थीम हम लोगों ने रखी हुई है, और उन चारों थीम में जो सबसे पहली थीम है वो है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं। और ख़ासतौर से भी देखा होगा कि मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं और जो उनकी चुनौतियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। पेरेंट्स के सामने भी नित नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी अब हमारे सामने आने लगे हैं। इसके साथ साथ जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी अभी हमारा जो टीचर है उतना ट्रेंड नहीं है, सभी नहीं है। और जो ट्रायल एंड एरर मेथड से जो वो अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी और उसको ऑथेंटिक बनाने की, उसको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता है। तो इसी में जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो उनको हम कैसे अडोप्ट करें, उनमें से कौन कौन से टेक्नोलॉजी हम लोग ले करके और बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। तो इस पे सेकेंड थीम हमारी है। और थर्ड थीम है हमारी स्ट्रेटेजी एजुकेशन नाउ एंड नेक्स्ट। मुझे लगता है कि शायद अब जैसे एजुकेशन में बहुत सारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो उसमें ये होता था कि प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी
आज़ादी के पहले की शिक्षा की व्यवस्था क्या थी और आज़ादी के बाद की शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, तो निश्चित रूप से अब ये होने वाला है कि लॉकडाउन से पहले की एजुकेशन सिस्टम क्या था हमारा और लॉकडाउन के बाद का जो एजुकेशन सिस्टम है वो निश्चित रूप से वो बिल्कुल बदलने वाला है। और उसमें बहुत सारे चेंजेज हमारे करिकुलम में, मेथोडोलॉजी में, हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में, टीचिंग जो हमारे टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, उन सब में होने वाला है। इसी पर बात विस्तार से जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सब करेंगे और जो भी प्रेजेंटेटर्स हैं वो सब करेंगे। और जो लास्ट की थीम हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट। निश्चित रूप से आपने अभी मीडिया में देखा होगा कि आजकल सुसाइड केस बहुत सारे बढ़ने लगे हैं, बच्चों के अंदर भी हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं और बच्चा सारा दिन मोबाइल पे, लैपटॉप पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी समय बिता रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अब हमारे सामने ये हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आके खड़े हो गए हैं, बहुत सारे चैलेंज आके खड़े हो गए हैं। तो इनका भी समाधान किस तरह से निकाला जाए, तो इस पर भी विस्तार से जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो टेक्निकल सेशंस होंगे उनमें विस्तार से चर्चा इन बातों पर होगी। तो मैं पुनः आप सभी को का जो है जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं और पूरी जो डेयर डिपार्टमेंट की टीम है जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, तो उस पूरी टीम को सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूं कि इस विषय पर बहुत ही फलदायी या कह सकते हैं फ्रूटफुल जो है चर्चा होने जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं जब सभी लोग बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और इसके जो भी डायमेंशंस हैं, जितने भी थीम्स हैं, उन सब पर जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका जरूर निकल करके आएगा। और अगर हम लोग उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी परेशानियों का निवारण भी होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में और इन्हीं सब बातों के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि सब जो आज की जो पूरी टीम है वो सब बेहतर काम करेंगी। उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और पुनः जितने भी हमारे दर्शक हम सबको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, मैं पुनः उन सबका बहुत बहुत आभार करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Amit sir, for extending a warm welcome to all the guests and dignitaries of today. Sir, I would also like to request you to release our e-souvenir. And I would like to inform all our audience, all our educator fraternity today that we have taken out an e-souvenir of the abstracts of this e-conference. So I will request Amit sir, please release our e-souvenir also. को बोलना सर को, सर ई सॉफ्टवेयर का रिलीज कीजिए। हाँ जी, आप उसको दिखाइएगा जरा स्क्रीन पे। सोवनर के लिए भी हमारे पास बहुत एब्स्ट्रैक्ट भी पहुंचे, बहुत सारे पेपर्स हम लोग को पहुंच चुके हैं जो कि हम लोग आगे जो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स होगी उसमें सब में उनको निकालेंगे। और इसके साथ साथ बाहर से हमारे पास मैसेज भी आए हुए हैं और हमारे संस्थान के जो भी डिग्निटीज हैं, चेयरमैन हैं हमारे, जनरल सेक्रेटरी सर हैं और हमारे संस्थान के निदेशिका डॉक्टर कविता अग्रवाल जी हैं, उन सबके भी मैसेज हैं। और लोगों ने बहुत ही उत्साह दिखाते हुए बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम सबको जो है आज की जो थीम है और जो भी सब थीम्स हैं उस पर जो है पेपर्स भेजे हैं और एब्स्ट्रैक्ट्स भेजे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता मुझे हो रही है, बड़े खुशी की बात है कि हमारी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं और जो भी कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं उन सबका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इसके लिए वक्त निकाला और इसको एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें सहयोग किया। तो प्रेजेंट कीजिएगा मैम जरा उसको। म्यूट कर लीजिएगा। सो रहा है, इसको लार्ज कर दीजिएगा।
पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत आभार। Thank you, sir, for releasing our e-souvenir. And I would also like to congratulate all the students and the people, those who sent us their abstract well on time, and we could be able to release our e-souvenir on time today. Well, this is the time. Well, this is the time to introduce our keynote speaker of today, Dr. Suman Lata, Principal, Delhi Institute of Rural Development. But before I call her to give her presentation, I would like to introduce her to all the audience, those who are watching us and those who are present here with us, by reading her short profile. Dr. Suman Lata has a very good educational background, having masters in geography, B.Ed and M.Ed from Kurukshetra University. She has done her MPhil in education and PGDCA from Algappa University. She has also cleared UGC NET in education in the year 2009. She is having 15 years of experience and presently working as principal in Delhi Institute of Rural Development. She has published 35 research papers in national journals. She has presented 10 papers in international seminars and 22 presentations in national seminars. She has also authored 14 books in the field of education. Other than this, she has organized and convened several seminars, faculty development programs, and workshops. She has organized various extended lectures for B.Ed students. She has conducted various activities, festivals, and trips for B.Ed students, besides carrying out the duties of admissions, conducting examinations, preparing timetable, etc. She has also been appointed as external examiner for B.Ed students. So here she is, and I hand over the stage to Dr. Suman Lata. Ma'am, a big warm welcome to you. Please, you can start your presentation. Dr. Suman Lata. Suman Lata, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Most welcome, ma'am. Hello, I am audible. Yes, ma'am. जी मैम। Okay. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. First of all, I would like to extend my heartiest thanks to the management of Mewar institutions, Dr. Alka Agarwal, director of this institution, Mr. Amit Kumar, HOD DLED, Dr. Babita Singh, Deputy HOD DLED, and all faculty members for giving me this opportunity and organizing a conference on a very current topic, COVID-19, impact on education. Today we all are connected through online mode. Do you think what is the reason behind it? Only one reason, COVID-19. COVID-19 has affected every aspect of our life, like personal, social, economic, mental, as well educational also. Before COVID-19 and after COVID-19, teaching learning process has been drawn. There are so many differences between these two times. Before COVID-19, our teaching learning process has been run in regular classroom, face-to-face interaction mode. But after COVID-19, teacher and learner connected through online mode, where online mode provide comfort zone to the learners and teachers as well. But it has so many limitations also.
First of all, we will discuss the negative side of this pandemic on our education system. COVID-19 pandemic slowed down the teaching learning process and make students passive learners. And our traditional classroom teaching suddenly shift towards online classes. But in India, it is difficult step because the curriculum was not designed accordingly to this digital learning. Due to this, students lose their span of attention. Teachers also faced lot of difficulties to give lecture through online mode, which is also a new way for the teachers to prepare their teaching material also accordingly, which lack proper mentoring because they are unable to check the things individually. To hold on the students in the online classes, which is directly affected the lecture delivery. Further, some teachers are not aware about the proper use of new technology and face problems to deliver their topic through online mode. Online apps have some limitations also, and sometimes we face network problems also. Due to network problem, teacher is unable to connect with students and it wastes the time of both teachers as well as students. We face problem regarding the time management also. Sometimes teacher require some extra time to complete the topic. But online mode session automatically disconnected after completion the given time. So teacher cannot exceed the time limit. If teacher provides recorded audio lecture or video lecture, then student cannot connect with teacher and they cannot solve their problems if they have. In audio video lecture, there is only one-way communication. But through other online app, two-way communication is possible, but not an effective manner. The rapid use of technology is enabling us, but in India, it has few limitations as well, where basic access is a challenge and many students does not have laptops. And some are battling with low internet speed. This leads to issue with participation and attendance in online sessions also. Another issue faced by the students and teachers is that some of them came from remote areas. Mr. Amit Kumar, HOD, already told this. Or giving back to their home due to national lockdown, where internet access is very low. So they have so many problems to attend their classes online mode. One more problem, some students and teachers facing the problem with internet plans. Many of them survive on 1 GB or 2 GB daily data plan on their phones.
almost we all are facing such type of problem, which is not sufficient sometimes, and they are not able to manage their entire classes, which act as a big barrier for online class. Many teachers feel that online education is not as easy as speaking. We can say online classes, we will conduct online classes and we will complete the syllabus, but it's not an easy task. There are number of challenges with this form of learning program. Faced by both students as well as many teachers. Please audience, switch off your mic. Please audience, switch off your mic. चल तू उठ के तेरी तो गांड फाड़ी मैंने. Yes, this is not an easy task. There are number of challenges with this form of teaching program, which are faced by both students and teachers. Many teachers believe that substantial learning is lost when education goes online. They said, education is not just about classes. It is about interaction with students, sharing of ideas, open discussion, and mentoring of each student. But with online teaching platform, it becomes very difficult. The biggest negative aspect of online teaching is the absence of face-to-face connection with students. Online education failed to incorporate mentoring, intrapersonal relationships, and brainstorming sessions also. So, we discussed some negative aspects, negative points of this pandemic on our education system. Now we will discuss the positive side of this pandemic on our education system. If we talk about positive side, I'll start a new teaching learning pattern and new opportunities that will transform the higher education system worldwide, especially in a country like India, in the form of blended learning, in which our teaching process will shift to the model of blended learning, where both face-to-face interaction with online system is possible, but it requires related facilities also. Teachers will require becoming friendlier with the new technologies or with upcoming one. This will lead the learning management system and gives a good opportunity to the companies that have been developing and strengthening learning management system for the use of educational institutions. This will improve the learning material and gives a rise in collaborative working scenarios. It is expected that there will be a massive rise in teleconferencing opportunities, academic meetings, and seminars. All these moves towards online, and hope some more platforms will emerge in the future
It helps to develop motivation and self-discipline among students because students feel free from school foundations, from college foundations. There are no foundation through online mode on students. Online system is also helpful to maintain social distancing in this pandemic time to reduce the virus infection. And we can continue the teaching learning process without wasting the time with the help of online platforms. One question raised in my mind, in Indian education system, equipped to handle the change? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस मेजर चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है? I discuss with you a survey conducted by Times Higher Education in 2018 before COVID-19. The leaders of well-known global universities gave their opinion that online teaching could never match with physical classroom teaching. कोई मैच नहीं है. Online classroom teaching totally different from regular classroom teaching, physical classroom teaching. Although this concept is new for India, but Indian schools and colleges working very hard to provide quality education to the students. We are not denying this fact that physical classrooms are more effective and more interactive than these e-learning classrooms. But with this current situation, online platform, online classroom, online delivery of the content is only option on the hand of teachers as well as students. So, dear all, at the end, I want to say that online classes or e-learning is the need of an hour. And at this time of pandemic, classes and course completion is somehow equally important as social distancing. Yes, this method is totally a new concept of teaching in India. And big number of challenges and limitations are there. But most of the students are present in the classes. It's my experience. Government of India gives full support to everyone to overcome with the crisis and provide quality education as per to the situation. But teachers and students are equally putting their efforts to make this teaching learning process successful, effective, and interesting. Now I stop my words and thanks you all for patience learning, patience listening. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Suman Lata ma'am. With this, we come to an end our inaugural session. But before we move to our technical session, I would like to extend my heartfelt thanks to our keynote speaker, Dr. Suman Lata, who wonderfully explained to us the whole theme in a very precise manner. I thank you, ma'am,
on behalf of my management, my head of the department, my colleagues and students, and on my own behalf, for sharing your precious time and expertise with us. I would also thank our respected director ma'am, who is always there with us. I would also thank our HOD, Mr. Amit Kumar, for his continuous support and guidance at every step, right from the time we began to organize this program till today when we see it happening. Thank you, sir. I cannot forget thanking Dr. Babita Singh, our Deputy HOD, for handling everything efficiently from inviting the dignitaries to coordinating each and everything and now monitoring the things technically as well as technologically. I would thank my team members for all their support. I would like to thank my students, coordinators who are working with us from behind the curtains. I would also thank all those contributors who sent us their abstracts and made our e-souvenir richer than any treasure. Also to Mr. Ravi Shipuri, our computer operator, for making and designing our souvenir. Last but not the least, I would also extend my thanks to all those who have joined us on Google Meet app as well as our YouTube viewers. With this, I hand over the charge to Ms. Rinkle Sharma to begin technical session 1, which is being chaired by Dr. Ajit Kumar Bohit and Dr. Sandeep Kumar. Ms. Rinkle. Hello, Ms. Rinkle. Rinkle. I think audience, to all the viewers, I would read out the brief description of Dr. Ajit. Dr. Ajit has been working as assistant professor at Department of Teacher Training and Non-Formal Education at Jamia Millia Islamia for past 11 years. He has done his masters in history from University of Delhi. He has gained the degrees of B.Ed, M.Ed, M.Phil from Delhi University and his PhD from IASE Jamia Millia Islamia. His specialization in pedagogy of history, history of education, philosophical and sociological foundation of education, social sciences, teacher education, and policy perspectives in education. His contribution in curriculum development, School of Open Learning, Delhi University. He has guided many master theses. He has published a large number of articles, research papers in various national and international journals. He has also presented many papers in various national and international seminars and conferences. He has chaired many sessions in national and international seminars and conferences. So this is about Mr. Ajit. There is a lot to tell about him, but because we have very limited time, so I end up here. Now I would like to introduce our second chairperson of this session, technical session 1, Dr. Sandeep Kumar. Dr. Sandeep Kumar is Assistant Professor in Department of Education, University of Delhi. He has done his Masters in Psychology and Political Science. He has done M.Ed and M.Phil in Education and Doctorate in Education. Dr. Sandeep's research work focuses upon sociological, psychological, and human rights perspectives on educational practices. He also has expertise in research methods in education and generating innovative practices for professional development of teachers and teacher educators. He has been a member of NCTE, besides working with NCRT, KVS, DOE, Open University, Milton Keynes, United Kingdoms. He has published a number of books with Pearson and Springer publishing houses.
and many papers in various journals. He has been the principal investigator of many projects of MHRD and international projects with UK. He has organized various conferences, seminars funded by MHRD and has delivered many lectures at national and international level programs. Currently, he is working as convener of undergraduate course revision committee at University of Delhi. So here I uh, welcome our both the chairpersons of today, and with their kind permission, I would like to start the presentation of today with our first presenter, Ms. Divya Dhawan. Ms. Divya Dhawan, are you ready with your presentation? Yes, good morning to all present Good here morning. in the conference. First of all, I would like to thanks for inviting me in this conference, which is national conference based on the topic impact of education in India. Now, my sub theme is impact on education and stakeholders, students, teachers, parents, and management. As we see, these are the four pillars without which our education system is nothing. Now, first of all, I would like to start with the first pillar, that is students. I would like to discuss the positive impacts of this pandemic situation in our country and all across over the world, that they are stuck in their homes. They cannot move out of the houses. They cannot reach their schools and study in there is in comfortable atmosphere. But still, in spite of that, also they are sitting in their homes. They are not having their hectic schedules and not even need to get up in the morning. And they are having their easy timetables, their e-contents, and they are having their the knowledge based on e-contents very easy on their laptops, or you can say the phonic system also. But my question is that how actual is the child evaluated? How if what if is the he is poor in technology? What if the parents are not supportive in the way of providing the equipment required for the online classes? What if his what about his practical or field learning? Is the child actually being provided the practical knowledge? Is the child actually being evaluated on their actual mental skills? Are they given being proper attention on in the during the online classes? Here's a big question mark in this era. Now, my second pillar is teacher. As we all know, the teachers are well planned about their schedules, sitting in their homes. They no need to have travel and plenty of having their family time also, and getting familiar to e-teaching processes. The ones who were not being aware of these e-technologies earlier, now they are even enhancing their knowledge on this basis. They are innovate. They have become more innovative, more enthusiastic, and already the teachers were known as the multi-skills, multitasking, and now they are managing their home task as well as the teaching learning processes and instructing the students, instructing their every behavioral issue of the students. But again, some questions are here also, that they are facing the hectic schedule in their homes. They are pressurized, being answerable to the management, being answerable to the parents, as they are always 24/7 being monitored by the parents also sitting behind their students during the online classes. They are being observed each and every step. They have to plan assignments, scoring, evaluation, etc., etc. Now, my next pillar is the parent. The parents are having the very positive attitude, as they can sit home and they can easily observe their children
during the online classes, and they don't have to rush to their schools provide any of the technologies. But here also, I would like to remark your point on this issue, that what if the parents are not understanding the importance of e-learning? What if they are lacking in providing the Android systems or laptops or Wi-Fi connections to the students, to their children? How actual the future of their kids is secured in setting up? They are actually worried about about the future of their children, as they only get the online education. They are not being evaluated according to their uh, actual skills. They are just focused on few online systems only. Now, the last pillar of the education system, that is management. They are also facing very like nominal problems. Like we can say, they don't have to pay the bills of electricity and then organize the infrastructures. They have high tech platforms for the kids. No hectic schedules again. No need to rush to the schools and arrange the things for the children or for the parent or the teachers. But again, by sitting at their homes and by not able to cope with the face-to-face issues, they have to sit on their own places and guide the teachers as well as the parents. They have to convince the parents. They have to guide the parents how important the online classes are for children. And also, they face the difficulty in providing training to teachers with less equipments at their homes and organizing e-platforms for students. So all about this, I just want to remark over I just want to sum up my PPT presentation, that during this pandemic situation, we are having many positive points on our education system and many negative too. We are going to, after this pandemic situation, we are going to have a new type of education system in our world, all over the world actually. We are not just bounded with the books. We are just not going to have the bookish knowledge or the practical knowledge. We are also going to have the e-knowledge of and by ease of every e-contains. So thank you. A big thanks to Mewar Institute of Management and my counselor, Ms. Harmeet Kaur ma'am, who gave me this chance to present over here. Thank you so much. Thank you, Divya. Thank you, Ms. Divya, for the beautiful presentation. Ma'am, am I audible? Yes, yes, Wrinkle. Okay, Yes. ma'am, I think there was some connection problem. So here I continue. Thank you, Ms. Divya. It was such a beautiful presentation. Now, I would like to invite our second speaker, Ms. Sharda from DLED 4th semester. Okay. थैंक यू रिंकल. मैम पीपीटी प्ले कर दीजिए. हेलो. I'm doing it, Sharda. Just a second. Okay, ma'am. Good morning, everyone. I'm Sharda Moore from Mewar Institute, DLED 4th semester. And my PPT on challenging and problems during the pandemic COVID-19. How to impact COVID-19 education. Ma'am, next slide. हेलो मैम. शारदा, आपको स्क्रीन दिख रही है? Is the screen visible to you? नहीं, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है शायद. नहीं, मेरी स्क्रीन हरमीत कौर की स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी. आपको कोई प्रेजेंटेशन दिख रही है स्क्रीन पे?
हाँ दिख रही है Yes, लेकिन yes, it is visible. ठीक है, कंटिन्यू. नेक्स्ट स्लाइड प्ले प्लीज. मेरे को अपने में ही प्ले करनी पड़ेगी. आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? नहीं, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. किसी ने प्रेजेंटेशन बंद कर दी है. बबीता मैम आप अपने यहाँ से चेक कर लीजिए. किसी और ने बंद किया. अब दिख रही है. हाँ आ गई दिख रही है. ठीक है शारदा, कंटिन्यू. Yes, ma'am. In the process of teaching learning, it is like a distance learning. It is useful not only for students but also for teachers as well. No traveling. So traveling time is saved. No fear of any kind of which is associated with traveling, like accident. Now we have quality time with family. We can spend our quality time with family. It has a shortcoming also. Everyone does not have smartphone and laptop, or lack of smartphone or laptop operating knowledge. There has a internet connectivity problem. If somebody connected, then internet speed problem. More problems in rural areas. Now, student engagement. In online class, students turn off their mic or video and do not pay attention to the teachers and class. Teachers prepare many activities for the students. Response can be more teachers. They have many challenges. Only some of the students are active in online class and attend their classes properly, but some others do not attend the classes and keep going something else. Technology adaptation, it is very helpful if we are tech savvy. It can be help in education system and business also. It has shortcoming. It is challenging for non-technical people. Too much use of computers or smartphone is harmful for our health, like eyes, body, etc. Data is, if not secured properly, can be hacked. It has health issues also. Continuous use of mobile and laptop is very harmful for people, as it is affecting their eyes, low back pain, obesity problem due to sitting at one's place for many hours. No physical activity, mental fatigue may cause stress. And thank you, ma'am, for giving me a chance for present a PPT. Thank you, Sharda, for the knowledgeable words. Now, I would like to call here Miss Chetna Vivek for her presentation. Is Chetna there? चेतना की पीपीटी. नेक्स्ट को कॉल कर लीजिए. Okay, ma'am. Now, here is our fourth speaker, Miss Pratiksha Sharma, who is research scholar also. Sharma, are you there? She hasn't joined, I think. So, Wrinkle, we can invite our guest then. Okay, ma'am. Okay, without losing any further time, now I would like to call here our chairperson, Dr. Ajit Kumar Bohit, to share his views.
Good morning, all of you. I'm audible and visible. Yes, sir, Hello. you are visible and Yes, audible sir. too. Yeah. Good morning, all of you. First of all, thanks to Meva Institute, especially Dr. Ashok Kumar Gadia, chairman, then Ashok Kumar Singla, General Secretary, Professor Alka Agarwal, Director, Meva Institute, and Dr. Amit Kumar, and Dr. Babita Singh. बेसिकली जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, कोविड-19 के बाद एजुकेशन के सिनेरियो में क्या चेंज आया है और इस कोविड-19 ने किस तरीके से हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट किया है और फ्यूचर में भी इफेक्ट करेगा। बेसिकली अगर हम बात करें यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से, यूनेस्को ने रिपोर्ट दी कोविड का जो इफेक्ट है एजुकेशन के ऊपर। यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 180 जो कंट्रीज में ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स की टीचिंग और लर्निंग इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफी हद तक इफेक्ट हुआ है। कोविड-19 ने टीचिंग लर्निंग सिनेरियो को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। एजुकेशन के पॉइंट से देखें तो हमें एजुकेशन को रिडिफाइन करना पड़ेगा इस पैंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये अभी लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और मैनेजमेंट को इफेक्ट करेगी। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने आप में अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ अपनी पूरी की पूरी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर्स, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड लेकर आता है, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है स्टूडेंट्स की लर्निंग को लेकर। ठीक इसी तरीके से अगर हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी अपने साथ पूरे का पूरा एक इन्वायरमेंट लेकर आता है क्लास के अंदर। यदि हम बात करें कोविड-19 ने किस तरीके से एजुकेशन को इफेक्ट किया है, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को लेकर, हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 महीने से स्टूडेंट्स का जो माइग्रेशन है वो काफी तक हुआ है। यदि हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करें, चाइना, इंडिया, जो एशियन कंट्रीज के अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करते थे अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और अदर कंट्रीज में। जैसे कोविड-19 सिचुएशन आती है, स्टूडेंट्स का जो माइग्रेशन है वो आता है इंडिया की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो इफेक्ट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यदि हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, देन आईपी यूनिवर्सिटी, देन अदर यूनिवर्सिटीज, इन और ऑल ओवर बीएचयू, इन सभी यूनिवर्सिटीज में एंड बेंगलुरु आल्सो, इन सभी यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी स्टडी को पढ़ते हैं। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो एक टीचिंग होनी चाहिए और लर्निंग होनी चाहिए वो इफेक्ट हुई। स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हम नहीं जानते कि कब ये सिचुएशन कंट्रोल होगी, कब नहीं होगी। अगर सिचुएशन कंट्रोल होती है तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स शायद ही अपने बच्चों को उन स्टेट्स में भेजें जहां पर आज की डेट में जो कंडीशन है सो कॉल्ड हॉरिबल है। दिल्ली के अंदर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये कोरोना की वजह से हर चीजों ने इफेक्ट किया हुआ है और इससे स्टूडेंट्स का जो माइग्रेशन है वो काफी तक बड़ा है और ये जो माइग्रेशन है इन फ्यूचर भी स्टूडेंट्स के एडमिशन प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। जहां एक तरफ भीड़ रहती थी दिल्ली जैसे शहर में स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेकर, शायद आने वाले दिनों में वो भीड़ कुछ कम हो, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन ने सब हर एक को डरा के रखा हुआ है। यदि एजुकेशन की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो शिफ्ट हुआ है एजुकेशन का वो हुआ फेस टू फेस लर्निंग से ऑनलाइन लर्निंग की तरफ। हम सभी जानते हैं कि जब क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें, बिना स्टूडेंट्स से डायरेक्ट इंटरेक्शन के हम सही तरीके से अपनी एजुकेशन को और जो कंटेंट हम देना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बट अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो एक फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स के जेस्चर्स, फीलिंग्स और उसके जो नॉलेज को गेन करना और ऑन द स्पॉट स्टूडेंट से सवाल पूछना, वो शायद हम ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं कर पाते। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन शिफ्ट हो गए, बट सबसे बड़ा सवाल ये था, आर वी अवेयर अबाउट दैट, कि क्या हम एज ए टीचर अवेयर थे इस सिचुएशन को लेकर कि हमें एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा हमारा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। साथ साथ क्या स्टूडेंट्स भी इस बारे में अवेयर थे कि जो सिचुएशन आई है और हम सबको ऑनलाइन लर्निंग की तरफ मुड़ना पड़ेगा, शायद नहीं। अब इन फ्यूचर हमें करना ये पड़ेगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को इसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा, ताकि हम जो डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग है या हम ये कहें ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग दोनों की तरफ हम स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से ले जा सके।
उसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है इनोवेशन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि हम इन इंडिया में बेसिकली जो है जो टीचिंग है वो फेस टू फेस मोड पर हम लोग करते थे, बट जैसे ही पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो जो लर्निंग और टीचिंग का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तो जो क्लासरूम सिचुएशन थी फेस टू फेस हम चेंज हो गए वर्चुअल क्लासरूम की तरफ, ऑनलाइन क्लासरूम की तरफ, और कहीं ना कहीं वेब बेस्ड लर्निंग और टीचिंग की तरफ। तो हमें ये भी देखना होगा कि जब वेब बेस्ड लर्निंग और टीचिंग की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म की तरफ ला सके। हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के पास न तो फोन है, टाइम्स एजुकेशन की जो रिपोर्ट बताती है कि मोस्टली पेरेंट्स के पास जो स्मार्टफोन है आज की डेट में बच्चे लोग यूज कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अनलॉक की कंडीशन आ चुकी है और पेरेंट्स जो है वो अपने फोन को लेकर ऑफिस में जाते हैं। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बच्चों की इफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ इंडियन सिनेरियो में रिमोट एरियाज में खासकर हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। जैसे कि जो प्रेजेंटर ने भी इस बारे में बताया था, क्या नाम है, दिव्या ने बात की थी कि हमने इस ऑनलाइन एजुकेशन पे तो आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स की जो लर्निंग को इफेक्ट कर रही है डाटा की वजह से, इफेक्ट कर रही है स्मार्टफोन ना होने की वजह से, इफेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है इस वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग की तरह से। हमें भी देखना होगा कि खुद भी हम अवेयर हो इन चीजों को लेकर और सीखे भी, और स्टूडेंट्स को भी इन चीजों के बारे में अवेयर करें। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इसमें बदलाव आया है कहीं ना कहीं जो मेथड्स है, जो टीचिंग मेथड्स ने भी काफी हद तक बदलाव करने की कंडीशंस में हम लोग आ गए हैं। हम सभी जानते हैं कि सिचुएशंस एकदम से चेंज हुई है और उस चेंजिंग सिचुएशन ने हम सभी को एक तरीके से मजबूर कर दिया है वेब बेस्ड या हमें कहीं ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग की तरफ। जब तक हम इस ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग से खुद को अवेयर नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयर नहीं करेंगे, तब तक शायद जो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग और लर्निंग है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इस ऑनलाइन टीचिंग ने कहीं ना कहीं लिंक बनाया है टेक्नोलॉजी की तरफ। कोठारी कमीशन से लेकर और 2019 का जो पॉलिसी ड्राफ्ट है, इन सभी ने कहा था कि हमें एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना चाहिए। और साथ साथ एनसीटी 2009 ने ये भी कहा था कि हम जो टीचिंग प्रोसेस में भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस तरह की ऑनलाइन टीचिंग प्लस वेब बेस्ड टीचिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। बट हम उसको लेकर धीरे धीरे ग्रेजुअली इस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे पैंडेमिक सिचुएशन आती है पूरा का पूरा जो टीचिंग और लर्निंग का जो सिनेरियो है पूरा बदल जाता है। जो काम कोठारी कमीशन से लेकर और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट है वो नहीं कर पाया, वो इस सिचुएशन ने पूरी तरीके से चेंज किया है। तो हमें कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा नए सिनेरियो में, और इस बदलते हुए सिनेरियो के हिसाब से ही हमें अपनी टीचिंग और लर्निंग दोनों को बदलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरीके से इस टीचिंग लर्निंग में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले हमें जो स्टूडेंट्स को इस बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर करना होगा ऑनलाइन टीचिंग की तरफ। प्लस हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे सारे स्टूडेंट्स जो पोर्टल या हम जो भी साइट बच्चों को क्लासरूम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर उससे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हुए। प्राय देखा ही जाता है कि स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ तो जाते हैं, बट वे सिर्फ एक पैसिव लर्नर के तौर पर क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, न कि एक्टिव लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज कीजिए नाउ हम एक तरीके से अपने एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने क्लास में तो वो शो रहा है, बट उसने अपना माइक और अपना कैमरा दोनों म्यूट किया हुआ है और जो फोन कहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स कहीं हो रहा है। तो जो हम फेस टू फेस क्लासरूम में या ये कहें जो हम रेगुलर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को हम एक तरह से इवेलुएट कर पाते थे, वो शायद हम इस ऑनलाइन टीचिंग में इवेलुएट नहीं कर पाए। हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली क्लास में है, प्रेजेंट है तो किस तरीके से है, और वो क्या वास्तव में जो टीचिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ये अपने जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स को भी अपलोड करना होगा
अपने यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के पोर्टल्स पर, ताकि स्टूडेंट्स जब चाहे, अगर कनेक्टिविटी नहीं है स्टूडेंट्स की अभी, तो जब स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी हो तब स्टूडेंट्स उस पोर्टल पे जाके अपने उन लेक्चर्स को ऑनलाइन सुन सके, समझ सके और नॉलेज को वो गेन कर सके। उसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अवेयर करना होगा इस ऑनलाइन प्रोग्राम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेरेंट्स को बताना होगा कि दिस इज द वे, करंट सिनेरियो में यही एक वे है, ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो स्टक ना हो। हम ये नहीं कह सकते दिस इज ओनली वे, ये राइट करंट सिनेरियो में ये एक वे हो सकता है, बट ये एकमात्र वे नहीं है। हो सकता है फ्यूचर्स में चेंज आए, बट जैसा कि यूजीसी ने भी कहा कि इन फ्यूचर भी हमें कहीं ना कहीं अपने करिकुलम में बदलाव लाना पड़ेगा, और हमें 50% जो अपना सिलेबस है वो कवर करना होगा फेस टू फेस है, और बाकी करना होगा हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन टीचिंग से या किसी वेब बेस्ड या पोर्टल के थ्रू। जब तक हम अपने करिकुलम को इस तरह से डिजाइन नहीं करेंगे कि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कंडीशंस आती है तो हमारा टीचिंग और लर्निंग का वे क्या होगा। तो शायद ये चीजें हमें इन फ्यूचर के लिए तैयार करनी होगी, अपनी एजुकेशन को रिडिफाइन करना होगा, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है उनको भी देखना होगा, ताकि हम इस तरह की सिचुएशन से खुद को अवेयर कर सके, स्टूडेंट्स को अवेयर कर सके, और कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंट में भी अपने आप को डाल सके। जैसे कि जॉन डीवी ने कहा था, एजुकेशन जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, जो हमारे अनुभव आते हैं हम अपने अनुभव की पुनर्संरचना करते हैं एजुकेशन के हिसाब से। इसलिए जॉन डीवी ने एजुकेशन को डिफाइन किया है कि जब तक हम सिचुएशन चेंज होती है हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते रहते हैं। इसीलिए जॉन डीवी ने खुद ये कहा है कि शिक्षा के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स फिक्स नहीं होने चाहिए। क्यों? समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, उसी के हिसाब से हमें अपने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी रीडिफाइन करने होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में बात करें, आज के संदर्भ में बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को भी रिडिफाइन करना होगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में, ताकि इन फ्यूचर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो इफेक्ट ना हो। उसके साथ अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, जब इम्पैक्ट एजुकेशन पे होता है तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट जाके पड़ता है। जैसे प्रेजेंटर ने कहा था कि मैनेजमेंट के ऊपर भी एक प्रकार का प्रेशर है कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स के एजुकेशन को प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी जानते हैं कि इस कंडीशंस में ना तो एग्जाम हो पा रहे बच्चों के, ना ही जो नेक्स्ट सेशन है उन स्टूडेंट्स का एडमिशन किस तरीके से होगा, इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। अगर होगा तो कब होगा? तो हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये प्रेशर है कि क्या उनकी सीट फुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर सीट फुल हो पाई है वेरी गुड, अगर नहीं हो पाई तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर भी पड़ना लाजमी है। तो हमें इन सब चीजों को लेकर अवेयर होना होगा और हमें ये सारी चीजें देखनी होगी ताकि हम अपने एजुकेशन प्रोसेस को सही तरीके से प्रमोट कर सकें। शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for the valuable information. Now, I would like to invite Dr. Sandeep Kumar to enrich us with his knowledge. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, I am not much aware about the management of Mewar Institute, but I would like to thank everybody belongs to that institution for inviting me to share my ideas on the given theme, right? And I also would like to thank Ajit to set the pace for my discussion, because many things have been covered by Ajit. So see, it will be a very general talk, and in my discussion, first I'll try to set a context in 5 minutes, and then I'll switch my discussion to the very strategical position education has to take. And third section will, focus specifically at the strategical position parents and family has to take in this difficult situation. I think we all are aware that COVID-19 is in a larger abbreviation of a term, which is like coronavirus, and corona, which is PCO, and virus, which is VI, and disease represents disease in 2019. And that is how it is a larger connotation or abbreviation of COVID-19.
know. And it is a we all must know that it is a virus that is, you know, that attacks on respiratory system and has initial symptoms like cough ho jayega, cold ho jayega, and breathing problem rahega, and things like that. But all these symptoms may not be corona symptoms, and we need to be aware of this. Measures suggested by various national and international organizations are like washing your hands and staying at home, and if you go out, then, you know, use mask and keep social distancing and things like that. But important to understand in this particular time is that majority of people across world are at home and they rarely go out. It is a sudden shift in life, and larger social spaces has been restricted for our reach. We need to understand that gradual shift is a fundamental nature of human species. हम स्वाभाविक तौर पे बदलाव करते हैं, धीरे धीरे बदलाव होने की प्रक्रिया बड़ी स्वाभाविक है. But this sudden shift brings lot many challenges and lot many problems in this adaptation process. Not all, but many may feel stressed out, or they may feel anxiety, negative thinking, and many more such unhealthy experiences. Probably after this session, some speaker will talk about this stress management and things like that, right? So government has suggested many ways to keep ourselves safe, but situation is going to be tough day by day. We need to understand this. There are various domains affected by this pandemic, whether you call it a social domain or you call it economic domain, or institution like government and private both. But all of us as related to education, so we are more concerned about this sector. There are many questions related to COVID-19, which Ajit has also raised, and the earlier presenter like Divya and Sharda, they have also raised certain questions. Even if you'll ask, we have any defined and precise answer to these questions, so that will be wrong. We also don't have very precise answer to these questions, when things going to be okay and things like that, you know. But one thing we understand very clearly, and that is every problem is interrelated, and therefore problem related to education is also multidimensional. And any multidimensional problem need a solution which is based on multi-perspective. Am I audible? Yes, sir, you are audible. I am audible. Even I would say that the multidimensional problems as has been posed by COVID-19, I would say that we need multi-pronged strategies. It's pronged specifically. I'm using this term on overemphasis. I'm not calling it perspective. I'm not calling it multidimensional. Rather, I'm calling it is a multi-pronged strategies which will be required. You know, we have lot many plans in our hand. Government has made lot many plans, and we also have these ready-made plans in hand, and we need to develop much. But fundamental question is, are we ready to do it, and what is the state's responsibility in this entire context? If we talk about strategies, as as the topic is given to me, strategies and the future ahead, we have to think about education. We have to talk about the role of school, parents, and teachers. So these are the larger segment which needs to be covered in this very situation. So I will be talking a few about, so this was the context I was trying to make, what is the situation all about. Now in this context, I'll be talking about certain things or ideas about education, the strategical positions we have to take, and the strategical positions parents has to take at home, so that education can be delivered conveniently to the learner. Okay, so this is something I'll be talking about. See, when we talk about educational resources, so open resource learning material is a very known idea to everyone, and it is to be strengthened, whatever maximum possible strengthen we can do, so that student can be engaged in qualitative and required content. Mobile learning is there, online classes is there, online interaction sessions can be there. These can be useful for the learner. Such resources can be developed. Such resources can be developed and shared with learner. But this suggestions which I just gave, before we implement this suggestion, a state has to act or has to do lot many preparatory work to do this, which we are not ready for now. Like if I'll pose a very simple question, does all student has technology such as telephone, not telephone, but the phone, mobile phones, tab, computer, internet connections? And if they don't, then how the suggestion I just shared is going to help to these children? Probably these and many more questions like this will be raised if we'll move ahead with this very suggestion. But we have to work on optimism. This also we need to understand. Raising such question does not mean that
we'll sit at home and we'll say that nothing can be done because India doesn't have that much of infrastructure. So that may not be a very good idea, and we need to come out with that pessimism, and we have to work on the very idea of optimism to and to have to best in the available situation and resources, whatever best we can do. We have to start doing that. Along developing these resources, we have to find out ways to reach to the marginalized, the people, those who are not able to engage with this whole system. So we have to reach to the marginalized to provide them also the maximum benefit of this. So we have to work towards inclusive learning solution. This is the term inclusive learning solution has been popular across the world these days. My daughter, she's studying in 8th class, and she used to tell me, sir, Papa, I have 50 students in my class, but most of the time only 35, 36 students are there when classes are happening. So fundamental question here is that where are these 15 students gone? 15 students kahan chale gaye hain? So we are not talking about those students. So how government has to take responsibility regarding this is a fundamental question towards inclusive education, which we are talking about. As for all, this situation is new for teacher also. All of them are not equipped, as Shalini madam has also raised this in brief, but I'll just extend it a little further. All of them are also not equipped with the technology as required. Moreover, how to mix with two basic ideas, technology and pedagogy, is a great challenge. And why it is a challenge? Because we always must keep in mind that only content delivery is neither education nor pedagogy. केवल content deliver करने को हम शिक्षा नहीं कह सकते. So these both, like pedagogy and education, carry a broader comprehension in their epistemological basis. So expecting teacher to be perfect all of a sudden may not be a very good idea. If we'll expect teacher will do everything perfect all of a sudden, may not be a very good idea. Rather, a supportive space is to be given to teacher to learn these new skills and help children in learning processes. This strategical position has to be taken by school. And this situation also leads us to think a strong professional development scheme for teachers, where they can learn and practice new pedagogical opportunities and practices. New ways of assessment, new ways of learning has to be dealt with it. They will also be helped in organizational skills so that they learn to organize themselves in a changing context. So NP 2000, but the recent policy draft NP 2016, which is just in public domain for a draft, say that is also talking about self-motivated professional development programs. So taking idea from there, we have to develop a kind of strong professional development schemes for teachers so that they can equip themselves to deliver the content or deliver the education or deal with the educational concerns online. School also need to understand that the syllabus need to be reduced significantly. School also have to think very carefully that how much time they expect learner to be on screen. I notice that children are online of at least 4 to 5 hours to attend classes, and then more than this time to complete their homework, because everything is online now. This is not a good move, let me tell you. It will severely impact children's eyes and their health, and particularly their mental health. So we need to be careful about this. It also has to be kept in mind that every learner is different and unique. Some may adapt quickly with this change, and some will take a lot of time. This empathetic attitude in teachers and pedagogical practices needs to be incorporated in the whole idea. This will help learner to be connected, else they will feel withdrawn. If they will not be able to connect themselves to the context, to the scenario, what we are doing online, so definitely they will withdraw. And after some time, you won't be able to see them online. Do not need to overburden learner with too much of academic work. बहुत ज़्यादा काम उनको academically देने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि in this new context, they are also struggling with their adjustment processes. So too much of academic task probably will create a kind of hindrance to them. Another strategy which we need to adopt severely is that seamless integration technology across country is needed. Two specific ways generally we use on online system. One is recorded system and second is online system. In recording system, like MOOCs are there, and these can be developed at larger level for larger network so that related thoughtful lectures can be uploaded there. As Ajit probably also said, that lectures can be stored somewhere. So MOOC is a good platform where these things can be done.
slots should also be given to raise queries so that it can be developed as interactive, because MOOCs generally, it is a kind of lecture which is delivered and later on you can discuss about that lecture, and the person should be readily available to interact with this. And second form is online live, is more effective, but it need a lot of quick, fast and sound internet connection. So these two can be used, but a larger network can be created with the help of many available new platforms, such as SWAMP platform is there. Yeah, it was like NPTL, if you have heard about it, National Project on Technology Enhancement Learning. And there are NKN, you must have heard about that also, like National Knowledge Network. There are a lot many forms available. These can collectively work to provide better learning spaces and opportunities. Even if you go for higher education, abhi hum sab log jaldi bhugtenge is baat ko, if we are not ready, that how we are going to deal with internship of our BLEd, DLEd students, because schools, if they are not open, then how they will be able to manage this whole system. So we need to work to develop a kind of platform so that we can handle these issues effectively. आजकल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम कराने के लिए एक बहुत कॉमन ट्रेंड चल गया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हम करा देते हैं, so this very OBE, we call it, is a very popular idea these days in higher education. From centuries we are talking and discussing about the demerits of these evaluation system, which is known as one time venture, कि एक बार परीक्षा लेना, one time venture. We are criticizing it from ages. And I think this is the time when to move ahead and change the prevailed criticized practices, and we are convinced with this. Cannot we give 2 more critical assignments to a learner instead of putting them on the threat of OBE, online based examination, where all have to develop question paper, answer the questions on a sheet, then upload those answer sheets, and even that in a given situation, is that simple for a candidate who is merely have a phone in country like ours? Will it not be discriminatory, those who are deprived? Sorry to say, but yes, it is true, it is going to happen like this. But why are we doing this? Why are we behind examination for sake? It is because our addiction and problematic socialization towards evaluation system forcing us to do this. Else there are thousands of ways, and one I just suggested, submitting 2 critical assignments, can be adopted, and there may be many more. If we do an extensive study on this, we can identify, so we have to think critical and innovative. Okay, what are we doing now? We are trying to impose technology on traditional practices. Already traditional practice exists, and we are thinking that technology can be diffused in that very idea, which creates major problems. So we have to work on alternative ways of teaching, assessment, and probably assignment things, and other related aspects. We also have to work towards developing a good mental health program, as mental health will be a serious post COVID-19 crisis. We have to think about that. One will also see, if you'll see the school education, one will also see a great dropouts, because a lot of migration has taken place. The poor and the lower section has migrated to their respective, states and things like that. So the children must have gone with them, and some may not be alive now. There is a possibility to say it with a lot of low heart. But you will, in particular in government school, you will see very, you will not see your students again. Those you were interacting with. There are many suggestions I have in mind which can be done, to deal with this, like resources to provide socio-physical support. State has to do all this. The strategies I'm suggesting now, state has to do this, like resource to provide psychosocial support. Digital learning management system need to be strengthened. System built to use for basic phone apps needs to be developed. We don't have this much in India, particularly. Across world we have, but India, we don't have very systems built in use of basic mobile phones. We have, but not sufficient. Systems with strong online and offline functionality need to be done. MOOCs need to be developed, self-directed learning content, mobile, reading applications, and many more like this need to be done. So in the education, these kind of strategies we have to significantly incorporate it. Similarly, if I'll switch, because I have 20 minutes, as Dr. Babita told me. So facilitating children at home is another dimension which we need to talk about in this pandemic time. Plan a routine with a flexible time with your children only. Keep their age in mind doing this. Do not expect too much from them in this critical time.
develop a routine for study, for waking up, for sleeping, for playing. And when they will be part of developing this routine, then definitely they will accept it and they will follow it because they own it then. Otherwise, they feel it is imposed on them. Something is given by parents and you have to follow it. So they will not accept it. So involve them in doing this if you want your children to be stress-free. And we also understand in generally that any routine will make people feel boredom after a time. So keep it flexible and keep scope for any required and timely changes. Have a great, good, and consistent dialogue with your children and motivate them to ask numerous questions. They have not seen such a situation, and though we also have not seen such a situation, therefore they will be having many questions. Surprisingly, we don't have answers of those questions, and we all know this. But have patience and have a healthy dialogue with children. Do not just say, I do not know, and why are you asking these questions? Why are you not doing your work? Why are you so interested in this? Let's not use these words with your young minds. Rather, motivate them to ask questions. And these questions, as they will ask, they will release their tension, and it will work as a catharsis, in the developmental process. The parents also face a lot of problem in, a lot of problem in developing strategies, how to strategize the home in the activity they are planning. So start with shorter tasks and a very shorter task for shorter time, and gradually increase the time. Overburdening is not going to help. Like I keep interacting with some of my friends, and they said, we have brought this for our children, we have brought this for our children. Please don't waste your money also. Understand then what is the requirement of a child. So this strategy parent have to adopt, because एकदम जब हम एक ऐसे बदलाव का हिस्सा बनते हैं तो सब कूद पड़ते हैं कि हम सब खरीद लाएंगे और सारी चीजें हम बच्चों को दे देंगे. But for God's sake, just give some space to child to use his own wisdom, what he wanted to do. Let's not decide what we want children to do. So that is something. Perceiving child and childhood from adults perspective is also very problematic scenario, which we are doing. And we need to understand child from child's perspective and then invest money, because money is also going to be very important in time coming. Parents have to be aware about online security. Online world give you a lot of space for learning, for playing, and so on and so forth, but it also poses threat of security. Counsel the child that any personal picture or any personal details should not be shared online. Overuse of technology definitely going to affect, as many other people have said. I just would like to highlight that overuse of phone and internet has become that severe that AIMS in Delhi, one of my friend is working there as a psychiatric department, they have open a special cell on phone addiction and internet addiction. Okay, so we are also in touch with that person or that psychiatrist, how they are dealing with this whole issue. ऐसा ना हो कि इस जल्दबाजी में हम भी अपने बच्चों को उस तरीके की आदत डाल दें. तो we need to strategize the way we want them to engage in this online process. So parents have to deal with this patiently, and so educating parents is also very necessary task to do. We have to connect, or parents have to connect, keep a connect with the school teacher. This will help parents to be ease out about the education of their children, and they will be able to facilitate their children better in their education process. You must have heard an institution located in Delhi named National Institute of Mental Health and Neuroscience. They have also suggested certain strategies to help children at home, like providing assurance whenever they need it, and keep them in connect with their friends. बात करने दीजिए phone पे उनको if they are really want to do that. Manage your children's anxiety. Keep them a clear information. Don't give blur information. Engage them in indoor activity, and so on and so forth. So many such information has been uploaded on this website, and you can take help from there. So if I'll combine these two, the suggestions, I just try to summarize very briefly in education and the parental. Many strategic plan has to done by government. Like policy and funding strategies need to be channelized towards generating and supplementing services to enhance the capacity to make better use of online educational practices. Along with this, distance learning is going to be very popular after this world. So distance learning opportunities has to be improved with regard to its interactive nature, to facilitate and strengthen the quality of distance learning. Social emotional problem we are going to face soon, so needs to strengthen so that learner can understand the current context without any burden.
Supporting, a student with special need is an essential requirement towards making current context, inclusive. Multilingual learners need special support, as most of the online system available in English. People, those who are more comfortable in Hindi or in other language, they face lot many problem dealing with this. So we need to understand this multilingual scenario also while organizing all these things. Educator preparation is also to be focused upon, because as many of us has said that teacher may not be very well equipped with the use of these technology in the current scenario. So जब भी ये खत्म हो और अभी भी टीचर एजुकेटर्स और स्कूल टीचर्स को इसके लिए रेडी करना बहुत जरूरी होगा, और इसी के लिए आई जस्ट सेड दैट वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. Revisiting evaluation process is also essential, as we have to move towards assessment then examination. So we have to move this, and parental orientation need to be organized at massive level so that they can facilitate their children at home without pressure and handle the stress children may have. So I would like to just conclude in 2 lines that so this is the time to DUCA. I call it DUCA, DUCA, that is develop, understand, courage and apply. Think positive with maximum optimism. Raising only problems probably may not help. Rather, we need to come up with solution in the available context and situation. We also need to come out from the blame game, which is very visible these days in the entire world. Who did what and how it is going to happen. So let us decide to work towards solution-oriented approach to provide something to our young mind and future of the beautiful world. So I think this is something I would like, I wanted to share to all of you in this given time. Thanks a lot. Thank you for this opportunity. Thank you, sir, for sharing your knowledge with us. Your thoughts were really informative. Our presenters have joined us, so I am calling them one by one. I request you to stay with us. Yeah. Now, I would like to invite Miss Chetna, if she's there. Chetna, are you there? Miss Chetna? Wrinkle? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Wrinkle, Yes, you are audible. Hello? Yes, you are audible. Yeah, ma'am. Wrinkle, listen to Am I me, audible? please. Yes, ma'am. जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट आपका इनके बाद हाँ, जो yeah, next आएगा ma'am. उनको अनाउंस कर दीजिए, बी रेडी. Audible right now? Okay, ma'am. Because I have very poor connection. Yes, Chetna, Sakshi. Actually. Okay. Slide. I'm playing your PPT, Chetna. Just minute, wait. Okay, just I am sharing my slide. One sec. Yeah. Just I'm sharing my slide over here, please, because I have very poor connection right now. Connection problem is there, so that's why. I am also playing from my side. Actually, okay. I am playing from my side, ma'am. Please, I have done some body there. So please just know I am playing. No problem. Okay. Yeah. First. Slide. Slide share. To present my paper. Nowadays, every country COVID-19, and it is affecting us socially, physically, economically, mentally, as well as intellectually also. So, what is the impact of COVID-19 on the education system of India? This is my objective. And to what extent we can leverage our present education infrastructure for e-learning. So for that, first we have to know about our educational institutions.
we have divided into two categories. First one is the school education and second one is the higher education. There are 8,47,118 primary schools, 4,25,094 upper primary school, 1,35,335 secondary school, 1,09,318 senior secondary schools. And in higher education, 38,498 colleges, 760 university, 12,276 stand-alone institutes. Now, please have a look on economic classification of our nation. 3% populations fall in rich category, 21% falls in upper middle category, 33% fall in lower middle class, and 43 belongs to poor class. Only rich and upper middle can afford their children to send into the expensive private school, and lower middle and poor class are not able to do that. They are sending their children in government school as well as affordable private school. Now, see the sectoral background of students. I have explained you that only two categories, rich and upper middle class, send their student to the expensive private school, and that the numbers of the students are 4.3 crore. Now, lower middle class and poor class are sending their children to affordable private school and government school. Here I want to explain what is the meaning of affordable private school. These are those schools who are charging only 15,000 to 20,000 fees per annum, and they are very low income schools. So through this data and my studies, some analyses are over here. Approx 40%, around 56 crore Indians are using internet, yet India is holding second position in the world as internet user because of its massive population. Yeah, of course, because of its massive population. 76% of Indian population are sending their children in government and affordable private school. Two category belongs in this scenario, and only 24% go to the expensive private school. For this, I have already, right now, I have very poor internet connection, and this points belongs to that only. India hold 89th position in the world in internet speed among 179 countries. And during online classes, this presentation also, e-seminar also, we need this speed. And during this session, due to technical hiccups, the concentration of children is disturbed. Some schools have very good infrastructure, expensive private schools, providing online education for around 5 to 6 hours, causing health issues, which already told by my by former presenter and Shalini ma'am also, among students and teachers, such as eye problem, headache, backache. Some other points are, positive points are, government teachers. Teachers basically who belongs to the government sectors created an e-flyer with government relief measures, helplines, location, and personally help provide rations and cooked food to those in need. Many teachers didn't get full salary due to government decision to waive off the fee, and these teachers belongs to the APS, affordable private schools. Many changes, some positive changes happened in the method of assessment also on this platform. The pros for the same are, students are well aware of how they can give online exams. They are receiving practical experience for the same. Now, where there is a will, there is a way. And through all this research work and data, it concludes that 8 crore students are taking advantage of online education, but still 32 crore students are left as they are lacking technology, mainly in rural areas. So many challenges are in front of us, but we can find the solution by working in unity and try to improve our educational infrastructure. As blended learning, physical means physical learning and online system, online learning, both is the best way to educate our nation. So there are some recommendations from my side, and I want to share with you also.
Digital capabilities, required infrastructure, and connectivity must reach the remotest and poorest communities. Government can help poor and needy people by putting an equal amount of school fee in their bank account instead of the waived off fee. Training for technology should be given to the teachers of rural areas. The schools which are providing online education should not give more than 4 hours of class in a day, as it creates lots of health issues. So these all my study which I have done, and I want to share with you. I hope you can get my points. And thanks to Babita ma'am, Ashok sir, and HOD sir, Amit sir, for giving me such an opportunity to present my paper in front of you. Thank you. I have very poor connection, so I have mentioned this point in my paper, in my PPT also. Thanks. Thank you, Ms. Chetna, for sharing your views with us. Now, I would like to call Ms. Pratiksha Sharma for her presentation. Thank you, ma'am. Hello, everyone. I'm Pratiksha Sharma, and I'm just going to present my paper under the theme 2. Hello, am I audible? Yes, yes, we can. Yes, you are audible. Okay, thank you, ma'am. Okay. Hello, everyone. I'm Pratiksha Sharma. I'm just going to present my paper under the theme number 2, challenges and the problems during COVID-19. And my topic is the need and importance of emotional competence among teachers during online classes. From past few months, we all are known about the COVID-19 pandemic, which affected the world directly. It has affected all aspects of life, including education as well. All the education institutions, from schools to colleges, all are closed for a long time worldwide. Lockdown, social distancing, economic slowdown, and uncertainty of life around. Our education system is also facing new challenges ahead. So online classes or e-classes become a preferential alternative for all level teaching and learning, whether it is primary level, upper primary level, pre-primary level, secondary level, higher level, college level, or university level. This COVID period motivated every teacher, learner, student to being comfortable and friendly with online learning and teaching. Means all the academicians and everyone could become friendly with technology. By the grace of God and with lot of effort and hard work, our teachers have learned various ways to make your online classes effectively and how to make our class interesting. There are some skills every teacher is required for whenever he is taking online classes. So we all know that online classes are quite different from offline classes in many ways. Like every student is present in his own home, in different situation, different environment, different atmosphere. Even everyone is having some different kind of atmosphere around him. Like someone is having a a small area for a 6-member family, so he is not comfortable in front of with his teacher or with other students. On the other hand, some students another student is having a wide area of living, so he's comfortable with the online classes. Someone is sharing his screen because his background area is normal and quite okay, but some students are having not good background area, so they are not comfortable in video also, so they just hide himself or herself in front of teacher, even in front of a student classmate. So just for this concern, so there are some other problems also we can just feel in online classes.
In this situation, teachers need to possess some high level emotional competence to handle various kind of problems. In online classes, teachers and students facing some very common problems which I'm just discussing about. The first one is adaptability struggle. We all know that in DED, DLED, in all the teacher training programs, we all just heard about ICT and educational technology. But it is very clear that ICT or education technology is just friendly, or it is just like a bookish knowledge, according to me, because I have already done B.Ed, M.Ed, and some even I have been just teaching from past years in B.Ed college also. So I just realized that we are teaching ICT, but we are not giving the enough information or enough skill training to our teacher trainees or the future teachers. So the adaptability struggle is secondary for students, firstly for teachers also. Teachers are facing some problem that they are not comfortable with online classes. They are being uncomfortable while delivering their lectures. Another one is technical issue. The ma'am told us that technical issue is very common. India is a country that is having a wide rural area, so connectivity problem, internet problem is quite common. So when some student, they in any class there are 50 students, and even 10 or 5 are having a technical issue. So I think that class is not quite successful, because according to our education system, if one student is not adapting the knowledge, or the one student is being failed in the objective uh, mm, we have already planned for the class or for the lecture, so that education system or that lecture or that class is failed. So this one is technical issue is a very serious issue in online classes. Third one is time management. Time management means sometimes teacher is planning for 30 minutes that I have to teach for 30 minutes, but even it is applying on me also, because I have this ma'am is just giving me 5 minutes, but still I don't have idea, and I'm just explaining. But that time management is not clear for students, for teachers. Teachers is not planning according to time, and students, when he is delivering his lecture and he is delivering his knowledge, then at that time he just plan for 30 minutes and he just explain for 40 minutes, and again on Zoom classes 40 minutes is the maximum time. So when his class is complete, there is no time for discussion for students. They are not having time for a class discussion. They wanted to ask question with teachers, but they didn't get time. Next one is motivation. In offline classes, we all are face to face in class. So sometimes when we see someone that is not being comfortable in class, so everyone is trying to motivate that student. But in online classes, what is being happen, that some students are just being offline, just being audible. Some are not being visible. So if teacher is not understanding, even teacher is not able to understand, even not able to see the student, then there is a lack of motivation among students as well as for teachers. In offline classes, if teacher is just not extra able to explain something, that time he can say, okay student, I will learn this topic tomorrow and I will explain you in deeply or something like that. But in offline classes, when teacher is stuck on a topic, then what is happening? Everyone is just watching to teacher, because already teacher has muted all the mic, or everyone, all the students. So at that time, it is lack of motivation. Next one is interactive learning. Interactive learning, there is a lack of interactive learning. People or students and teachers are not present face to face. They are face to face, but in virtual mode only. So the conditions which are present in face to face in offline classes, that is not present in online classes. Inactive learning.
students, you are giving knowledge, or we are just giving something knowledge according to us. We are giving very good speech, very good PPT. We have made so many innovative things, but the output is inactive learning. Students are not responding. We have already muted everyone's mic. We have already muted the video also. So what is happening? The learning is not active. At that time, everyone is inactive. Maybe someone is bathing. They have all. They are all nine, but they are bathing. They are eating their lunch. They are doing something else. They are watching TV. So it is an inactive learning. We are not sure that whatever we are delivering in front of students, we are just grasping knowledge according to our objective. Lack of feedback. In offline classes, after explaining every line, we are saying, okay, student, you got our point, you got whatever I just told you. Students are saying that yes, ma'am, yes, sir, or whatever. This is the feedback. Students are responding in front of us that if we ask some questions, then after that we just gave our feedback that okay, very good or something like that. But in online classes, what is going on? We have to just complete our topic in 40 minutes. We are not giving chance to explain the students' own view, and feedback means the lack of feedback in online classes. Absence of face-to-face interaction. Please conclude. Okay, ma'am. I'm just concluding. So, but what is my point actually? My point is, for facing all the online classes problem, I have a solution. I have a tentative solution according to me. So the solution is a teacher should be emotionally competent. But before explaining about emotional competence, I have to tell about what is emotional competence. Psychologist Alice in 1987, he explained the emotional competence. Emotional competence is the ability to understand, manage, and express the emotional aspect of one's life in ways that enables the successful management of light tasks such as learning, forming relationships, solving everyday problems, and adapting to the complex demands to growth and development. According to Sharma, emotional competence refers to a person's ability to express or release his inner feeling and emotions. It implies an ease around others and determines our ability to effectively and successfully lead and express. But we have to understand there is a difference between emotional intelligence and emotional competence. Emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves, for managing emotions well in others and us. On the other hand, emotional competence is a capacity or skill that results from long-term efforts to integrate disparate emotional skills in ways that enables person to manage their emotions appropriately within a class. Emotional competence doesn't require emotional intelligence. The people with low emotionally intelligence might achieve emotional competence within a specific domain if experience has taught them the requisite skills. This is a research finding given by Hayes 1999, Sternberg 1990, Sani 2020, 2000. So overall, there is an urgent need to assess the level of emotional competence among our teachers, whether they are primary, junior, or higher, or university level. So keeping the above issue in mind, I have just suggested that everyone or every teacher try to improve his emotional competence. How we can improve our emotional competence? So we can learn the emotional competence by reading the articles related to emotional competence, by doing practice in front of our students. In this process, we have to just manage our emotions, and we have to just understand the other person's emotion, and we have to just behave according to that situation, not according to ourselves. We have to just manage our personal emotions in front of students. We have to understand the point of students. This is just related to child psychology. So in online classes, there is an urgent need of understanding student psychology because they are online, so they are not physically present in front of us. So we have to just understand the emotions of students. So there is a urgent need of understanding this concept. So thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you, Ms. Pratiksha.
And thank you everyone. Now I end up the technical session 1 and I call Ms. Sharda to continue with the technical session 2. Over to you, Ms. Sharda. Thanks to all of you. Thank you, Rinka. थैंक यू Good अजीत afternoon, सर, all एक मिनट। deputed. अजीत सर और संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शेयर किया फर्स्ट सेशन को। शुक्रिया डॉक्टर बबीता सिंह, आपने मौका दिया बोलने के लिए, और पूरे मैनेजमेंट का शुक्रिया। हमीद मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक यू अमित sir. सर। थैंक यू अमित सर। हाँ, और मैं वोट ऑफ थैंक्स दूंगी आप लोगों को लास्ट में। आप बने रहिएगा सर हमारे साथ। एनी टाइम मैम, I'll be there. I would request, sir, that if you can join our valedictory session by 1:30, we will start valedictory session. So please Definitely, join with us. yeah, we will be there, ma'am. Thank you, Yes. ma'am. Thanks all of you. Mr. Okay, संदीप thank you सर very आप much. भी। Thank you very much for inviting. That was a lovely sharing online ideas. So thank you very much. Sir, please join us for valedictory session also, Sandeep sir. Yeah, definitely I'll be there. I'll be there. Yeah, by संदीप जी। 1:30. अश्विनी सर नमस्कार। नमस्कार। संदीप जी का बहुत ही अच्छा था भाई, कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए बोलने को। अच्छा अश्विनी सर, अच्छा ठीक है। अरे नहीं ठीक है सर, आप बोलिए, ठीक है। अभी इट्स योर सेशन ना। या ओके, थैंक यू। Yes, Shadu. Good afternoon to all dignitaries, guests and delegates. With grateful joy, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here. I am Sharda More from Mewar Institute, DLED 4th semester. Let me inform you that in this session, our chairperson are Dr. Ashwani sir and Mr. Terence. Sorry. Before we begin this session, I would like to give a brief introduction of our chairperson, Dr. Ashwani. He is working as associate professor in Department of Education and Training in Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Dr. Ashwani has completed school education in Mohammadpur, Haryana and Jafarpur Karan, New Delhi. He has done graduation and post-graduation in Pol Science from ARSD College, Delhi University. He has done B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD in education from Delhi University. His 25 research papers, 15 SLM lesson, 2 edit books, and 2 books naming Panchayati Raj and Education, Panchayati Raj System in India, and Community Participation in Education have been published. Sir, it is not enough for your introduction, but I stop here to short time. Now I would like to brief introduction of second chairperson, Mr. Achint Terence. He is working as assistant professor in Department of Physical Education in Sam Higginbotham University of Agriculture in Prayagraj. He has completed his graduation from Kanchan College, Agra. He has done MA in Economics from Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra. And he has done MA Yoga from Uttarakhand Open University. He has done B.Ed, B.Ped and M.Ped from Lucknow Christian PG College. He has done M.Phil from Annamalai University, Tamil Nadu. He is pursuing PhD in Physical Education from Mewar University, Chittorgarh. His thesis paper has been published. He's presented more than 10 papers in national, international conference and seminar. His 2 books are going to be publishing lesson planning in physical education, psychology of physical education and sports. He has certificates on computer programming, international yoga training, and on in training program on MOOCs, organizing member of national webinar. He has teaching experience in 5 years in intermediate college and 11 years in university. Thank you, sir, to present here as a chairperson.
Now, with due kind information, I would like to invite our presentators, Miss Ananya Dubey. Miss Ananya Dubey, are you there? Yes, I'm here. Uh, I will be giving my presentation within few seconds. Ananya, will you play your PPT yourself? Yes, ma'am. Okay. Okay then. Yes, you can start. Okay, ma'am. She's doing from her side. Is my screen visible, ma'am? Is it visible? Yes, it is coming. About to start. Okay. Okay. Hello. Yes, Ananya. Yes. Yes. Okay. So, good morning, the respected dignitaries, HODs, director sir, and my colleagues, my present colleagues. So, my name is Ananya Dubey, and I am a student of ex-student of B.Ed batch 2017-19, and I am about to speak on the topic COVID-19 impact on education in India. So, my sub theme is strategies, education, now and then. And I will first start with the introduction. The global pandemic has taken a massive role. So yeah. So the global pandemic has taken a massive hit on all the sectors of the economy. While it has been slightly easier for the MNCs and professionals to adopt work from home as the new normal and continue business as usual times, it has been a challenging for the education system in India. So as we all know that it has been slightly easy for other MNCs, while it has been a little difficult for the education sector to adopt all the changes because the teachers are like they have a one-to-one communication with all the students as well as the parents, and now it has become a little bit difficult because there are students, we are teaching the students who are below who are smaller, and it is very difficult for them to get connected to this new technology. As India went into lockdown, this was one of the strictest in the world. The government was quick to advise the schools and education institutions all over the country to opt for an online education. So after we went on lockdown, everyone is aware about that the government has advised all the schools to go for an online education. While online education was a challenge for the parents as well as the children and teachers as well. So, however, these efforts were not entirely fruitful, as a lack of robust digital infrastructure is also a reality in India. So, as we all know that we are not digitally so much developed, and we lack somewhere in the digital transformation. So, it was not that easy for us to adopt the technology, and it was a little difficult. Nevertheless, the pandemic has largely impacted the way education is delivered in India. And as we go further, we will discuss its impact on the lives of students and teachers, as well as the possible solutions, strategies, and methods that can be adopted in the coming future. So, now as we have started using this technology, the online education, and we will in the coming future we'll be knowing about its advantages and disadvantages, and how we can come up with the shortcomings of the technology and various other things. Now we'll discuss this from the point of view of a student, from the student's perspective. So we'll look first at the positive impact.
the students get to learn in the confinedness of the comfort zones. So earlier, now what is earlier the students had to go to the school and travel a long distance, and they were studying in the school while the parents were very much unaware of what the students are going through and what all difficulties they are facing, and they were very unsure. They were very worried about their child. So now what is happening is the students are in their homes and the parents are able to monitor them and keep a look at them. The next point is it has more learning engagement experiences rather than the traditional learning. Now here what is happening is on this online platform that the teacher is able to present each and every example there and then. While earlier what used to happen when we had this physical classrooms and before the lockdown had started, so the teacher, if she has to present something on the smart board or something like that, so then they have to do some special arrangements, or they have to take the students to the smart class or somewhere like that. But here on a single platform, everything is available, and within few minutes the teacher can show any example or an experiment which she wants to show to the students to explain the topic. It is also cost effective and also does not involve discomfort as well as interest loss due to commuting. Now what happened? Earlier the students used to commute from one place to another and used to travel a long distance. They used to go some of the students used to come from Delhi to another state also to study. So this has reduced the time of commuting because due to traffic, they were stuck in traffic, and what happened that in the morning only they used to lose interest. And due to this, when they reached the school, they were not much interested in the topic which was being taught in the class. Now, when they are at home, there is this traveling time is not there, and they do not need their interest is maintained. It also ensures students access to quality education in a safe environment. Now, this ensures that in a quality education, that it is the same safe environment for the child, that he or she is at the comfort of his or home under the guidance of his parents, and they can get a quality education. Means every experiment they are able to perform, they are able to see every experiment through which the teacher is showing, and the student is feels much more connected to the teacher. Now we will look to some of the negative impacts. Face-to-face learning is replaced by impersonalized nature of remote learning. Now what has happened is earlier the teacher was in front of the child, so the child used to feel a lot more personal connect with the teacher, whereas now there is this computer screen or this mobile phone screen which the student accesses and is not able to connect that much as compared to the face-to-face learning. The second point is students living in Tier 2 and Tier 3 cities do not get access to online education due to lack of robust digital infrastructure. Now what has happened is here in Tier 2 and Tier 3 cities where internet is not that much effective as compared to Tier 1 cities, so the online education is not that much easily possible. There are technological glitches which the student has to face, and they're not able to connect on time or something like that, and they're not able to access to the class on time or that efficiently. The next point is online education involves many disruptions due to frequent internet collapse. Now, as we all know that everything is going on internet, and everyone, even the MNCs, each and every sector is works is done through internet. So here what is happening is that sometimes the internet facility collapses and the connection is lost. So due to this, there are many difficulties which have to be faced on the teacher's perspective also, and on the side of the student also. It negatively affects the mental and the physical health of students by increasing their dependence on technology. Now, this has adversely affected the child, as the child is totally dependent on in technology, because everything he or she has to search, they definitely after a time they just take their phones and search it on Google and present it to the teacher. They do not do their brainstorming and do not allow their mind to think of new ideas. Next, we will look from the perspective of a teacher. So there are the pros, means the advantages. First is teachers are able to use social media as an educational tool. So here teacher
through the medium of laptop or internet. With the facility of internet, they're able to give more nice ideas and experiments with which the student is able to easily understand the topic. Earlier it used to be a little bit boring for the child because they were just books, mostly just the student has to understand from the books, and it was at times it was a little bit boring for the child. The next point is teachers can have virtual discussions rather than instructor-led in the lectures, which led to better student participation. Now, there's a virtual discussion which simultaneously keeps on going with the student and the teacher. The teacher can ask queries from the students, as well as the students can also ask the teacher where and when they are not able to understand the topic. Also, there is earlier the student used to feel a lack of hesitation. There was a hesitation in the child that what will the fellow students feel, or what will they think about me if I'll ask this question. But now it's not there, as the student feels that he or she is directly connected to the teacher only. So coursework instructions can be customized according to the teacher's field and subject area. So now, earlier what used to happen that we have these books. So there's a vast syllabus and a lot of things are given over there. So what has happened earlier, what used to happen that teacher had to read each and every thing given in the book, and it was a lot of time consuming and a little bit boring for the child. Now what has happened is the teacher can directly focus on the areas which are more important, and or the points she can mention which are more important or which she wants to explain. The last point is over here is through an online education, teachers are able to ensure student-centric approach and enhanced attention to every student. Now over here, the teacher is able to give attention to each and every child. Through online education, she is able to attend each and every child. Earlier, there was classroom and there were so many children, so the teacher was not able to attend each and every child because some were sitting at the back and they were not clearly visible to the teacher. But now on this online platform, each and every child is clearly visible to the teacher, as well as the teachers, whatever the teacher is saying is clearly understandable to the child. Now we look to some of the cons, which are online education will lead to low quality evaluation. This is one of the major difficulty which we are facing on online education, is that after the teaching the teacher has done, there is a lot of things that the teacher has to evaluate, but she is not able to do it because while evaluation, if he or she, the teacher is giving a question paper, so the teacher is not aware on her part that either the child is doing the question paper, or the parents are helping, or the child is taking some help from the internet or what. So she is not totally aware that, or she is not confirmed that if whatever she has taught, the child has grasped it or not, or he is taking some help from somewhere. The second point is it doesn't provide teachers the opportunity to conduct different learning activities like brainstorming and group discussions among others. Earlier, when we used to go to school and teach over there, so we used to divide after, we gave a topic to the children and we asked the students to do brainstorming, think about that topic, give their ideas, give their suggestions. But now what has happened is this group discussions are no more easily happening, and the teacher is not able to give these kind of activities. She is not able to conduct these type of activities, and this is lacking. The students are not using their mind, the brains, and they're just grasping that information which the teacher is giving. The third point is it makes it difficult for the educators to establish a connect with the student. Now what has happened is earlier there was a personal connect, as they were able to see the child in front of them. They were also side by side with they were giving education. They were also sharing the problems with each other, and it was more of a connect was established. But now, due to this online education, the students are not able to feel that connect because they are the budding learners, and they're not able to establish that connection so easily. The last point is traditional instructors believing in lecturers and handouts may have tough time in adopting the system and software. Now those instructors who are used to giving instructions through lectures and through handouts, the printouts which they used to give of their lectures, so they are used to of that, and
this new technology, which has started suddenly, is not so familiar for them, and they're not able to adopt it so easily. So this has also been a problem on their front. Now we look at the education next. So what is education next over here? We are talking about that what will this online education give an impact on the future generation or future consequences, what will be there. So as you would be able to see the graph over here, which I have given, some of them what they are doing is some of them are postponing their enrollment. While I also saw this in my school, that some students are who are earlier to taking their enrollment in the school have stopped it for the next year, because they think that half of the year has been wasted and something like that, and the parents are also thinking that their fees will be wasted. Also, that is 152 something students and enrolling to online course degrees. Some of them are there that they have 128 of them are there who are enrolling to this online degree, going to different countries. So some have also decided to go to the different country or neighboring country, and some of them are not studying at all. So these are the various scenarios or various things that are being taking place while this online education is going on. So we look at the points which are given over here. Online education will lead to students getting underconfident due to the less exposure being provided to the students. Now what is happening is the student is learning online and he is just familiar with this screen which is visible to him. Now this will develop a lack of underconfidence, because the child will become underconfident, because earlier what used to happen is he had either if he wants or not, he or she wants or not, he had to present himself in front of the people. But now what is it that he does not have to express himself in front of anyone, and so he is becoming underconfident. He is not so confident about what he has to say or what he in future if he will go somewhere or for an interview or something like that, he will not be that confident as he was earlier. Students will lack professionalism, which will create hurdles in them finding a job in an increased corporate world post-pandemic. Now, when this pandemic will be over, what will happen is, as earlier, the child used to go to school, we used to teach the child, you need to come in proper uniform, you need to follow the rules, all these things we used to tell the child. But now, there are no rules, no regulations which the teacher is asking the student to follow. So this student will be less, what we can say is less, will not be following these rules and will be less educated or something regarding the rules. Stressed, yes. Yeah, less stressed. The third point is online education may also result in less population getting educated due to lack of digital structure in rural India, which constitute about 66% of the country. So as we know that most of our population is living in the rural areas. So they are not having that access to internet and all these facilities. So what will happen in the future, that less amount of population will be educated, because now they are not having an access to this online education and this internet, all of this. So the less amount of percentage of students will be educated in the future. The next point is students will lack knowledge about how to implement their knowledge in real life situations because of less access to activity-based education. Now, what is happening is, earlier when this child used to go to the school and he was able to practice his through some drills or something like that, that what the teacher used to do was, she was trying for the students that he or she could implement his whatever he or she has learned to the real life situations. But now what is happening, that the teacher is not able to construct or to develop those skills in the child, because no activities are being organized. Like for example, earlier we used to learn the chapters, we used to study the English poetries or plays which we used to study in the class, and we used to present them in the assemblies and all. But now what is happening is nothing like that is able to be possible. Next is increased practice of online education in the post-pandemic world will lead to a massive job loss in the education sector due to decreased requirement of the non-teaching staff. Now, non-teaching staff is, as you know, because we know more schools are being opened, so non-teaching staff like the electrician or the PNs and all are no more needed.
So there will be loss of job for them. Online education as a whole will majorly affect the eyesight of the involved users and also may also exhaust their minds due to tech usage for long durations. So the students, as we all know, are earlier also they were all time they were busy using the surfing the internet and watching this online everything online videos and all. And now this has increased only, and in this way the students will their eyesight will be weak, will become weak gradually. It will also Please lead to conclude, है reduced ना? Conclude करिएगा. okay. It will also lead to reduced social interaction of the youth country. So this will help. This will lead to the social interaction as students will not be able to interact. Last, I would like to give some suggestions related to this. The telecom industry will provide quality internet access to its user. Now, I think the telecom industry must improve the speed which they are giving right now, so that the students can use it better. Devise structural learning experience that provides effective development guidance. So there should also be some proper structure so that the students can get a proper course to study. So that there should be properly timely, relevant, and actionable feedback. So the feedback technique should be involved, should be changed a little bit so that there can be a proper feedback for the teachers of what the students have learned, and identify and promote the best tools of achieving learning goals. So the learning goals should be achieved properly. So this should be the main goal. Now at the end, I would like to just say that I would like to conclude by saying that we all are going through tough times at present. There are two kinds of people who see the problems as opportunities and the ones who see problems in opportunity. We should see this pandemic as an opportunity or a blessing in disguise. We can undertake many critical structure reforms that were needed for a long time to be given a new life to our clumsy and fractured education system. The government has now done its part and utilized most of the opportunity. Now it's our turn, and the responsibility of shaping the future lies with us. Thank you, everyone, for listening to me patiently and devoting your time. Thank you. Thank you, Ms. Ananya. Thank you for your effective presentation. Now, I would like to invite our second presenter, Ms. Harshita Singh. Ms. Harshita, are you there? Yes. Good morning. Yes. Yes, I'm there. Good morning, everyone. I would like to start by presenting my paper. I hope my screen is visible to you all. No, not Yeah, yet. visible. दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही। Yes, visible. Yes, visible now. Okay. So, good morning to one and all present here. My name is Harshita. I am currently pursuing final year of my bachelor's in philosophy from Dolathram College, University of Delhi. My topic for today's presentation is stress management during the COVID-19 pandemic. I would first like to start by defining stress. What stress actually is. Stress is the response generated by our brain to any situation which we consider as challenging or threatening. The subjects or the objects that cause stress are termed as stressors. Stress is not always bad. There are two types of stress, eustress and de-stress. De-stress is the result of the unpleasant stressors, and eustress is the result of a situation which motivates us yet at the same time challenges us. For example, example of a de-stress situation will be like if someone is caught by police or met in an accident. So the stress that the person will be facing at that time will be called de-stress. And for example of eustress will be, suppose if a person is going on a vacation to USA, he or she will be excited but also stressed at the same time. So that type of stressor will be called as eustressor.
Now the question arises is, now I would like to throw some light on the effects of overstressing. Overstressing, overstressing can bring up physical, mental, and physiological changes in a person. Like a person can be frustrated or agitated. A person a person can feel a person can feel frustrated in a situation when he or she is stressed. I have tried to explain this situation by the following diagram. As you can see, like the catastrophes as in the natural calamities like any earthquake or any landslides or something. Major life events like you're getting admitted into a college or you're getting married or any such example. Social problems like you're facing problems in your relationships and daily hassles which we face in our day-to-day life. All these things build up stress. Now, there can be two effects: unhealthy behavior, and the other one is physiological reactions. Unhealthy behavior, such as the person can be aggressive or agitated or frustrated or overpressurized. Physiological changes, such as increase in blood sugar level or maybe hypertension. All these turn up into mental disorder and heart disease. Now the question arises is how COVID-19 generates stress. On 11th On 11th of March 2020, the World Health Organization termed COVID-19 outbreak as a pandemic. Describing something as pandemic itself is enough for creating unrest and distress in each and every society. WHO has also given importance to mental health during the pandemic. On 5th of March, WHO launched a campaign called Be Ready for COVID-19, in which WHO spread awareness about the effects of COVID-19 and how to deal with it, how to deal with the stress generated by this pandemic. The second program which WHO launched was on 10th March 2020, which was named as Ask Who, in which an expert WHO doctor Aisha Malik answered the public questions about mental health and preventing stress during the outbreak. Now I would like to talk about impact on mental health in India, impact on education of the pandemic in India. According to a UNESCO report, the COVID-19 pandemic will affect 290 million students across 22 countries, out of which 32 crore students are Indians. Well, this is a huge number. The students are facing uh, various kind of stresses, like their future seems blurry as their exams has been cancelled. Like the outbreak started in the month of March, and as we all know, March is the month of board exams, and also the exams for the final year students of all the graduation courses uh, are there. So because of the postponing and cancellation of the exams, the students are stressed about their future, their career. The teachers are also stressed as they have to cope up with the new ways of teaching. They have to adapt to the new ways of technology, and which is quite a bit stressful for the majority of the teachers. The educational institute management and the employers are facing tremendous amount of stress as they are concerned about the future of their organization because of the shrinking economy and the going down GDP. It is difficult for them to maintain the exact quality of their institution and pay their employees. All these events will result into a major setback for the students as well as the teachers and all the educational institutes. So for examining the condition of stress in the students as well as the teachers and the management staff, I conducted a short survey among the teachers, students, and employers. And I started the survey by putting up a questionnaire of about 15 questions,
The questionnaire consists of three sections: the personal details section, the statement section, हर्षिता प्लीज and the कंक्लूड करिएगा. आपकी कनेक्शन भी ठीक नहीं आ रहा है बेटा. प्लीज कंक्लूड okay, ma'am. कीजिएगा. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, like here, I have put up the summary of the survey. As you can see, all these charts are the answers of the summary which I got from the survey. And as a conclusion of the survey, I got to know about some of the stress managing strategies and methods which I would like to share with you. Like, you can use meditation and as a coping mechanism. You can indulge into some kind of physical activities like exercising or yoga. You can use this time to explore various skills. You can upgrade your skills by learning new things. In conclusion, I would like to say that there is no concrete solution for this situation right now, but we can contribute a bit to make changes in the given situation by helping each other, by listening to one another's thoughts, by helping one express himself. By doing this, we can help ourselves and others to cope up with stress. In the giving situation, it is really necessary for us to adapt optimistic approach, and it is high time that we talk about our mental health. Thank you, everyone. Thank you, Harshita. Thank you for giving us effective knowledge. Now, I would like to invite our third presenter, Miss Kanchan. Kanchan, are you there? I think she's not there. Yes, ma'am. Okay. So it's okay then. If she joins in between, we will call her after the our guest of the day they speak after this. Okay. So good afternoon, everyone present here. So this was our technical session 2, and we had 3 presenters here, in which one of our presenter is not available right now. So I think I would like to invite Dr. Ashwini now. He is presently working as associate professor. So sir, please take over the stage and give your valuable and expertise thoughts on this topic. थैंक यू मैडम. सभी को नमस्कार. एचओडी मिस्टर अमित कुमार जी, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन डीएलएड बीटीसी. डॉक्टर बबीता सिंह मैडम, डिप्टी एचओडी डीएलएड. कीनोट स्पीकर डॉक्टर सुमलता, प्रिंसिपल डीआईआरडी. डीएलएड की पूरी टीम, हरमित मैडम और मेरे साथी अजीत, अंशित, संदीप और इस पूरे जो भी सेमिनार में पार्टिसिपेंट हैं, सभी को नमस्कार. गुड आफ्टरनून. जो टॉपिक है कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया, तो ज़्यादातर सुमलता मैडम ने, संदीप जी ने और एक हर्षिता से पहले जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, काफ़ी कुछ बातें कह दी हैं. बहुत सारी बातें कह दी कि टीचिंग लर्निंग क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से क्या होना चाहिए. तो मैं उन बातों को बार बार तो नहीं दोहराऊंगा. मैं अपनी 3-4 बातें केवल अपने एक्सपीरियंस से रखूँगा और एक कोई टीचर एजुकेटर की तरह बात न करके एक आम आदमी की तरह बात करूँगा कि क्या चल रहा है और एजुकेशन के बारे में हम सोच क्या रहे हैं. तो मैं 4 तरह की चीज़ें लेके चलूँगा. एक तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और ऑनलाइन लर्निंग क्या है, और स्टूडेंट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, और योगा एजुकेशन खासकर. एक इसमें जो मुझे टॉपिक दिया है हेल्थ एजुकेशन, योगा एजुकेशन किस तरह से आज काम कर सकते. तो 4 चीज़ें मैं कवर करूँगा खासकर. तो मैं सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं जब 2004 में जब मैंने बीएड एमएड एमफिल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं आपके इंस्टीट्यूशन में भी एक बार इंटरव्यू देने आया हूँ एज ए लेक्चरर की पोजीशन के लिए. 2004 या 5 की बात है. तो मेवाड़ में आया था मैं. तो फिर मैंने समुदयाल डिग्री पीजी कॉलेज में 2 साल नौकरी किया और उसके बाद में हैदराबाद में शिफ्ट हुआ. तो ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आप कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, और आप जब माइग्रेट होते हैं तो आपके थॉट कैसे बदलते हैं, आपकी एजुकेशन कैसे बदलती है. ये पूरी सिचुएशन को मुझे समझने में सब काम आ रहे हैं. दूसरा, जब मेरी फर्स्ट टाइम मेरी जो सर्विस लगी वो लगी डिस्टेंस में.
टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड में मैं बीएड, हमारा एक कोर्स है जिसको डिस्टेंस के थ्रू कराते थे, और हमारा जो मीडियम है वो पूरा उर्दू मीडियम है। हमारी यूनिवर्सिटी का पूरा उर्दू, हमारी पूरी टीचिंग उर्दू में होती है, उर्दू ही मीडियम, उर्दू में लिखना है, उर्दू में ही टेक्स्ट बुक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूँ। अब जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई डिस्टेंस में, तो मैं अपने टीचर्स को मैंने बताया, दोस्तों को बताया, तो सब बड़े एक सोचते थे भी आप कहाँ नौकरी लग गई आपकी, और कहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हैं, कि जहाँ पर पढ़ाने का काम नहीं है, आप किताब लिखने का काम है, या कौन सा काम करते हैं। तो कम से कम मुझे 2 साल लगे डिस्टेंस एजुकेशन को समझने, कि ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या है और इसके थ्रू बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मैं फेस टू फेस मोड से पढ़ा हुआ था, और हमारा जो सीआई का इंस्टीट्यूशन है उसका एनवायरनमेंट भी बहुत कुछ ऐसा था कि क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए। और जब भी हम सपना देखते थे कि टीचर बनना है, तो हम अपने आप को क्लासरूम में खड़ा देखते थे कि क्लासरूम में हम हैं और हमारे सामने बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की एक थॉट, एक संकल्पना, एक इमेजिनेशन था हमारे पास। तो जब डिस्टेंस में नौकरी लगी तो एक मुझे रूम दे दिया गया, और वहां पर मुझे काम समझने में ही बहुत टाइम लगा मुझे, कि भैया पढ़ाना है बच्चों को कैसे। वो सिचुएशन है कोरोना के टाइम में मैं समझ रहा हूँ पूरी, कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। और संदीप जी ने इस पे बात की थी डिस्टेंस लर्निंग पे, संदीप जी ने ये उठाया था ये मुद्दा। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, मैं बहुत मेंटल डिप्रेशन में चला गया था कि कहाँ पे नौकरी लगी, क्या काम करूँ, कैसे बुक्स लिखूं, कैसे बच्चों को पढ़ाऊं, क्या करूं। तो इग्नू ने बहुत काम किया, ई लर्निंग के कोर्स चलाए, और हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने भी इस सिचुएशन को समझा, और हम सबकी ट्रेनिंग कराई। मैं 4-5 चीजें जो बात कर रहा हूँ, कि एक तो हमारी ट्रेनिंग कराई डिस्टेंस के थ्रू, कि एसएलएम की राइटिंग कैसे होगी, ऑनलाइन टीचिंग कैसे होगी, ऑनलाइन लर्निंग कैसे होगी, एकेडमिक काउंसलिंग कैसे होगी, ऑनलाइन आप लोगों को प्रोग्राम कैसे डेवलप करने हैं। तो हमने बहुत 2 साल बहुत मेहनत की। तो फेस टू फेस मोड में पढ़ाने का एक मतलब जो सपना था वो बहुत रहता था, हमेशा एक मन में रहता था। लेकिन मैंने जब डिस्टेंस में काम किया ना 10-12 साल, मुझे एसोसिएट में अभी बना हूँ रेगुलर में, और एसोसिएट बने मुझे मेरे ख्याल है, हाँ पिछले सितंबर में ज्वाइन किया थी, में कुछ 1 साल भी नहीं हुआ, रेगुलर सिस्टम में आया हूँ अभी, इससे पहले डिस्टेंस में था। इतना काम है ना डिस्टेंस में, और इतना क्रिएटिव काम है। आप लोगों की सोशल सर्विस कर सकते हैं, आप लोगों को घर बैठे एजुकेशन दे सकते हैं। तो हमने 10 साल, हमारी जो टीम थी उसने बहुत काम किया, बहुत आला दर्जे का काम किया। हमने उर्दू में बच्चों के लिए बुक्स लिखी, 36 बुक हमने उर्दू में बीएड की पूरी लिखी हुई है, जिसमें कि 4-5 किताबें मैंने भी लिखी हैं। तो पूरे हमने वो किताबें जो उर्दू में हमने लिखी थी डिस्टेंस मोड में, अब वो सारे बच्चे हमारे रेगुलर के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, तो उसको बच्चे में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप अपनी बुक्स का एक ऐसे ही चैप्टर उठा के दे दो कि भाई ये आपको पढ़ना है, तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत होगी। अगर सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़ेंगे, वो एक बहुत ही इंस्ट्रक्शन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन की टीचिंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से लिखा हुआ है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि जब हमारे को कुछ लोग क्या कहते थे जब हम डिस्टेंस में थे, भाई ये नॉन टीचिंग टीचर है, तो मुझे बड़ा दुख होता था, भाई यार नॉन टीचिंग टीचर कौन सा वर्ड है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी खुद जो टीचर थे ना रेगुलर सिस्टम में थे, उनमें हमारे में एक तो बहुत बड़ा फर्क था। हमारे को देखने का तरीका भी अलग था। अरे डिस्टेंस में है, इनके पास कोई काम नहीं होता, ये ऐसे ही है। मतलब ये, मतलब क्या समझा जाता था, समझा ये जाता था कि जो टीचिंग है ना वो फेस टू फेस ही मोड में होती है, और लर्निंग एजुकेशन उसी में होती है। डिस्टेंस में कुछ नहीं होता, ये लोग बैठे रहते हैं, एक बार किताब लिख लेते हैं, और लिखने के बाद बच्चों को भेज देते हैं इनके पास, बाकी पूरे साल कोई काम नहीं होता। तो अब ये कोरोना का जो पीरियड आया है ना, इसने एक तो चीज की है कि दुनिया में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम रही है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, ये कोरोना ने दिखाया है। बहुत सारी चीजें कोरोना ने निकाली है बाहर। ये तो एक मैं मानता हूँ एक चीज आई है, कि आई है। तो हमने, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो दौर है, जैसे संदीप जी ने भी कहा था कि आने वाले टाइम में डिस्टेंस एजुकेशन काफी पॉपुलर होगी या काफी आगे जाएगी। तो मेरा रेगुलर सिस्टम में आने का कोई मतलब मूड नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह की बना कि पोस्ट आई सिलेक्शन हो गया ना। हमारे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस के थ्रू ऐसी ऐसी लड़कियां पढ़ी हैं कि जो कभी स्कूल में गई ही नहीं रेगुलर सिस्टम में। बीएड भी किया उन्होंने, एमएड भी किया हमारे यहाँ के रेगुलर सिस्टम में, डिस्टेंस से उन्होंने बीए किया हमारे यहाँ से, एमए किया डिस्टेंस से, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट हुए। कश्मीर में हमारे ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया है डिस्टेंस के थ्रू, और उसके बाद वो प्रिंसिपल बने हैं, एजुकेशन
क्या नाम है ऑफिसर बने हैं, कर्नाटक में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। तो डिस्टेंस के थ्रू लड़कियों की खासकर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जबरदस्त हुआ डिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पर मैं ये बताऊं कि जो ऑनलाइन लर्निंग का जो ये मुद्दा है ना, ये जो उठा हुआ कि ऑनलाइन लर्निंग ऐसे होगी, ये होगी, वो होगी, तो मैंने बहुत करीब से 10 साल 12 साल इसको देखा है, बहुत अच्छी तरह से सोचा समझा। तो हमें आज के समय में इसको समझने के लिए 3-4 जो चीजें हैं वो देखनी पड़ेगी। एक तो ये है टीचर एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है ना, पिछले अगर आप 2012 के बाद देखें पूरा बदला है। क्या नाम है, जब मैंने बीएड किया था 2002 में, तो हमने जब बीएड किया था ना, तो हमारे केवल 5 पेपर थे और 1 साल की बीएड होती थी, और मुश्किल से में 8-9 महीने का कोर्स था हमारा। अब तो पूरा 2 साल का कोर्स है बीएड का, जिसमें कि जैसे मेरे डिपार्टमेंट में हम बीएड में आईसीटी के 2 पेपर पढ़ाते हैं बच्चों को, 2 पेपर आईसीटी के पढ़ाते हैं, और डीएलएड में भी हम बच्चों को 2 पेपर पढ़ाते हैं आईसीटी के। तो पिछले 7-8 साल में टीचर एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि पहले हम ये मानते थे कि भाई टीचर एजुकेशन जो है एक ऐसी चीज है कि अगर कोई हिंदी का टीचर बनना चाह रहा है, या साइंस का टीचर बनना चाह रहा है, या मैथमेटिक्स का टीचर बनना चाह रहा है, तो उसको उसका स्पेशलाइजेशन किया जाए, उसको पेडागोजिकल स्किल्स सिखाई जाए। और फिलोसफी हम उसको पढ़ा देते थे, और साइकोलॉजी पढ़ा देते थे, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज दे देते थे। लेकिन अब अगर आप करिकुलम देखेंगे एनसीटी 2014 नॉर्म्स के हिसाब से जो आया है, उसमें बहुत तब्दीली आई, बहुत एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। अब हम साइंस के टीचर से और हिंदी के टीचर से, मैथमेटिक्स के टीचर से, सबसे उम्मीद करते हैं कि उसको पीस एजुकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको जेंडर एजुकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके पास योगा एजुकेशन की भी समझ होनी चाहिए। एक मतलब टीचर को ये समझ लिया गया है कि भाई अब टीचर एक बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करे। ये एक टीचर पे एनसीटी 2014 के बाद अगर आप करिकुलम देखें तो बहुत बड़ा दबाव बना, प्रेशर बना है, बड़ा है। और कोरोना के टाइम में मैंने जो 2-4 चीजें जो देखी, जो आजकल बड़ी डिस्कस हो रही है, एक तो एग्जामिनेशन की कैसे लिया जाए, जो सबसे बड़ी आजकल जो बात है ना, जो डिस्कस हो रही है, वो हो रही है एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए। अगर आज का आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो दैनिक जागरण में आया है इसका, पोखरियाल जो है हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि भाई बच्चे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, ये कह रहे हैं कि ठीक है आप बच्चे का एग्जाम लोगे, लेकिन बच्चे के एग्जाम की वजह से हमारी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी जो नहीं हो पाएगी। केवल बच्चे का सवाल नहीं है, पूरी फैमिली का सिक्योरिटी का सवाल है। तो ये भी एक है कि आज के टाइम में हम शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, उसके उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाले मैटर पे नहीं, ये कि परीक्षा कैसे ली जाएंगी, एडमिशन कैसे होगा। हमारे हैदराबाद में, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी में हूँ, और यहाँ पे डिप्टी प्रोक्टर भी हूँ कि उसमें डिसिप्लिन कमेटी में। तो यही सबसे ज्यादा 2 चीजें डिस्कस होती है हमारी आजकल हर मीटिंग में, जब से कोरोना हुआ है, कि बच्चों के एग्जाम के कैसे होंगे, सेकंड एडमिशन कैसे होंगे। और हैदराबाद में एक जो कोचिंग का बहुत बड़ा वो है, बिजनेस है यहाँ पे, बहुत बड़ा बिजनेस है कोचिंग का। यहाँ पर आप देखेंगे हैदराबाद में 10th के बाद सीधे बच्चे को क्या नाम है, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसमें एडमिशन करा देते हैं। उनका स्कूल वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। चैतन्य, आकाश वगैरह इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। यहाँ 10वीं के बाद 11th-12th का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो उनकी एक बहुत बड़ी तड़प बड़ी हुई है कि कोरोना बंद होने की वजह से उनका क्या हो गया है, किस तरह से कैसे काम चलेगा गया। अच्छा, टीचर, इस पूरे कोरोना के दौर में बेचारे टीचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कभी भी कुछ भी समस्या आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप एक चीज देखना, हम बच्चे की सोचते हैं सबसे ज्यादा, और दूसरों की, बेचारे टीचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो टीचर क्या कर रहा है भाई, कैसे काम कर रहा है, उसके ऊपर कैसे प्रेशर है, क्या उसको ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिली है। मैंने, आप जितनी भी चीजें देखेंगे ना, अगर पूरी जितने भी कमीशन पढ़ेंगे, तो उसमें आप एक चीज एक बार पढ़ा करो, देखो कि बेचारा जो टीचर है उसके बारे में कोई सोचता है कि भाई ये इतनी प्रॉब्लम आई, क्या मेंटल डिप्रेशन टीचर को नहीं होगा, क्या टीचर की प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको भी एक मुझे देखा कि कोरोना के टाइम में टीचर बेचारा कहीं ना कहीं छुप गया है। बच्चों के खासकर एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर देखना चाहिए कि किस किस तरह की क्या है, इनको डिस्कस होना चाहिए। फोर्थ, देखो एजुकेशन को जो हम मानते हैं, अगर बीएड के या डीएड के किसी भी स्टूडेंट से बात की जाए कि एजुकेशन क्या है, तो कोई भी सपने में ही बता सकता है एजुकेशन में 3 चीजें शामिल हैं, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक करिकुलम। संदीप जी ने, अजीत जी ने और सुमलता मैडम ने भी उसको डिस्कशन किया, हर्षिता ने और प्रेजेंटर ने भी। फोर्थ एक पिलर आज जुड़ गया है ऑनलाइन लर्निंग में, वो है पेरेंट्स, अभिभावक। आप इसको 4 बना लीजिए एजुकेशन में, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, पेरेंट्स।
अभी मेरी बच्ची दूसरे रूम में, उसकी 1 बजे से क्लास शुरू हुई है, यूरो किड्स में पढ़ती है, वो फर्स्ट यूकेजी में है, और मेरी बड़ी बेटी 6th क्लास में है, तो वो अब उसको क्लास करा रही है। अब सोचिए, अगर मेरी मिसेज भी बैंक में सर्विस करती है, वो बैंक चली गई है, मैं बड़ी बबीता मैडम से बात हुई थी, मीटिंग में जाना था मुझे कुछ, तो मैं आया हूँ इसके लिए। जिनके घर में दोनों अगर मदर फादर वर्किंग है, वो कैसे ऑनलाइन लर्निंग करेंगे, कैसे टीचिंग करेंगे, ये भी हमें सोचना होगा। अगर किसी के घर में 3 बच्चे हैं, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, एक ने डाला कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों की ऑनलाइन क्लास होती है, तो हम 3 लैपटॉप खरीदें क्या, या 3 स्मार्टफोन खरीदें? कैसे, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी उड़ाएंगे भी, कैसे करेंगे? और ऊपर से स्कूल की फीस भी देनी है पूरी। हैदराबाद में कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने फीस 50% की है, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिन्होंने फीस बढ़ाई हुई है। तो ये भी एक चीज आज के टाइम में देखने की, कि क्या जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, इस कोरोना के संकट काल में भी क्या संवेदनशील है या नहीं है, अभी भी फीस का जो मुद्दा हो कैसे है। तो ऑनलाइन लर्निंग हुई है, ऑनलाइन लर्निंग में खासकर आप देखोगे इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, बायजूस, वेदांतु, जैसे कि हमारे यूरो किड्स ने अभी 2 महीने में ही अपनी ऐप डेवलप कर दी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अपनी ऐप डेवलप कर दी लर्निंग की, उसमें अपने वीडियो, ऑडियो लेसन वगैरह प्रोजेक्ट सब बना के डाल रहे हैं, कर रहे हैं। अजीत ने एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, कि ये प्लानिंग की लर्निंग है। देखो, ऑनलाइन लर्निंग ये ठीक है कि अब समय एक ऐसा आ गया है कि अचानक से एक बीमारी आ गई, किसी को पता नहीं था, महामारी पैंडेमिक की सिचुएशन होगी, किसी को पता नहीं था, अचानक से आई है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो एक ऑनलाइन लर्निंग का हमने प्रोसेस माना कि ये होगा, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि जो डिस्टेंस लर्निंग जो है, हेलो, जो डिस्टेंस लर्निंग जो है, उसमें हम एक बच्चे को बीएड कराने के लिए डिस्टेंस में पूरा साल मेहनत करते हैं। जब से एडमिशन होता है, एडमिशन से पहले हम पूरी लर्निंग, पूरी एक्टिविटीज डिसाइड कर लेते हैं, कब बच्चे की वर्कशॉप होगा, वर्कशॉप में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कंटेंट पढ़ाएगा, रिसोर्स पर्सन कौन होंगे, और एसएलएम कैसे होगा, अपडेट कैसे दिया जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग लेसन कैसे दिया जाएगा, यूट्यूब के लेसन कैसे दिए जाएंगे, सारे फीडबैक फॉर्म कैसे भरा जाएगा, पूरी 1 साल पहले हम तैयारी करके रख लेते हैं, तब एडमिशन। तो ऑनलाइन लर्निंग भी एक प्लानिंग की लर्निंग है, एक ये ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है। ये ठीक है कि अब हालात ऐसे आ गए, हम इसको एक संदीप जी ने भी इस पे बात की थी कि हमें ऑनलाइन लर्निंग के मटेरियल को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे क्या है। दूसरी चीज, जैसे अजीत ने कहा था कि एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज है कि जब आपके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव तो आपके फेस टू फेस मोड में बने हुए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन लेंगे, ओपन बुक एग्जाम लेंगे, आप ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे, तो भाई इंटरनल एग्जाम लेंगे, बहुत सारी चीजें चली गई हैं। तो जब आपकी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव अलग हैं, तो एनालिसिस कैसे, मतलब उसका एवोल्यूशन सिस्टम कैसे होगा, तो ये भी एक देखना पड़ेगा कि हमें क्या इस सिचुएशन में ये काम करना चाहिए, एनालिसिस वाला है, नहीं करना चाहिए, कि बच्चों का एग्जाम लेना इतना ज्यादा जरूरी है या जिंदगी इतनी जरूरी है। जिंदगी इतनी जरूरी है, सोचना है, मतलब कि एजुकेशन क्या बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो सकती है आज के टाइम में। इस पे भी मैं केवल कह रहा हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हाँ भी ये क्या चीज हो सकती है। दूसरा, एक ने और बात उठाई थी इकोनॉमिक कंडीशन की। मैंने बीएड एमएड में अपनी जूम के थ्रू क्लासेस ली, और गूगल ऐप के थ्रू भी क्लासेस, गूगल मीट के थ्रू भी 1-2 क्लास ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो मना ही कर दिया था, क्योंकि कह रहे थे सर इसमें सिक्योरिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डाटा चोरी हो जाता है, बैंक के अकाउंट खत्म हो जाते हैं, ये बहुत सारे हैं। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर वगैरह से बात की कि आप लोग अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं अवेलेबल कराते हैं, आप लोगों के पास अपना सिस्टम होना चाहिए। पिछले 5 साल से हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी केवल एक ही काम पे लगी हुई है, जो मैंने कम से कम 10 कोर्स किए हैं, कि मूक्स कैसे डेवलप किया जाए, स्विम प्लेटफॉर्म पे कैसे काम किया जाए, ऑनलाइन आपको कैसे कोर्स बनाएंगे, यही काम हुआ पिछले 4-5 साल में। हमने बहुत सारे ऐसे कोर्स किए हैं। एक अगर आप देखोगे ना, पिछले क्या नाम, अगर हम पूरा दौर देखें, तो दुनिया को कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई है, कि किस तरह से ज्यादा लोगों पे ये कोशिश की गई है कि भाई सीसीटीवी पर ज्यादा विश्वास किया गया है। जैसे मैं भी बताऊं, डिसिप्लिन कमेटी में तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बच्चा कुछ आके कहता है तो हम सबसे पहले अपने सीसीटीवी कैमरे ही देखते हैं, बच्चे की बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो पिछले 10-5 साल में ना कुछ इंसान कुछ ज्यादा ही डिजिटल चीजों के पीछे पड़ गया था, ये डिजिटल होना चाहिए। अच्छा, ऐसे स्कूल्स भी आ गए हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई
आपका जो है ना, हम बच्चे को आप एडमिशन कराइए, आपको लाइव क्लास आप देख सकते हैं कभी भी, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कभी भी किसी भी तरह से कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। तो अब देख लीजिए सिचुएशन, अब वो कैमरे हर घर में पहुंच गए हैं, हर बच्चे तक पहुंच गए हैं, ऐसी सिचुएशन बन गई है, हर जगह पहुंच गया। तो बच्चे के पास लैपटॉप है, मोबाइल है या नहीं है, इंटरनेट है या नहीं है, कैसे? मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं बीएड वाले, बिहार के कुछ ज्यादा स्टूडेंट कि सर हमारे पास मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लाइट नहीं आती है। वो सनलाइट से जो उनका सिस्टम है उससे वो कभी कभी अपने चार्ज करते हैं। ऐसे हालात में भी हमारे स्टूडेंट है बिहार में। मैंने बिहार में पीएचडी की, तो मुझे पता है कि बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं अभी जहाँ पर लाइट की बहुत दिक्कत है। तो ये भी है कि बच्चे ये कहते हैं सर हमारा मोबाइल ही चार्ज नहीं हो पाता, आप कौन सी ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं। जैसे संदीप जी भी जानते हैं कि डीयू ने भी एक ये रिसर्च कराया था, डोटा ने, कि बच्चों के पास ना 80% बच्चों ने ये कहा था कि हमें ऑनलाइन लर्निंग से हमें कोई पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, हमें इंटरनेट नहीं हुआ ना हमारी रीडिंग हुई, तो हमारे एग्जाम ना लिए जाए। ये दिल्ली टीचर एसोसिएशन ने कराया था ये कोर्स। कहीं ना कहीं हमें पहले ना अपने पेरेंट्स जो है उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, पीटीएम के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, या कुछ इस तरह के कोर्स बनाने चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए पहले कि ऑनलाइन लर्निंग है क्या। ये पहले पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और जो हमारी टेक्स्ट बुक है, अभी मेरी बेटी पढ़ रही है माउंट लिटर्जी स्कूल में, 6 क्लास में है, तो उसकी मैडम क्या करती हैं, एक तो वीडियो बना के भेज देती हैं, और एक क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का कोई भी एक चैप्टर लिया उसको स्कैन करके भेज देते हैं। हमें ऑनलाइन के लिए ना टेक्स्ट बुक की तैयारी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन क्या है, किस तरह से क्या होना चाहिए। अगर साइकोलॉजी के हैं संदीप जी कि अल्बर्ट बंडूरा हमने पढ़ा है, वाइगोत्स्की पढ़ा है, ये कहाँ जाएंगे ऑनलाइन लर्निंग में? किस तरह से हम देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा को, वाइगोत्स्की को? ये किस किस तरह से कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग में? ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेगी कि बच्चे की जो सोशल लर्निंग है, जो ऑब्जर्वेशन की लर्निंग है, वो किस हिसाब से होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती ऑनलाइन लर्निंग। कृष्ण कुमार सर ने, हमारे जो एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर हैं, टीचर भी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल में, कि ऑनलाइन लर्निंग ना एक विशेषण है, संज्ञा नहीं, एडजेक्टिव है ये। तो ये भी एक चीज है कि इसको नाउन नहीं बनाना है, उसको किस तरह से देखना है। दूसरा, क्या हम ऑनलाइन लर्निंग में डिजिटल सोशलाइजेशन कर पाएंगे? मतलब अब एक जो नया कॉन्सेप्ट आया है, एक आया है वर्चुअल पर्सनैलिटी का, कि मैं जैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो जब से हरियाणा से आए तो अपने जो गीत रागनी सुनने का शौक था, तो वो यूट्यूब पे हुआ। पहले जब हमने आया था 2004 में तो नहीं था, तो मैं अपने बादुगढ़ वगैरह से जाके कैसेट वगैरह ला के देखता था, सुनता था। अपने मतलब लोकल जो म्यूजिक होता है वो ज्यादा जो बचपन से हमने सुना होता है, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, तो इस तरह की चीजें थी। तो अब उसको सुना, तो अब मैं जो ये सोच रहा हूँ कि डिजिटल सोशलाइजेशन पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, उसमें हमारी लोकल जो कल्चर है उसका भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो क्या डिजिटल सोशलाइजेशन में हम अपनी जो लोक अदब है या लोकल जो कल्चर है उसको ले पाएंगे या नहीं पाएंगे? अगर तो मान लीजिए मैं अपने बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, और ज्योग्राफी में बच्चे को गेहूं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जैसे हरियाणा के एक मोहम्मदपुर माजरा गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं बताऊंगा कि मेरे गांव में दोमट मिट्टी है, नदी है, पानी है, और यहाँ पर गेहूं कौन सी किस्म का हो सकता है, कौन सी किस्म का नहीं हो सकता, बच्चों को एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आप सोच सकते हो कि बच्चे अलग अलग तरह के होंगे। एक तो ऑनलाइन लर्निंग से जो मुझे जो दिक्कत जो महसूस हो रही है कि डिसेंट्रलाइज का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। एक बारी आपने ई कंटेंट बनाया, एक बारी एक चीज बनाई, वो फिक्स कर दी, आप उसको बच्चे के पूरे इन्वायरमेंट से, वातावरण से, उसके आसपास के माहौल से नहीं जोड़ सकते। और जब तक एजुकेशन बच्चे के आसपास के माहौल से नहीं जुड़ेगी तो बच्चा अजनबी रहेगा कि क्या कहाँ। मतलब मेरे गांव में एक मंदिर है बहुत पुराना, 300-400 साल पुराना। अगर मैं अपने गांव के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मंदिर के बारे में ना पढ़ाऊं, और दिल्ली के बिड़ला मंदिर के बारे में पढ़ा दूं, तो बच्चा मतलब दिल्ली के बिड़ला मंदिर के बारे में तो जानता है, मेरे गांव के मंदिर के बारे में नहीं जानता है। और दिल्ली बच्चा नगर निगम के बारे में जानता है, मेरी गांव के पंचायत के बारे में नहीं जानता। ये तो ये ऑनलाइन लर्निंग में बड़ी एक चीज रहेगी, डिजिटल सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन नहीं कर पाएगा वाकई में जो एजुकेशन करती है क्या नहीं करती। तो उसको हमें देखना पड़ेगा किस किस तरह से क्या चीज है। दूसरा, हमें पेरेंट्स पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, उनको किसी न किसी तरह से हमें मानसिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी चीज, डिजिटल एजुकेशन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मानना है ये कि कहीं ना माइंड की एजुकेशन है।
डिजिटल एजुकेशन कहीं ना कहीं जो गांधी जी का था, बुनियादी तालीम का फलसफा था, या जॉन डिवी का है, प्रेगमेटिज्म का है, या और भी बहुत सारे हैं, या नेचुरलिज्म है टैगोर का। हाथ और दिमाग की जो तालीम या शिक्षा कहें या एजुकेशन है, वो मुझे नहीं लगता कि एक साथ ऑनलाइन लर्निंग में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ऑनलाइन लर्निंग में कमियां हैं, लेकिन कमियों को नजरअंदाज करके या सोच के या इनमें कुछ सुधार करके अभी हालात पैंडेमिक के हिसाब से हमें इनमें लेके आना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। लेकिन इसको ना परमानेंट नहीं बनाना, बस मेरा एक ही मानना है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको, आपको एजुकेशन में चार प्री एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सारे कैटेगरी करके फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्री प्राइमरी एजुकेशन में आप क्या करेंगे। बच्चे को अगर मान लो हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लिखना बोलना पढ़ना सीखना, लैंग्वेज के 4 स्किल्स है, कैसे पढ़ाएंगे आप लिप रीडिंग। लेकिन मैं कहता हूँ लैंग्वेज टीचिंग के लोग सबसे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन वगैरह पे, बोलना पढ़ना लिखना पे डिजिटल यूज कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के साथ एक डायरेक्ट क्लासरूम में जो कांटेक्ट हो सकता है लैंग्वेज टीचिंग को लेके, मुझे नहीं लग सकता कि वो शायद डिजिटल में हो पाए। डिजिटल में भी जब मैंने बीएड किया था, हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एक टीचिंग एड की तरह इस्तेमाल करते थे। अब जो है, अब के जो हालात हैं, जो आए हैं, एक ये बिल्कुल एक मेन जो है रिसोर्स बन गया है एजुकेशन का। तो उस पर भी एक बारी हमें देखने की जरूरत है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि हैदराबाद में हमने बहुत काम किया इसमें, माइग्रेंट लेबर पे, प्रवासी बच्चों के जो मजदूरों के बच्चे हैं। तो जब मैं एमफिल कर रहा था दिल्ली में सीआई में, तो हमारे पास एक पीछे राजीव बस्ती थी। तो प्रोफेसर श्याम मेनन ने हमारे को प्रोजेक्ट कराया था कि कुछ बच्चे जो माइग्रेंट हो रहे हैं या जिनका विस्थापन हो गया है किसी तरह से, कुछ प्रॉब्लम से, या बस्ती उजड़ गई है, तो उन बच्चों की तालीम पे क्या इफेक्ट होता है, एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखना चाहिए। तो हमने काफी, यहाँ सोशियोलॉजी के टीचर हैं, तो हमने काफी मजदूरों से जाके बातें की। तो 2-3 तरह के मजदूर थे। एक तो दिहाड़ी मजदूर इस तरह के हैं जो अपनी फैमिली को लेकर माइग्रेंट नहीं हुए हैं सिटीज में, बॉम्बे में, दिल्ली में, या बड़े बड़े जो सिटीज हैं वहाँ पे। और एक तरह के उस तरह के मजदूर थे जो अपनी फैमिली को भी लेके आए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं या किसी घर की प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम बच्चे को भूल जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने अपने घर में भी मतलब अनुभव किया है कि प्रवासी बच्चे का जो मजदूर का बच्चा है, वो उसके साथ साथ उंगली पकड़ के जा रहा है। आप जरा सोचिए उसके दिल में क्या होगा। वो एक अपना स्कूल छोड़ के आया है, अपने यार दोस्तों को छोड़ के आया है। अब बॉम्बे में धारावी जो स्लम बस्ती, उसमें कितने बच्चों की टेक्स्ट बुक रह गई है। सब बच्चे लेटर लिख रहे हैं, हम एग्जाम कैसे देंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट शायद एग्जाम कैंसिल भी कर दिए कि हमारी टेक्स्ट बुक की सारी धारावी में रह गई, हम माइग्रेट कर गए हैं, हम चले गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का मुद्दा है आज के टाइम में कि जो ये लोग माइग्रेंट हो गए हैं, खासकर मजदूर। एक चीज मैं बताऊं, अभी के कोरोना के दौर में एक जो नया वर्ग उभर के आया है, वो आया है माइग्रेंट मजदूर। इससे पहले विजिबल नहीं थे, ये इनविजिबल थे, ये विजिबल हुए हैं। और इनके बच्चों की प्रॉब्लम को भी हमें देखना है कि डिजिटल एजुकेशन इनके साथ कर पाएगी न्याय। तो डिजिटल न्याय, डिजिटल जस्टिस, डिजिटल इक्वेलिटी, डिजिटल की समानता, ये बच्चों को हम दे पाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमें सोचना है। इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, माइग्रेंट के बच्चों को लेकर, गरीब बच्चों को लेकर, इन सब चीजों को लेकर देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है। जब माइग्रेंट मजदूर के घर में अगर प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो नेचुरल सी चीजें, घर का अगर माहौल खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो चिड़चिड़ होना, लड़ाई झगड़ा होना, अहिंसा होना, बच्चों के साथ भी मारपीट होना, ये बहुत एक सिचुएशन है। और कभी भी माता पिता या अभिभावक ये नहीं समझते, पेरेंट्स, कि भाई घर की अगर इकोनॉमिक कंडीशन खराब है ना, तो उसका बच्चे पर भी असर होगा। 5वीं 6ठी का बच्चा है, अगर घर की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते, तो उसको सोचते हैं अरे इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या समझ, उसको भी प्रॉब्लम होती है। वो भी समझता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरह से। ये भी कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमें लेके चलना चाहिए, देखना चाहिए, खास करके आज के टाइम में कि किस किस तरह से क्या चीज है। तो ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसको तोड़ के हमें कहीं ना कहीं एक अपने एनवायरनमेंट के पास में लेके आना होगा, जोड़ना होगा कि किस किस तरह से। दूसरी चीज, अगर हम स्कूल की बात करें कि स्कूल में क्या है, किस तरह का बच्चों को जोड़ा जा सकता है, ये तो देखिए 100% तय है कि कोरोना के काल में स्कूलों को बंद करना बेहद जरूरी है। और ये जब तक बीमारी दूर ना हो जाए, जब तक इसकी वैक्सीनेशन ना बन जाए, तो आप समझिए स्कूल बंद ही रहने चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 लड़कियों का फादर हूँ मैं, इस वजह से एक
टीचर की हैसियत से नहीं, एक माँ बाप की हैसियत से भी बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपने बच्चों के सिचुएशन में स्कूल में भेजेंगे। मैं कोई ये मतलब डिक्लेरेशन नहीं कर रहा हूँ, अपना थॉट बता रहा हूँ कि इस तरह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते कि बार बार जाके हाथ धोएंगे, या बच्चे बस में चढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अभी कुछ कह रहे हैं कि 30% बच्चों को बुलाएंगे और 30% को बाद में बुलाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजें नहीं, बच्चों को आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सिचुएशन ऐसी है, बहुत डर लगता है सोच के समझ के कि कैसे कैसे ये हालात है कि आपके मतलब पूरी फैमिली आपकी पकड़ में आ सकती है। तो बच्चों का आप ऑनलाइन ही एक जरिया है, उसमें हमें अगर मान लो कि ये 5-6 महीने और चलता है या साल चलता है, खुदा ना करे ऐसा हो कि ज्यादा टाइम चले, 2-3 महीने में हो जाए, तो हम टीचर्स को सोचकर बैठकर समझकर ऑनलाइन जो भी है ये सब चीजें सीख कर हमें अपने को तैयार करके उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को घर पर हम एजुकेशन टू डोर स्टेप्स हम बोलते थे डिस्टेंस एजुकेशन में पहले, फिर आया था एजुकेशन टू फिंगर, फिर एजुकेशन इन पॉकेट, ये इस तरह के स्लोगन बहुत सारे आए हैं। तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेस टू फेस मोड इस हालात में सही होंगे। हाँ, जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे को 1 मिनट ही कोरोना के बारे में जरूर बताएं, अवेयर करें। ये एक बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी क्लास लें, जब सबसे पहले आप कोरोना के बारे में 1 मिनट बताएं कि बच्चों को किस किस तरह से हाथ धोना है, क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, अपने घर को कैसे देखना है, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। हाँ, एक एग्जाम इतना जरूरी नहीं है, इस पर इतना ज्यादा जोर नहीं देकर कोई दूसरे तरीके अपनाए जाए, कि दूसरा कुछ ऐसा देखा जाए कि कौन कौन सा क्या चीजें हो सकती हैं। दूसरी एक टॉपिक और भी था इसमें कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो मेरे साथ अंजित जी बैठे हैं कि अंजित जी, मैंने भी एमए योगा किया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, और मैं अपने डीएलएड में पढ़ाता था, डीएलएड में पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ पर भी एक इस तरह का एक अजीब, मतलब टीचर में भी इनक्वलिटी होती है। मतलब ये होता था कि भाई डीएलएड में तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएंगे और बीएड एमएड में एसोसिएट पढ़ाएंगे। मतलब हमारे अंदर भी, टीचर्स के अंदर भी एक ना इनक्वलिटी होती है कि अच्छा डीएलएड में, मैंने कहा भाई ऐसे मैं है डीएलएड में पढ़ाऊंगा, तो मैंने क्लास लगवाई अपनी कि सर आप बीएड में पढ़ाए, नहीं मैं डीएड में लगाऊं। ये मैंने अपने सीआई से सीखा। हमारे बड़े बड़े टीचर हमें बीएड में पढ़ाते थे, कृष्ण कुमार, अनिल गोपाल, के जैन। तो वहाँ का माहौल था यह कि पहले बीएड के बच्चों को प्रिपेयर किया जाए, बड़ों को तो बात नहीं पढ़ा सकते। तो डीएड में मैं 3-4 साल से क्लास ले रहा हूँ योगा एजुकेशन की। तो पहले योगा एजुकेशन कैसे होता था हमारे यहाँ पे, बस प्रोजेक्ट बना लेते थे, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, कोई थियोरटिकल नहीं होता था, एक प्रोजेक्ट बनाने को देते थे और बस ऐसे ही समझते थे योगा एजुकेशन कुछ नहीं है, और बच्चों को एग्जाम दे देते थे, बस मार्क्स दे देते थे, क्योंकि इंटरनल आप लोगों को पता है। तो मैंने योगा एजुकेशन में प्रॉपर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा और उसकी ट्रेनिंग की हरिद्वार में जाके वर्कशॉप की, और बाद में और यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर भी सीखा। आज के टाइम में हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग बच्चों के मेंटल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, योगा एजुकेशन सबसे बेस्ट है। आप योगा घर में बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते। आपका घर अगर छोटा है, 2 रूम है, 3 रूम है, तो आपको बहुत बड़े कोई पब्लिक गार्डन की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो अष्टांग योगा की जो फिलॉसफी है, उसको बच्चों को पढ़ाने की बहुत जरूरी है। अष्टांग योगा की जो फिलॉसफी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो फलसफा है ना अष्टांग का, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत उम्दा है। अच्छा, मुझे योगा पे यकीन क्यों हुआ? यकीन इंसान को तभी होता है एजुकेशन का जब एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी मिसेज को ना थायराइड की प्रॉब्लम हुई कुछ, तो उन्होंने योगा की एक्सरसाइज की 3-4 कंटिन्यूस रेगुलर की, तो उनका थायराइड खत्म हो गया। 4 साल हो गए, खत्म हो गई योगा की एक्सरसाइज से। तो मुझे ना एकदम से मतलब बहुत वो लगा, और मैंने सोचा ना ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है भाई, इसमें काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए प्रॉपर। मैंने काम किया उसमें। तो आप ये यम नियम आसन वाला जो पढ़ेंगे ना, तो योगा के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी जो एक मतलब कंफ्यूजन है लोगों में, ये होता है कि योगा को ये समझते हैं कि यार ये 2-4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, यार मेरा कमर में दर्द ठीक नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं। कि जिस बीमारी को आपने पालने में 10 साल से आपने बीपी हुआ है, 10 साल में शुगर की प्रॉब्लम हुई है या थायराइड हुआ, तो आप ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एकदम से ठीक हो जाएगा जो बीमारी सालों से हुई है। तो योगा पे थोड़ा बिलीव करना, टाइम देना, एक्सरसाइज करना प्रॉपर, वो बहुत जरूरी है। तो योगा के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। बगैर ट्रेनिंग के योगा करना भी खतरनाक है।
एक सही बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग डीएड में जो बच्चों को योगा पढ़ाया ना, तो एक्चुअली में योगा पे ना जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं थी, तो मैंने इस तरह के कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं। एनसीईआरटी के साथ भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ कि योगा को कैसे पढ़ाया जाए। तो हम एक्चुअली जब योगा पढ़ाते हैं डीएड में क्या करते हैं, डीएड के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे आपको आसन करना है, ये प्राणायाम करना है, ये इस तरह से आपको दूसरी जो भी क्रियाएं हैं वो करनी है। लेकिन वाकई में जब हम योगा पढ़ाते हैं तो टीचर केवल एक ब्रिज है। हमें ध्यान रखना है कि जो स्कूल का बच्चा है प्राइमरी लेवल का, वो योगा कैसे पढ़े, उसके बच्चे को कैसे कैसे हम ठीक करेंगे। स्टूडेंट्स के हमें छोटे छोटे योगा सीखने चाहिए, बताने चाहिए। ताड़ासन है, सूर्य नमस्कार कितना बेहद मतलब एक चीज है। अगर कोई सूर्य नमस्कार सीख ले तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में उसको कुछ करने की जरूरत। एक्सरसाइज बहुत ही उम्दा चीज है। प्राणायाम, प्राणायाम जो है डिप्रेशन, आपका क्या कहिए कि चिड़चिड़ापन, आपकी मेंटल जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, उसको बहुत दूर करता है भाई। अगर घर में आपस में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े हैं, आपस में दुनिया में मन नहीं लग रहा, तो आप प्राणायाम कर लीजिए, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी दुनिया में। आप अनुलोम विलोम कीजिए, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिए कि किस किस तरह से होंगी, क्या होगी। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, सूर्य वेदी नमस्कार कीजिए, चंद्र वेदी ये जो प्राणायाम कीजिए। ये प्राणायाम अगर आप सीखेंगे ना, प्राणायाम मतलब एक्सटेंशन ऑफ आपकी ब्रीथिंग, आपका जो सांस लेने की पर उसमें कैसे कंट्रोल होगा। मैं अपने डीएड के स्टूडेंट को सबसे पहले ना यही चीज सिखाता हूँ कि आप सांस पे कंट्रोल कीजिए। उसके बाद आसन, आसन बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं कि थायराइड के 2-4 आसन ऐसे ऐसे बहुत बेहतरीन है जो काम करते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो बच्चों को आप ना योगा की एजुकेशन दीजिए थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं। अष्टांग फिलोसफी में पहले ना फिजिकल जो चीजें है ना, फिजिकल एजुकेशन नहीं दी जाती, सोशल एजुकेशन दी जाती है। यम में ना, जो यम हम जो पढ़ते हैं, यम में जो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सामाजिक नियम है, सोशल नॉर्म्स है। देखो कि योगा कितनी बड़ी चीज है कि ये आत्मा से परमात्मा का विलय है। और ये योगा पूरी ना एक जिंदगी जीने की प्रक्रिया का ये प्रोसेस है पूरा। ये केवल एक्सरसाइज करना नहीं है योगा। अगर यम को आप पढ़ लेंगे कि आप किस तरह से आपको अहिंसा नहीं करनी है मन वचन कर्म से, आपको हमेशा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपरिग्रह गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का काउंसिल है पूरा, कि आपको आवश्यकता से ज्यादा चीजें नहीं रखनी है, नियम। अब देखिए ये कोरोना से कैसे जुड़ेगा नियम योगा में। सबसे पहला जो शौच है, सफाई, मतलब योगा में आसन बाद में आता है, पहले यम नियम, और नियम में सबसे पहले सफाई की गई है कि आपको तन मन और कर्म तीनों से आपने अपने अंदर सफाई रखनी, सबसे पहले ये चीज बताई गई है। और उसके बाद संतोष, सेटिस्फेक्शन रखना। तप, तप मतलब आपको ना किसी चीज को ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगी, आपको थोड़ा सब्र रखना है, मेहनत करनी है ताकि आप उस चीज को अच्छी तरह से ले पाए। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, आपको अपने बारे में भी स्टडी करना है और अपने अच्छी किताबों को, लिटरेचर को पढ़ना है। ईश्वर प्रणिधान की सब कुछ आप गॉड को मान लें कि ईश्वर को समर्पित कर दें, ईश्वर। तो ये बहुत है। अष्टांग अगर पढ़ेंगे, आसन, आसन में अगर अभी टाइम तो है नहीं, कभी होगा तो बात की जा सकती है। अंशित जी फिजिकल एजुकेशन ज्यादा, आसन करके आप किस किस तरह से कर सकते हैं। ये आसन क्या, जब तक इंसान की अगर बॉडी मजबूत नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप मानिए कि क्लासरूम में टीचिंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ होगी तभी हम अपनी जिंदगी के जो उद्देश्य है उनको हासिल कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान, समाधि, धारणा, मेडिटेशन की जो चीजें हैं वो बहुत सारी काम आ सकते हैं। तो काफी चीजें मैंने बताई हैं, बात की है, अपने एक्सपीरियंस से बात की है मैंने। कोई एक टीचर एजुकेटर की तरह या उस तरह की बात नहीं की, जो मेरी अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मैंने उसको लेकर बात की है। तो 5 चीजें, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, करिकुलम बदलना चाहिए, एज पर ऑनलाइन टीचिंग करिकुलम होना चाहिए, पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ा चेंज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, शायद वो आप लोग भी जानते होंगे, एजुकेशन फिलॉसफी में भी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की फिलॉसफी डालनी पड़ेगी हमें, कि एजुकेशन फिलॉसफी अब कैसे पढ़ाएं। एजुकेशन साइकोलॉजी को भी चेंज करना पड़ेगा कि अब बंडूरा की जो थ्योरी है, अल्बर्ट बंडूरा की, और वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, अब ये हम पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन लर्निंग में क्या पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में हम क्या करते थे कि एडल्ट साइकोलॉजी यूज करते थे, एडल्ट साइकोलॉजी।
कि उसके पास पहले से तजुर्बा है किसी चीज का और उसके हिसाब से हम पढ़ाते थे। तो अब हमें ये देखना होगा कि ऑनलाइन लर्निंग में पूरा कंटेंट हमें एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पीस एजुकेशन कैसे देंगे आप ऑनलाइन लर्निंग में, सोशल मीडिया कैसे यूज करेंगे, पेडागोजी खासकर हिंदी टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग है, साइंस टीचिंग, मैथमेटिक्स टीचिंग, इन सबके करिकुलम को हमें एक बार दोबारा से फ्रेमवर्क में लाना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। और योगा एजुकेशन तो मैं उसका हर जगह कह रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत काम करता हूँ, तो उसको पे काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से काम हो हमें अपने हिसाब से जिसको भी जो सजेशन मिलते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए। थैंक यू बबीता मैडम और एचओडी सर, क्या नाम है, अमित जी का और पूरी टीम का, हरमित मैडम का, और खासकर जो मेरे इसमें साथी थे संदीप जी का, अंचित जी का, और मेरे पैनल में हर्षिता और एक इससे पहले भी कंचन, इन्होंने जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, सबका बहुत ही अच्छा था। और मेवाड़ इंस्टीट्यूशन का नाम सुना है मैंने काफ़ी, दिल्ली में के आसपास एरिया में, तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने इतने सरल शब्दों में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली अपने टॉपिक को सबके सामने रखा, एंड द एक्सपीरियंसेस यू शेयर, जो एग्जांपल्स आपने दिए, दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल। कि जैसे अगर हमें गेहूं की खेती के बारे में बताना है तो हम बच्चों को ऑनलाइन कैसे बताएंगे या किस तरह से उसको सिखाएंगे, तो दे हैव टू बी लाइक सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो ऑनलाइन लर्निंग में हमें नहीं मिलता। अभी हम ये फेस कर रहे हैं कि वी आर जस्ट डिसेमिनेटिंग द नॉलेज टू आवर चिल्ड्रन, बट वी आर नॉट गिविंग देम प्रैक्टिकल एक्सपोजर। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की। आई थिंक मैं अभी मिस्टर अचिंत सर को इनवाइट करती हूँ और उसके बाद वैलिडिक्टरी सेशन में again we will discuss some things. So Mr. Achint, I invite you to give your insight also into this topic, stress management. Mr. Achint. Thank you very much, ma'am. First of all, I would like to thank to all the members of organizing committee. I am very much thankful to you, Chairman and General Secretary and Director of the MEBAR Global Institutions. And I would like to thank Mr. Amit Kumar, HOD of Department of Education. My hearty thankful to Dr. Babita Singh ma'am, who gave me this opportunity. And I am thankful to you, Dr. Harmeet Kaur, who she is an organizer on this e-conference. And I am very much thankful to you all, the team members and the students, coordinators, and those who are present their efforts in this e-conference. So, this is my proud privilege to inviting me the Mewar Institute to me and present my topic on the topic of the stress management and in the national e-conference on COVID-19 impact on the education of India. My topic is the stress. So first of all, I would like to say that we all are the very luckiest person who are attending this e-conference, because so many people are they live their lives due to this COVID pandemic. Thanks to Almighty God who gave us this happy and wonderful life. So, dear friends, we all are in unlock period 1, but still we all are, especially we are educationists and students in a lockdown number 5. So now, but we teachers and educators is also in a still lockdown period. So this unlock period not for us, because we are in a lockdown period still. So anyway, during this situation, we all are locked in our homes, especially our student with having lots of tension, lots of negativity and stress, worried about the future, what are after this post COVID. Today I am taking the topic on the stress. It's how to manage this topic. The question is this, that are we live our life without stress? That is the one question. The next is there no stress in our life? Any work outside
our capacity give us stress or tension. That is there. So sometimes in today's scenario, we are this stress staying in our house. So a lot of people are the being victim of the domestic violence. जैसे हमारे शनि सर ने कहा कि घरेलू हिंसा ये बहुत इम्प्रूव हो गई है इस समय बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है तो just because of stress. Some people are there, lost their lives and jobs and businesses. So many things are we are facing. So now I would like to share my PPT with you. Is it visible, ma'am? Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay. So now I'm talking about the stress. The stress is our body response to change in our life because life involves context changes. There is no avoiding stress. This is why our goal shouldn't be to eliminate all the stress, but to eliminate the unnecessary stress on effectively manage the rest. There are some common causes of stress that many people experience, but each person is different. And now we can say that in a medical or biological context, the stress is a physical, mental, or emotional factor that cause bodily or mentally tension. Stress can be external or internal. External means from the it can from that is from the environmental stress and psychological or social situations. Internal means illness or from the medical procedure. So according to WHO, World Health Organization, ये क्या कहता है कि the stress it is not a disease. वो उसको disease नहीं मानते, उसको disease नहीं कहते. Secondly, other reaction people may have been presented with demands. The pressure that are not matched to their knowledge and ability and which challenges their ability to cope. So we all experience stress in our lives because the vast majority of health problems are causes to influence by the stress. It's important to understand how stress affects our body and learn effective stress management techniques to make stress work for us rather than against us. Now here is the types of the stress: the positive stress or negative stress. Positive stress, we can say, okay, the positive stress may include an upcoming means weddings, holidays, or pregnancy, we are having a child. कह सकते हैं हम इसको कि जो हमारे पॉजिटिव स्ट्रेस है वो हमारे लिए खुशियां लेके आते हैं, एक अच्छी चीजें लेके आते हैं. अच्छी चीजों के साथ भी हमको स्ट्रेस होता है, हमको ये तनाव में रहते हैं. But it is good for us. Now negative stress means okay, we are in suppose divorce is not a good thing. It is raised by the negativity in the stress. So we can say then so many things are for in negatives. Now the types of stress is the frustration, conflicts, and changes in pressure. The frustration means गुस्सा, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा. Means the frustration is the feeling that something is missing out of life. Therefore, there is always
dissatisfaction and disappointment with one's condition or circumstances in life. Example, our work is not according to me, frustrated. As I am in belongs to physical education, I should say in the cricket game, अगर मुझे एक मैच में रन की आवश्यकता है तो मैं वो रन्स बना रहा हूँ, एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ और वो मुझे रन्स नहीं मिल रहे, और आई एम ए बॉलर, मुझे उन रन को रोकना है और मुझे वो रन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. दिस फ्रस्ट्रेशन के साथ और ड्यूरिंग द गेम मैं फ्रस्ट्रेटेड होके और अपने गेम से दूर हट जा रहा हूँ और अपना गेम छोड़ दे रहा हूँ. सो दिस इज द फ्रस्ट्रेशन. जो काम हम करना चाहते हैं वो हम मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, या जो हम देखना चाहते हैं वैसा हम नहीं देख पा रहे हैं, या जो हम अपने स्टूडेंट को सिखाना बताना चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है. फ्रस्ट्रेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स इनसे इन हिंदी संघर्ष किससे. नाउ वी आर इन दिस पैंडेमिक पीरियड, we all are in conflicts period, we can say. जब इन पीरियड में हम चल रहे हैं और हमारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम देख रहे हैं, so many migrators we can see through the news channels, they are fighting their self. वो अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं. There are 4 types of conflicts. The conflicts with self, the conflicts with others, and with environment, and supernatural powers also. So there are so many types of the conflicts. So it's also types of the stress. Now changes, I am talking about the changes. Changes also we can say the 2 types of changes we can say, positive or negative changes. चेंज हम चाहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए. मैं चाहता हूं कि मेरा प्रमोशन हो, मेरा चेंज हो, बट आई डोंट वांट टू वर्क मोर. मैं और ज्यादा काम को नहीं चाहता. चेंजेस तो चाहता हूं लेकिन मैं काम करना नहीं चाहता. मुझे प्रमोशन तो मिले लेकिन मुझे उसमें ज्यादा काम नहीं करना. ट्रांसफरेबल जॉब हम उसमें देखते हैं, हमारी जो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं उसमें हम चेंज तो चाहते हैं. प्रमोशन तो होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है, बड़े बड़े IAS PCS का ट्रांसफर होता है, चेंज होता है, लेकिन लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, वो चेंजेस हमें स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरा पूरा सेटअप मेरा एक शहर में है और मैं वहां से लेके पूरे अपने फैमिली को, हाउ इट इज पॉसिबल टू चेंज एवरी टाइम. बट दे आर कंडीशनड, वो कंडीशन हो जाती है उस बात के लिए कि जब उनको चेंज करना है, जब उनको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं. But so many people are having stress. What this changes? Now coming to the pressure, a state of mental tension and worry caused by the problem in this our life, work, etc. Something that the causes of a strong feeling of the worried or anxiety. So many pressure. Work pressure, job pressure. This time we are having so many pressure. After COVID, हम कहाँ होंगे? During तो हम उसको बेयर कर ही रहे हैं. इसके बाद हम कहाँ होंगे? इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा? तो बहुत सारे स्पीकर्स ने अभी बोला, अभी बताया, प्रेजेंटर्स ने भी बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया. स्ट्रेस के ऊपर भी बोला गया, बताया क्या होगा उसके बाद. We don't know. We have lots of pressure, but हमको इन सिचुएशन से निकलना है. Now, stress mode. We are talking about the stress mode, acute and chronic. There are 2 types of mode of acute and chronic. So, chronic is short-term effect include tension, headache, and the stomach upset, as well as the moderate amount of distress.
This is the short-term effects, including tension, headache, and the stomach ache upset. This is the acute stress, we can say. Acute stress के द्वारा हम कुछ छोटी सी टेंशन्स को या छोटे एक हेडेक को या स्टमक एक को जो टाइमली होता है, शॉर्ट टर्म होता है, इसको हम कर सकते हैं. बट नेक्स्ट इज chronic stress, ongoing poverty and dysfunctional family or unhappy married life. This is also important. जैसे अभी डॉक्टर अश्वनी ने बताया कि जब घर के अंदर हम लोग इस समय हैं, सब लोग हैं, और उस समय घरेलू हिंसा का जो बहुत ज्यादा जो हो गया है, हम देख रहे हैं कि डाइफंक्शनल फैमिलीज हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, सब चीजें प्रॉब्लम हमारे सामने हम फेस कर रहे हैं. दिस इज द chronic situations हमारे सामने हमको फेस करने को रहता है. बिल्कुल. Now, the consequences of chronic stress. The people with chronic stress are at risk of having the final breakdown that can lead to suicide, violent action, and heart attack or a stroke. Chronic stress consequences to very very dangerous. बहुत डराने वाले consequences है chronic stress के. When we are in stress, in chronic stress, I am talking to the society. सुशांत सिंह राजपूत, अभी हम न्यूज में देख रहे थे, इज अ बोल लीजिए वेल सेटल्ड पर्सन, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, हैंडसम. बट उसको क्या था, क्या प्रॉब्लम उसको थी जो उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? कोई रास्ता ही नहीं बचा था क्या? बिल्कुल क्रोनिक स्ट्रेस, एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया उसका स्ट्रेस. कोई रास्ता नहीं, कोई साथी नहीं, कोई उसको बचाने वाला, संभालने वाला नहीं. स्ट्रेस, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि हम अपनी लाइफ को खत्म करते हैं. हमारे हाथ में पैर में जरा सा भी चोट लग जाती है या हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कितनी जल्दी डॉक्टर को करते हैं, या हमको फर्स्ट एड लेते हैं, या बहुत सारी चीजें लेते हैं. लेकिन हमें देखें इतना एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हो गए और इतना क्रोनिक स्ट्रेस हो गया कि हमने इतना डिसाइड कर लिया कि हम सुसाइड कर लें, अपनी लाइफ को खत्म कर लें. वेरी डेंजरस. नाउ, external causes of stress. Lot of work. Sometimes we have lot of work in our working place or other place, other work. हर समय हमको इतना सारा जो काम मिलता है उसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं. The financial conditions, the very important thing. Financial conditions we are facing nowadays. बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बिजनेस चला गया. Let's see the migrators who were moving on the road. They are trying to reaching their home safely, but they don't have any money, any financial support. This is the condition. This is a very external cause of the stress. The financial condition, very important. Some employers are saying that no work, no salary. How can possible? Bread butter का तो इंतजाम करना है ना. But employer also not responsible for that, because जैसे कि हम स्कूल के लिए हम बात करते हैं. Financial condition. Some parents are saying no class, no teaching, no fees. Teachers, as we are all the teachers, हमारा bread butter का कैसे हो? Anyway, this is the main cause of stress. Now busy with different type of tasks, unnecessary tasks, busy every time. This is also the cause of stress. Relationship. Our relationship is not up to the mark if with my father, my mother, sister, or other relatives.
मैं तो उनको बहुत अच्छे से रखता हूँ, लेकिन वो मेरी किसी बात का बॉदर नहीं करते। फीलिंग एक इमोशनली टच है, वो फीलिंग आ जाती। वी आर फेसिंग द स्ट्रेस, the family problems, so many family problems nowadays in this pandemic, because so many families facing the many types of problems in their home. This is also cause of the stress. The major life changes, इससे बड़ा चेंज तो कभी नहीं हुआ होगा लाइफ में किसी की भी, कि जो इस समय इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हो रहा है। मेजर लाइफ चेंजेस, बड़ी बड़ी लाइफ चेंज होगी। जैसे हम बात करते हैं हमने एजुकेशन की, कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सब ऑनलाइन आ जाएंगे। हम सब जो कहते थे कि बच्चों से कि क्लास के अंदर मोबाइल स्विच ऑफ करिए, वो बच्चे आज कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि मोबाइल स्विच ऑफ करिए क्लास के लिए, आज क्लास ही मोबाइल के अंदर आ गई। और आज आप ही कहेंगे हमसे कि स्विच ऑन योर मोबाइल। मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, currently go through it and do the accordingly. This is the major life changes. Settlement of children. As a father, I am worried about my daughter. उसके सेटलमेंट के लिए मुझे चिंता है। I am live my life in 50%, but मेरे बच्चे के आगे पूरी लाइफ पड़ी है। Now job security. जॉब्स ही नहीं है तो सिक्योरिटी कहां से आई? लेकिन हम वरीड हैं, इसलिए स्ट्रेस में है। जॉब अगर है तो उसकी सिक्योरिटी क्या है? एम्प्लॉयर हमको तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा? Now come to the internal causes of stress. The chronic worries, वही जैसा भी हमने बात करी पहले, इंटरनल चीजें की बात करते हैं। कुछ ऐसी वरीज हैं, ऐसी कुछ चिंताएं हैं जो बहुत एक्सट्रीम है, सब रिलेट करती हैं हमारे उन सब चीजों से। इंटरनल है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हम जब कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अंदर इंटरनल जो नेगेटिव, हम अपने आप से बात करने लगते हैं। कभी कभी हम देखते हैं अपने आप से बात कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हम अपने कहीं किन्हीं रिलेटिव्स के बीच में होते हैं, किसी भी लोग के बीच में होते हैं, वो कहते हैं ही इज अ मेंटल, अपने से बातें करता है, ये पागल है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, वैसी वैसे हम उम्मीद करते हैं, वैसे एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं। But it is also the internal stress. Rigid thinking and lack of flexibility, the both are the same things, but little bit in change in between, difference between both the rigid and the flexibility. Rigid, one of the example of I'm taking from the Three Idiots film. Dean and students, the talk between स्टूडेंट जो उसमें नायक था, जो था वो प्रोजेक्ट बना के अपने डीन को शो कर रहा है। डीन कहता है उससे कि नहीं, वो रिजिड है। वो नहीं कहता नहीं, आपको टाइम से इसको करना है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। स्टूडेंट हैविंग द वन रीजन, दिस इज अ बिग रीजन, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। वो कह रहा है फादर एक्सपायर हो गए थे मेरे, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। बट स्टिल डीन ऑफ द कॉलेज रिजिड, तो स्टूडेंट डिसाइडेड टू सुसाइड इन दिस फिल्म। वो एक पिक्चर है, बट रियलिटी इज दिस। नाउ बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट, हम अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं, नहीं हो पाते, और हर काम को अच्छे से करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते अपने काम से, उधर होता है ऑल और नॉट एटीट्यूड। इसको हम देखते हैं। नाउ कम टू द अचिन सर, आपकी पीपीटी शो नहीं हो पा रही है अचिन सर। ओके मैम। हेलो अचिन सर। यस मैम, पीपीटी नहीं आ रही। आपकी पीपीटी शो नहीं हो पा रही है। हाँ, पीपीटी शो नहीं हो रही है सर। एक मिनट मैम, अभी आई।
आगे मैडम। Yes, sir. Okay. आ गई है sir. Yes, visible. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Now come to the effects of stress. Our body are well equipped to handle stress in small doses. But when the stress become long-term or chronic, it can have serious effect on our body. The four level of our body, the stress effect, the physical, mental, emotional, and spiritual. The four things. Now I'm talking to the physical effect or stress of stress. We are having the so many types of problems: headache, sleepiness, muscular soreness, shaky hand and stomach ache, and rapid breathing. This is the some problems we having when we are having the stress. And weaker immunity system, the panic attack, and also having the menstrual problems in ladies. Low and high blood pressure, ऐसा pressure, blood pressure, the physically stress इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। ये सब सारे इफेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी पे डायरेक्टली आते हैं when we are in stress. The repeated respiratory and tract infection cloud, infection हमारे breathing system पे पड़ता है. This is also hair loss, chest pain, skin rashes, weak immunity system, obesity and diet related problems. Some kind of cancer also. कहते कैंसर कैसे हो गया, मैं तो सही था, मैं बिल्कुल ठीक था, और मेरे को इतना टेंशन है कि मेरे को स्ट्रेस इतना हो गया कि मेरे को कैंसर हो गया. एंड प्रीमेच्योर डेथ. अभी हम पिछली बार हम बात कर रहे थे अपने सुसाइड के लिए, हम स्ट्रेस में हम सुसाइड डिसाइड कर लेते हैं खुद से, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम प्रीमेच्योर डेथ हमारी हो जाती है. हम स्ट्रेस में हैं, सब कुछ है, हम मरना नहीं चाहते, हम अपनी लाइफ को खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में एक ऐसा पल आता है कि हम उससे इतने ज्यादा स्ट्रेस के साथ इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इतने ज्यादा वो हमारे बॉडी के अंदर इतने मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा वो चीजें इफेक्ट कर जाती हैं जिससे कि हम प्रीमेच्योर डेथ तक हमारी हो जाती है. This is the physical effect of stress. Emotional effect of stress. इसकी बात करते हैं. A sense of being overwhelmed, overall irritability, the emotional insecurity, nervousness, the emotional effect डालती है हमारे पर stress. Moodiness, lack of enthusiasm, forgetfulness, the short tempered. ये जो कुछ टर्म्स हैं ये हमारे वो इमोशनल इफेक्ट डालते हैं हमारे ऊपर, हमारे स्ट्रेस ऑफ. नाउ साइकोलॉजिकल response of stress, daily life stress without from the social life, and the panic attacks the psychology part of the stress. Now how to manage to our stress? Stress management. Stress can be efficiently managed in the many different ways. The best stress management plans usually include a mix of the stress relevant that address the stress physically and psychologically, help to develop reliance and coping skills. Number one, diet. Eat healthy meal at regular time. This is a solution of the stress. अगर हम स्ट्रेस में हैं तो कुछ चीजें हमको करनी है जो जिससे हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए. हमें ऐसे फूड इनटेक करने चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो. जंक फूड तो वैसे अब ऑलमोस्ट बंद ही है, लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं कोई रेस्टोरेंट्स वो जंक फूड्स, तो वी शुड अवॉइड दैट टाइप ऑफ फूड्स.
we eat the healthy foods, like some grains and some juices from the fruits we can intake. It is also important for our health and stress. जब हम हेल्दी रहेंगे तो हम हर चीज़ों से दूर रहेंगे। जो अभी हमने बात करी, जो हमारी बॉडी में इफेक्ट्स आते हैं, जिसके बहुत सारे इफेक्ट्स की बात हमने अभी करी, तो वो सारे इफेक्ट जो है ये सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर। हम स्ट्रेस में होंगे और खाना पीना भी नहीं खाएंगे और अच्छे से हेल्दी फूड नहीं लेंगे, तब भी हम स्ट्रेस में चले जाएंगे। तब वहां पे वाली बात आती है कि प्री मेच्योर डेथ। बॉडी हमारी हर तरीके से वर्क करती है और हमको हर तरीके से संभालती है। नाउ रेस्ट, गेटिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप ईच नाइट। बहुत से लोगों की आदत है कि वो लास्ट पूरी रात जगते रहते हैं, बहुत देर में सोते हैं। बच्चों की हम आदत देखते हैं, रात रात तक वो अपना मोबाइल से खेलते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप पे अपना खेलते हैं या जो भी है। ये तो नेगेटिव बात में बात कर, लेकिन पॉजिटिवली बात करें कि अगर मेरे पास बहुत सारा काम है तो मुझे रात में बैठ के करना है, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतना ज्यादा जॉब के काम मिले हुए हैं। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि रेस्ट, गेटिंग द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप ईच नाइट। बहुत अच्छे से सोना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर हम स्लीप नहीं लेंगे, अगर नहीं होंगे, अच्छे से नहीं सोएंगे, तो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। जिस स्ट्रेस से हम निकलना चाहते हैं उसे निकलने में प्रॉब्लम होगी। इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल नेटवर्क स्ट्रेस से निकलने के लिए बहुत जरूरी है और आवश्यक है कि हम सोशल नेटवर्किंग को बना के रखें। हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं? ताकि हम उनसे अपने मन की बात कह सकें, दिल की बात कह सकें। और कहते हैं उनसे अपने दिल की बात, मन की बात, तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हम उनसे कहते हैं अपने मन की बात तो हमारा जी हल्का हो जाता है, ऐसा हम फील करते हैं। अगर मैं स्ट्रेस में हूं और अपने आप को किसी कमरे में बंद करके रखता हूं और किसी से मिलता जुलता नहीं हूं, बातचीत नहीं करता हूं और अपने अंदर की प्रॉब्लम को शेयर नहीं करता हूं, वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि किसी के व्यूज के द्वारा, किसी की सलाह के द्वारा मैं अपने जीवन में उन चीजों को यूज करके अपना के और उनको दूर कर सकूं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन आवर लाइफ। सोशल नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में कहा कि जो हमारा जो स्लीपनेस है, जो का टाइम है, उसको भी इसी मैनेज करना। हर चीज का टाइम रखना है। सुबह मुझे किस समय उठना है, किस समय मुझे अपने अदर्स काम करने हैं, मुझे किस समय ब्रेकफास्ट करना है, किस समय मुझे अपने जॉब पे जाना है, जॉब के काम करने हैं, और कब मुझे लंच लेना है, किसे कर रहा है, किस समय पे क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट होगा, हम हर चीज करेंगे। हम अपने लिए एक वी कैन मेक वन डायरी and note it down all the schedule of the day. We can use time management is also important thing to reduce the stress in our life. Now, some physical activities or exercises we can do in pandemic period, in lockdown period. जैसा कि मैंने कहा कि this is the lockdown period, unlocked down period 1, but we, our children, our student, we are educators and teachers still in lockdown 5. हम घर से बाहर नहीं जा सकते, क्या करें? स्ट्रेस में है, बच्चे कह रहे हैं एक ही शेड्यूल है लाइफ का, क्या करें? तो उनको हम यूज कर सकते हैं, उनसे उनको कहीं ना कहीं सजेशन दे सकते हैं। वर्क इन बैकयार्ड और एट होम गार्डन, टाइम स्पेंड करने के लिए हम इंस्पायर कर सकते हैं। इससे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारे होने लगी हुई। नाउ, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, हम अपने बच्चों को कुछ एक्सरसाइज करना बता सकते हैं। हम इन फ्री हैंड एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने बच्चों को फिट रहना बता सकते हैं। बिकॉज वी आर स्टिल इन लॉकडाउन में है, तो फिर हमको इन सब चीजों को हम बाहर नहीं जा सकते, बेशक अनलॉक्ड है। नाउ, सम एक्सरसाइज विद योर ओन वेट, कुछ एक्सरसाइज को हम अपने वेट के द्वारा कर सकते हैं। इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, करते हैं। हम अपने कर सकते हैं, टेरिस पे कर सकते हैं, अपने बैकयार्ड में कर सकते हैं, या अगर छोटा सा गार्डन हमारे पास उसमें कर सकते हैं। हम कहीं भी एक एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, और जो इन सब चीजों जब हम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस दूर होता है। इन द हाउस, एरोबिक एक्सरसाइजेस,
or some other types of exercises, Zumba exercises, aerobics, म्यूजिक लगा के हम अपने घर के अंदर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर के अंदर. This is also help in reduce the stress in our life. Now डांस एंड म्यूजिक बहुत 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 अच्छे से बच्चे इसको एंजॉय करते हैं. डांस म्यूजिक अपना लगा के अपना डांस करेंगे, अपना म्यूजिक सुनेंगे बहुत अच्छे से, तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे. म्यूजिक जो है वो हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है किसी भी स्ट्रेस को दूर करने के लिए. डांस जो है वो हमारे को फिजिकली फिट रखता है. जब हम फिजिकली फिट रहते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छे से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब मूव होने लगता है और हमारी बॉडी जब परफॉर्म करने लगती है, और जब हम हमारे अंदर जब इस तरीके से ऑक्सीजन जब बहुत अच्छे से अंदर बॉडी में जाती है, बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स और हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है वो सब प्रॉपरली वर्क करते हैं. तो जब ये सब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, तो हम कितने भी स्ट्रेस में होंगे तो हमको इन चीजों से निकलने का काम मिलेगा. हमारा माइंड डाइवर्ट होगा. माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब चीजें हमें करना बहुत जरूरी है अपने घर के अंदर. इंपॉर्टेंट चीज अभी जैसे हमारे सर ने, जो अश्विनी सर ने भी बताया था योगा के बारे में. योगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. हम कर सकते हैं योगा एक्सरसाइज के ऊपर. हम देख सकते हैं कि yoga as a stress remedy also. Yoga as a form the mind body practice has become the increasing the wide spreading therapy used to maintaining the wellness and improve a range of healthy problems and illness. Yoga is a discipline for the integrating the mind and body union. The harmony when adopted as a way of life, yoga improves physical, mental, and intellectual and spiritual health also. Yoga offered the effective method of reducing stress, anxiety, and depression, and numbers studies demonstrate the efficiency of yoga on mood relaxed the disorder. जितना भी हमारा मूड डिसऑर्डर, मूड रिलैक्स डिसऑर्डर, उसको दूर करने के लिए हेल्प करता है योगा. The currently therapy is the anxiety and depression involves the mostly psychological and paramedical logical however the main body. So we can use the some yoga asanas. हमारे सर ने पूरा बताया, अष्टांग के बारे में सर ने पूरा बताया. काफी सारा पोर्शन हमने कवर किया उसमें योगा को लेके, जो अष्टांग को हमें कैसे करना है. आसन से पहले हमको अपनी साफ सफाई करनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से. यम और नियम के बारे में सर ने बताया. पहले यम नियम करते हैं, उसके बाद हम आसन पे आते हैं. तो ये कुछ आसन है, हम इनको कर सकते हैं अपने घर के अंदर जो इजी हमारे वे हैं. ताड़ासन हम इसमें देख लीजिए, स्टैंडिंग पोजिशन में आसन है. वृक्षासन है, त्रिकोणासन है, उष्ट्रासन है. ये सब आसन हम अपने घर के अंदर अपने बच्चों को करा सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें. Now next some asana are there. बालासन, वेरी इजी आसन, नॉट डिफिकल्ट आसन. अगर आप कोई बच्चों को डिफिकल्टीज वाली चीजें दोगे तो वो नहीं करेंगे. नॉट ओनली द बच्चों को, हम बड़ों को भी इन सब चीजों को करना चाहिए. इन चीजों से हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. Now come to the प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, so many things in pranayam. The pranayam with the distress energy level breathing exercises are in yoga as they help to the managing stress. The show rather the breathing patterns with the healing and exiting techniques helps to oxygen to dissolve through the organs and does make you feel relaxed. Pranayam such anulom vilom as you see what's on the screen help in overcoming the stress. Breathing power, and pranayam helps in also connecting union of mind, body and soul also. हमारे माइंड, बॉडी और सोल को ये पूरा यूनियन कर देता है. imbalance of the mind, body and soul creates health issue, and the unwanted mental stress. Practice unite these three factors are relieve people from stress. Very important thing. Now next, meditation.
This is also important thing. Meditation. The lack of concentration. People dealing with the stress tend to forget things as they might to worried or disturb about something. And yoga practice like pratak and the various kind of meditation helps in relaxing the body by overcoming stress and bring the improved connection inner healing. People under stress fail to the react to the situation with a claim and the composed mind and often tend to the breakdown. पद्मासन लगा के पद्मासन लगा के हम इसमें कर सकते हैं. Meditation also important thing. Now come to the conclusion. It may not be able to completely eliminate the stress from our life or even the biggest stress, but there are some areas where we can minimize and get it to manageable level. Any stress that we can cut or minimize or overall stress load. The element of yoga in stress management, choice yours, either you take pills or herbs for stress, reduction or the introduce yoga to reduce the stress in our life. So this is my presentation and on the stress, and thank you very much. Thank you so much, sir. It's very good presentation by you. And Thank you, Achal sir. There is one more presenter. There is one more presenter waiting for us. So I think I will invite her, and after that, in the discussion, we will discuss again, sir. So thank you so much, Kanchan Sharma. हाँ बेटा, you can start your presentation. And please don't mind Kanchan, make it very short. Okay? बहुत जल्दी से इसको finish करना बेटा. Okay, start. You have PPT? Yes, ma'am. Okay. Here you go. भाई जैसे टीवी देखना तो आ जाओ बैठ के देखना. Yes, it is visible, Kanchan. Kanchan, it is visible. My screen visible? Huh. Okay, thank you, ma'am. Okay, you start. Good afternoon, and welcome to guests. Thank you for coming today. My name is Kanchan Sharma from Dealer Department. I'm looking forward to share my views on stress management. So, first of all, I'm going to tell you about what is stress. Stress is a pain which comes to tell me there is something I need to change. Stress is our creation of wrong thought which has an effect in our efficiency, memory power, decision power, and hence our performance. Isn't it? So stress is just an inability to manage the inner situation, not the outer situation. Our first responsibility in any situation is to first take charge of our state of mind, because that is the only thing which is in our control. So now I'm going to tell you about what is the impact of stress. Stress has an impact on our physical and emotional well-being, and hence any amount of stress is damaging. Target, pressure, deadline, exam are natural, but stress is our choice. If you think ever, when you are joyful, you are willing to take up any number of things and do it. When you are stressed, you don't want to do even the simplest thing. So first and foremost, we need to work to our human being peaceful and joyful. Now, moving towards that is how we manage our stress. Okay, so it is very ambiguous how we manage our stress. If we talk about
stress management, I mean the word manage. I think the word manage means I think we manage the things which are precious to us, like our business, family, money, wealth, children. So tell me, how would anyone manage stress? Actually, the vibration around the world have turned negative with the escalating coronavirus pandemic. The people are stressed and there is a way of panic among them with the alarming rate of COVID-19 cases. Feeling stress is normal. So one need to control the mind and send positive energy to the surrounding. Our mind should not depend on what is happening outside, but should deal with what is inside. If a person is able to control his mind, he can fight any battle. But one more thing, that is, that every person responds to a situation different. It is also true. Like I want to give an example. Uh, on a certain day, three men were working in one place. Another man came by and asked the first man, "What are you doing here?" The man looked up and said, "Are you blind? Can't you see? I'm cutting the stone." This person moved to the next person and asked, "What are you doing here?" That man looked up and said, "Something to fill my belly, so I come here and do whatever they asked me to do. I just have to fill my belly. That's all." He went to the third person and asked, "What are you doing here?" That man stood up in great joy and said, "I am building a beautiful temple here." Now, all of them were doing the same thing, but their experience of what they are doing was different apart because of the context which they give their mind. Is possible and also not in our hands, because what is happening today is our deed what we did in the past. So changing the context is something that can we do. So it is our moral responsibility to take care of our mind in order not to create problem for others and also take care of the people around us. This make the life worth living and give strength to fight every situation. Now, moving to the next slide. Actually, the virus does not want to kill us. This virus want to live in our body because we have wonderful habitat for it. So, some human beings come and many become immune. So it is better we should strengthen ourselves. We have a most superior machine in the form of human mind. We can go through this tough time joyfully if you make up your mind. Motivate yourself to wake up early at a regular time and do Surya Namaskar, pranayam or meditation. Use this precious time to explore your talent. Do not remain idle, as it allows the mind to fester and sink into a negative thinking. As long as you keep yourself occupied and invest in your own growth, self-development, you will be okay. Now I'm going to winding up my presentation by saying a few lines. The first and foremost thing we need to work at is to make human being peaceful and joyful. This will invariably happen if you do the right type of yoga. Thank you so much for giving me such a patient hearing. Thank you. Very good, Kanchan. Very nicely spoken. Very good story you told. So the gist, if I sum up your presentation in one line, it is uh, do what you enjoy or enjoy what you do. So this is in your hands, and this is how we can reduce the stress. So thank you so much, and thank you our chairpersons of this technical session too, Dr. Ashwini and Mr. Achint. Now we are heading towards our valedictory session. And for this session, I invite Dr. Ashwini as our chief guest. So, Dr. Ashwini, welcome for this valedictory session. I will not take much long because we have already introduced Sir and we have already listened to him. So I'll just give a brief report of this conference since morning till now, whatever we have covered and whatever we have discussed. So here is my report. We began the day with the blessings of Ma Saraswati, followed by welcome speech by our respected HOD. He also released our e-souvenir.
After all these formalities, as protocol calls for it, we began our session with our keynote by Dr. Suman Lata, who explained all the positive and negative impacts of the current situation very precisely. I will not go into the detail because it's already too long. The session was over with a vote of thanks. Then soon after, our technical session one started shortly after the inaugural session. And this session was jointly chaired by Dr. Ajit Kumar Bohit from Jamia Millia Islamia and Dr. Sandeep Kumar from University of Delhi. Uh, they gave very comprehensive views. Then we had some student and some research scholars as presenters. In technical session one, we had 4 presenters. The first one was Miss Divya Dhawan. She was our ex-student of Mewar Institute, and now she is working as administrative and school coordinator in Greenfield Public School. She spoke on the first theme, that impact of COVID-19 on education and its stakeholders. She covered all the topic on student, on teachers, on parents, and on the management, how they are getting affected by this coronavirus and this lockdown situation, of course. Then we had second speaker, Ms. Sharda Moria. She spoke on theme 2, that is challenges and problems in education system that we are facing in online education. That is teaching learning कैसे affect हो रही है, student की engagement कितनी है, कितनी serious है वो, और technology adaptation क्या है. She told pros and cons of all these things plus health issues. Then we had our third presenter. Our third presenter was Miss Chetna, who presented her theme based on the facts. उसने बहुत सारे facts हमें बताए कि कितने school colleges हैं, कितने बच्चों को education मिल रही है, कितने बच्चे are still deprived of this education and all. That was a very good presentation, in fact. And then we had Miss Pratiksha Sharma from Mahatma Jyotiba Phule Ruhelkhand University, Bareilly. She was my ex-colleague also. So she spoke about the main point of her theme was emotional competence, which is very, very important in these crucial time. A teacher has to be very, it is not necessary that he has to be emotionally intelligent, but he has to be emotionally competent. We have to learn how to deal with our students. And after this, we had 2 chairpersons' speeches, presentations. Dr. Ajit Kumar Bohit, he spoke very comprehensively about the objective of education and objective of assessments, and now it is a requirement of the change in the examination, objective, because the scenario has been changed now from Gurukul times to now online system. So we have to reponder over objectives of education. Then Dr. Sandeep, the chairperson, second chairperson of technical session 1, also threw light on the theme. In fact, he gave a very comprehensive insight into this. He gave some very practical suggestions, and I think we all are agreed to his suggestions. Then we began technical session 2 soon after technical session 1 was over. After the technical session 1, this session was chaired by Dr. Ashwini, Associate Professor, and Mr. Achint Terence jointly. In this, we had 3 student presenters. First one was Miss Ananya Dubey. She was also our student in Mewar Institute, and now she is working as English lecturer in one of the public school. She presented on theme 3, that is challenges on education now and next. What will be the future perspective of education post-corona? And then next was Ms. Harshita Singh. Her theme was stress management, and she suggested very creative and constructive tips to manage the stress. Then Ms. Kanchan, she presented her paper on stress management. Recently we heard a very good story told by her, and this is what we had in this technical session. And then we had, of course, Dr. Ashwini gave a very, very comprehensive view about importance of distance learning, telling its negative and positive points both. So here I have some little question here.
In few schools, I heard that they do not even they do not even shortlist the candidates who are from distance learning mode or who have done their studies in private mode. So I think this is where a very eye-opener session for people like this, because distance learning is not an easy job. So this is what sir told us. Uh, he told us very simple and life-related examples: importance of yoga, pranayam, Surya Namaskar, Ashtanga philosophy. In fact, all these things are very, very crucial at this time of COVID-19, when we are locked up and we are having no like socialization. We cannot go out and meet with our friends like we used to have earlier. So this is how we can keep ourselves busy. Then सर मैंने डॉक्टर अश्विनी आपके बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए थे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे को काफ़ी टच की. आपने जो सजेशंस दिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन हैव टू बी चेंज, हाउ टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटीज हैव टू डेवलप देयर ओन सिस्टम टू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ वेरी वेरी मच नीडेड सजेशन ऑफ द टाइम. एक चीज़ और मुझे जो बहुत ज़्यादा अपील की आपकी, आपने जब ये बोला कि लैंग्वेज टीचर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डिस्टेंस लर्निंग में, ऑल्दो दे आर यूजिंग लैंग्वेज लैब एंड ऑल. वहाँ पर येस, इनफैक्ट बीइंग अ लैंग्वेज टीचर माई सेल्फ एंड हैंडलिंग लैंग्वेज लैब माई सेल्फ, सो समटाइम्स आई हैड दैट आइडिया ऑल्सो कि लैंग्वेज में लिप मूवमेंट और लिप रीडिंग का बहुत इफेक्ट होता है, और इनफैक्ट बच्चे उससे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट भी कर पाते हैं बच्चों से जब हम फेस टू फेस उनसे अपनी लिप्स के थ्रू बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, दे सी अवर जेस्चर्स एंड दे फील कनेक्टेड विद अस instead of getting an audio listen and with that. But this is the time we are doing that also, and in fact it is being very useful to us in this time. Then we had Mr. Achin very comprehensively told stress management, starting with the question that is there no stress in our lives? Yes, we do have stress in our lives. And second question was again very imperative, that can we live without stress? आई थिंक कुछ लोग कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, स्ट्रेस तो बहुत है, सुबह से लेके शाम तक स्ट्रेस है, बट आई विल से है दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट स्ट्रेस. कहीं कहीं पर कभी कभी पर स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, व्हेन इट इज़ पॉजिटिव. जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बट इट शुड नॉट बी इन दैट लेवल कि वो एक क्रोनिक डिजीज बन जाए. तो सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया स्ट्रेस को, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताए सर ने, इंटरनल, एक्सटर्नल, acute and क्या था वो, I just skip this word, chronic, sorry. And then mode of stress बताए सर ने. Yes sir, thank you. सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पहले हम लोग बच्चों को कहते थे कि अपने मोबाइल्स ऑफ करो क्लासेस में, लेकिन अब हमने उनको वही दे दिया है. सो कुछ बातें बहुत रियलिस्टिक भी रही इसमें. स्ट्रेस जो होने का एक बहुत बड़ा मेजर कॉज जो है दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपील की कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब हम कर लेते हैं किसी से कि हम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, द वर्ड शुड बी ऑल ग्लोइंग, तो वहाँ पर हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है इनफैक्ट. एंड सेकेंड पॉइंट वाज दैट ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट. जितना हम परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे हम स्ट्रेस्ड आउट हो ही जाएंगे. सो वी हैव टू कोप अप विद दिस स्ट्रेस. वी हैव टू बी what to say that be very practical, be grounded, and we should accept some failures of ours. Every time we cannot be on the top of the world, so we should manage all these things. Social networking, in fact, it is very useful manner to manage our stress, but these days we are avoiding this only. We are keeping social distancing. लेकिन इस स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं. सर ने बहुत अच्छे आसन बताए, सर ने बहुत अच्छी योगा की प्रैक्टिसेस बताई, सूर्य नमस्कार और बहुत सारे आसन बताए, एरोबिक एक्सरसाइजेस, जुम्बा, और ये सब करके हम अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट आई विल से दैट आज के सेशन ने भी हमको इतना स्ट्रेस्ड से फ्री कर दिया है, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी है कि हमें लगता है अब 2, 4, 6 दिन तो हमें बड़े अच्छे से रहेंगे कि कोई स्ट्रेस नहीं होगा. आफ्टर दैट वी विल सी. फिर हमारा एग्जाम ड्यूटी आने वाला है, सर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुझे.
कि यूटी आ रहा है, फिर हमें यूटी पेपर बनाने हैं, तो फिर तब की स्ट्रेस की हम तब देखेंगे. बट अभी तो हम वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, very fortunate to have all the wonderful speakers of this day. Or I'm very honored and fortunate to have you all very good panelists here in this e-conference. And I think this was a grand success. This was a roaring success of our e-conference. Thank you so much to all of you. Now I hand over the mic to Babita ma'am for vote of thanks. अश्वनी सर, हाँ, अश्वनी सर हमारे चीफ गेस्ट हैं. अच्छा, oh sorry, I forgot. Sir, we would like to I would like to invite you for concluding. And sorry, sir, we invited you as a chief guest and I completely forgot. Little bit stressed. Anyways. मैडम, सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी आपके सेमिनार में, कि बहुत सेमिनार अटेंड किए भी हैं और करवाते भी हैं अपनी यूनिवर्सिटी में. आपने जो स्टूडेंट को जो इम्पोर्टेंस दी है सेमिनार में, ये मैंने बहुत कम इंस्टीट्यूशन में देखा. ये एक बहुत बड़ी चीज मैंने सीखी भी है आप लोगों से. आप लोगों का जो ब्रोशर मैंने देखा, उसमें स्टूडेंट के फोटो भी है जी और बड़े अच्छे अच्छे फोटो लगाए हुए हैं, और कोऑर्डिनेटर जो स्टूडेंट है उनके नाम भी है. जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट हियर, लिटिल बिट आई वांट टू शेयर हियर. सर, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये दीज आर वेरी एफिशिएंट टेक्निकल हैंडेड. हम लोग जो है थोड़ा वो लेक्चर मोड पर रहे, तो इससे बहुत ज़्यादा हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं. So these children, they in fact right from the beginning they helped us a lot. So they had to be given credit for. ये हमारे जितने भी साथी और जुड़े हुए हैं, उनको सीखने की जरूरत है. बहुत ही अच्छा लगा मुझे, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सबसे बेस्ट लगा मुझे इसमें. क्योंकि देखिए मैडम, हम तो टीचर एजुकेटर बन चुके हैं, सब चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा लगता है कि हम खुद अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्टूडेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश दी, उनको मौका दिया. बहुत ही अच्छा. इस सेमिनार का सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे लगा, और जो स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दिया, ये भी बहुत ही एक अच्छी बात थी. मैडम, आप लोगों ने स्टूडेंट को मौका दिया. दिव्या धवन, शारदा मौर्य, मिस चेतना, प्रतीक्षा और अनन्या दुबे, हर्षिता, कंचन, जितने भी हैं. अनन्या दुबे का तो बहुत ही अच्छा था, मुझे देखा. हर्षिता, कंचन ने भी. तो सबके प्रेजेंटेशन, खासकर स्टूडेंट्स ने जो प्रेजेंट किए, बहुत ही बढ़िया थे. और आप लोग अपने स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं. आपने बताया भी है कि पहले हमारे यहाँ पे पढ़ते थे, बाद में इस तरह से. तो ये टीचर का साथ अगर इस तरह से मिलता रहे हमेशा, और वो भी नेशनल सेमिनार में थे, बहुत ही अच्छी बात है. हमारे टीचर भी ऐसे ही थे, सलूजा सर वगैरह, जो हमारे टीचर भी ऐसे ही थे, जिन्होंने मुझे हमें अभी तक भी गाइड करते हैं, अभी तक भी. तो ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे. यहाँ की जो गुरु परंपरा है भारतीय संस्कृति की, वो मुझे थोड़ी देखने को मिली. दूसरा मैडम, ऑनलाइन जैसे अगर आगे फेस टू फेस सेमिनार होता. जी मैडम. हमारी फैकल्टी में हमारे स्टूडेंट्स हैं 2-3. जी हमारे फैकल्टी मेंबर्स. जी मैडम. तो ये मेवाड़ ये करता है सर. जी. तो दूसरा, अगर ये फेस टू फेस मोड होता तो बहुत ही अच्छा होता. अजीत से मिल लेते, और मैं दिल्ली होते हुए आता तो अपने मदर फादर से भी मिल सकता था. हमने अजीत में और कई जगह ऐसे बहुत सारे सेमिनार किए हैं जो हम साथ करते हैं. तो उसमें होता क्या है कि मैडम, एक कल्चरल गैदरिंग होती है सेमिनार. आपके स्टूडेंट मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, आप बात करते हैं. केवल टॉक करना, बात करना या मशीन की तरह बात करना ही नहीं होता सेमिनार में ना. जो अंकित सर ने बताया कि एक मेंटली स्ट्रेस दूर करने का बहुत बड़ा जरिया है. मैं अपने घर से कम 3-4 दिन दूर रहता, घर छोड़ के आता, तो वो एक इन्वायरमेंट चेंज होता. तो हम सेमिनार में फेस टू फेस करने में बड़ा बिलीव करते थे. तो ये एक नई चीज सीखी कि ऑनलाइन सेमिनार से क्या हो सकता है. देखिए मैडम, आप लोगों से हो सकता है कि जो डिजिटल दोस्ती कब तक रहती है, ये भी एक चीज कोरोना ने सिखाई हमें. मैडम, पेपर बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे थे. और सुमन मैडम ने जो सुबह बोला था, वो तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया. अजीत जी ने भी बहुत ही अच्छा दिया. और जो संदीप हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें हमेशा कुछ सीखने को मिलता है. वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं, सीआई में भी काफ़ी हैं, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है. और एक जो अंचित जो सर आए हैं, ये फिजिकल एजुकेशन के, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब आप लोगों का होता है मैडम, कि अगर हम सारे एजुकेशनिस्ट बुला लें ना, तो वो भी एजुकेशन से जुड़े हुए, तो वो भी एक हमें दूसरी फील्ड के लोगों को बुलाना चाहिए अपने सेमिनार. तो उनके भी आइडियाज इधर उधर हमें पता चलते हैं बहुत कुछ. फिजिकल एजुकेशन भी काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे अगर फील्ड से भी लोग आए तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है. दूसरा मैडम, आज का जो सेमिनार है, ये इसमें आप इसका एक रिपोर्ट्स वगैरह बना के कहीं, मुझे लगता है कि अगर आप पब्लिश कराएं या रिसर्च
टाइप में Definitely, किसी sir. We are in the process of taking out our e-proceedings of this seminar. We have gathered lot many full papers also as well. Abstract के साथ में e-souvenir तो हमारा हो गया and proceedings also definitely with your blessings we will publish. और मैडम आपके स्टूडेंट बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बहुत ही अच्छे हैं काम करने में, और आप लोगों ने सिखा रखा है। सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब इतने नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आप अपने स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं और वो प्रेजेंट कर रही है, बहुत ही अच्छा है कि हाँ आप लोग टीचर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज में आपका जो डिपार्टमेंट है डीएलएड का, मैं भी अपने हमारे यहाँ भी डीएलएड एमएड बीएड के डिपार्टमेंट अलग अलग, डीएलएड डिपार्टमेंट सबसे मेन लगता है मुझे एजुकेशन में, क्योंकि जो फाउंडेशन है ना वही तय करता है प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन की, ये सबसे मेन है। अगर आप डीएलएड के बच्चों को सही तरह से पढ़ा दोगे तो वो जाके जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वही उन बच्चों की जिंदगी बनाएंगे। तो आपका डिपार्टमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया मैडम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा था। और जो भी मेरे साथी थे आपके एचओडी सर जो है अमित जी और बबीता मैडम ने तो कंटिन्यू कांटेक्ट में रही हैं कि कब क्या कैसे क्या, और इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। और हरवित मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने तुरंत इतनी अच्छी रिपोर्ट मैडम आपने बनाई है बैठे बैठे जिस तरह से। सर मैं साथ के साथ पॉइंट्स आपके लिखते जा रही थी। जी आपने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम मैडम है बबीता मैडम और ये जो अमित सर हैं और पूरी जो टीम है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर मैडम अजीत जी ने का मैं बोलना चाहूँगा बहुत शुक्रिया, अजीत जी की वजह से ये तो पूरा कोऑर्डिनेशन की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ सका। थैंक यू मैडम। आगे भी अगर कुछ किसी तरह की कोई हो तो हम अवेलेबल रहेंगे किसी भी तरह की। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है ना, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सबसे खास, तो मैं भी अपनी आगे के पार्टिसिपेशन में अपने आगे के ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग में रखूंगा। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत आप लोगों सभी को। सर आपने कहा कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन आपको अच्छा लगा, उसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे मेवाड़ का मिशन एंड विजन एंड हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर का जो है उनका सबसे बड़ा सपना ही यही है कि हम अपने बच्चों को आगे लेकर के जाएं। सो टीचर्स आर जस्ट फैसिलिटेटर्स इन द ट्रू सेंस इन मेवाड़ इंस्टीट्यूट। दूसरी बात आपने कहा कि डिजिटल फ्रेंडशिप, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको इनफैक्ट नोट कर लिया। डिजिटल फ्रेंडशिप, it's a new word we have discovered today, and very soon it will, hopefully it will come in the dictionary also. आपने कहा कि अलग फील्ड के लोगों को भी बुलाना चाहिए क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि जो मैथ्स का टीचर होगा उसको पता होगा कि एक सेट और सुपर सेट और सबसेट्स होते हैं। तो एजुकेशन जो है ना, दिस इज अ सुपर सेट, इसके सबसेट्स हैं। जितनी भी हमारी अदर साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल, व्हाटएवर, दीज आर द सबसेट्स ऑफ एजुकेशन. So we can accommodate everything in education, and that is why education is given a full-fledged place of it. So that is all from my side. I will invite Bhavita ma'am for vote of thanks. Thank you very much. Thank you so much. वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ईश्वर ने ये मौका दिया हमें कि हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पाए, और ईश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। और हम सुबह 10 बजे से और अब 3:15 होने जा रहे हैं और हमारे साथ परमेश्वर बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं अपने सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जनरल सेक्रेटरी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, डायरेक्टर मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने जिनकी प्रेरणा और जिनका आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ बना रहता। और मैं अपने पूरी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इनका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ बना रहता है। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज जो सुबह हमने इनॉग्रल सेशन किया उसमें एचओडी सर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर अमित कुमार सर के लिए, जिन्होंने आज अपने वक्तव्य के द्वारा आज की पूरी थीम को बताया, क्या हमारी थीम है, क्या हमारी सब थीम्स हैं और आगे क्या रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अमित सर ने हमें शुभकामनाएं दी मॉर्निंग में, और अभी तक सर हमारे बीच में बने हैं। और सबसे अच्छी बात कि सर ने आज सोवेनियर को भी हमारे सामने रखा, इसके लिए मैं
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं खास तौर से की नोट स्पीकर मैम का धन्यवाद करती हूँ। इनॉग्रल सेशन में मैम आई, डॉक्टर सुमन लता मैम, जो आईपी यूनिवर्सिटी से मैं प्रिंसिपल है मैम, और हमारे बीच में मैम आई, इसके लिए मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैम ने भी अपने की नोट में बताया कि किस तरीके से आज का जो विषय है वो इतना इम्पोर्टेंट था। और वाकई में जैसे हमारे सारे और भी लोग बता रहे हैं कि आज की बात सुनकर हम लोग अपने आप को कितना और एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं डॉक्टर सुमन लता मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इनॉग्रल सेशन से क्या शुरू से ही, और हरमीत मैम ने जो इसकी एंकरिंग की थी उसके लिए भी हरमीत मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बल्कि मैम तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं पूरे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद सुबह से लेकर अभी तक, और हम लोग कई दिनों से इसमें लगे हुए हैं, इसके लिए खास तौर से मैम आपका धन्यवाद और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा फर्स्ट टेक्निकल सेशन था उसमें जो हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन थे, वाकई में अगर मैं कहूँ तो अजीत सर ही इसके पूरे इस हमारे ई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रधार हैं। अजीत सर, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? तो अजीत सर ने ही ये पूरा सबको जोड़ा और हमें बहुत ही प्रेरणा दी, हमें बताया तुरंत, हमेशा जहाँ जहाँ हमें हम फंस रहे थे वहाँ पे सर ने हमें गाइड किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं थैंक यू मैम। आपका। और आपके इस जो आपने हमें गाइड करते हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मंच से यहाँ पर आप सभी को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि सर का इतना मोटिवेशन, इतनी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। और सर ने हमसे कहा है कि मैडम मैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कभी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा और आप लोग जरूर उसको कर पाएंगे, क्योंकि सर काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अजीत सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ थैंक यू मैम। कि आपने हमें मोटिवेट किया कि हम नेशनल के साथ साथ अब आगे का कदम जो बढ़ाएंगे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में बढ़ाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर ने हमें और भी गाइड किया कि आप एडिटेड बुक्स के लिए काम कर सकते हैं, तो सर उसमें भी आपका मार्गदर्शन रहेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अजीत सर, आपका साथ हम लोग को ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं संदीप सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीआईई से हमारे बीच में आए थे, और पता नहीं मुझे अभी हमारे बीच कि नहीं, लेकिन वाकई में सर इतने सिंपल, इतने सादगी वाले हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर से मिलकर हमेशा। और आज भी आप देखिए सर, मैं अजीत सर और संदीप सर दोनों, बल्कि हमारे सारे ही स्पीकर्स इतने यंग स्पीकर्स हैं, और इतने इन लोगों ने इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा अचीव किया हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों को ख्याति प्राप्त है। और वाकई में एक बड़ी दीदी होने के नाते मैं अपने सारे ही स्पीकर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ईश्वर आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाए, और आपको मैं और ऊंचे मंचों पर देखने पाऊँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। संदीप सर से हमेशा जब भी मिलती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी, फोन पर भी बहुत ज्यादा नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा एक पॉजिटिविटी देखकर मिलती है, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं निश्चित रूप से भी हमारे प्रेजेंटर्स हमारे साथ में थे, या जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या नए लोग जो अभी हमारी फील्ड में आ रहे हैं, उन सबको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा आज के हमारे इन यंग स्पीकर्स के थ्रू। और वाकई में वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, कैसे एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो वाकई में मैं आप दोनों ही फर्स्ट हमारे जो सेशन था, टेक्निकल सेशन के जो गेस्ट थे, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमें ऐसे ही साथ देते रहेंगे और हमें गाइड करते रहेंगे। थैंक यू अजीत सर और संदीप सर। अब मैं सेकंड जो फर्स्ट टेक्निकल सेशन में हमारे पास कुछ जो प्रेजेंटर्स थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पर। दिव्या, शारदा, चेतना और प्रतीक्षा, और स्पेशल थैंक्स टू रिंकल। इन सब बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, और जैसे हमारे गेस्ट सर ने बताया भी कि वाकई में बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। और सर यही हमारी
अगर बच्चे हमारे लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो ये ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। ये हमारा मानना है कि बच्चे हमें अप्रिशिएट करने पाए जिनके लिए हम काम करते हैं सर। तो ये इन बच्चों का बहुत अच्छे से रहा और फर्स्ट सेशन हमारा कंक्लूड होने पाया। अब सेकंड सेशन में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर अश्वनी सर का, जो हैदराबाद से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सर वाकई में आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपका एक्सपीरियंस आप इतना प्रभावित करने वाला है, आपका वक्तव्य कि वाकई में हम लोग बहुत बहुत आज आपसे सीखा। और हमारे वाकई में हमारे प्रेजेंटर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा, हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा, पार्टिसिपेशन जितने भी लोग कर रहे हैं उन लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। और वाकई में आप इतने आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है सर, डिस्टेंस अपनी सारी बातें बताई, बिल्कुल अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई। वाकई में ये जो बातें होती हैं ये किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रभावित करती हैं हमें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेयर करने के लिए हमारे सेशन को। और आपसे और भी बहुत कुछ सीखेंगे सर। और मैं अजीत सर से कि हमारी ऐसी ही जो टीम है ये और आगे बढ़ती चली जाए और हम बहुत कुछ मिलजुल कर ये सीखने पाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मैंने सर से बात करने की कोशिश की आपको मैं बता दूं, सर हमेशा इतने व्यस्त रहते हैं और अभी एग्जामिनेशन के कामों में भी सर बहुत बिजी रहे पिछले दिनों। और फिर ये सब लोग बहुत बिजी हैं जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों को आज टाइम दिया। तो थैंक यू सर अश्वनी सर। अब मैं बिल्कुल अपने छोटे भाई अचिंत सर को और बता दो, हमारा हालांकि हमारे साथ सुबह 10 बजे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अचिंत सर और बहुत लोगों को मैं बराबर सुबह से देख रही हूँ और कि बराबर हमारे साथ में है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हम इलाहाबाद को भी इस ई मंच के द्वारा पास में ले आए और हैदराबाद को भी पास में ले आए। तो थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छा वक्तव्य अपना दिया और वाकई में हम लोगों ने हम स्ट्रेस फ्री फील कर रहे हैं आपकी बातों के बाद। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और थैंक यू सो मच अचिंत सर। और आपको, आपके विभागों को, आपकी यूनिवर्सिटी सलाम करता है जिन्होंने आप लोगों को मौका दिया हम लोगों से मिलने के लिए और हम लोगों से जुड़ने के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों के चेयर सेशन में जिन बच्चों ने प्रेजेंट किया मैं उन बच्चों का भी धन्यवाद, जिसमें कौन कौन बच्चे थे, अनन्या, हर्षिता और कंचन, ये 3 बच्चों ने जो है सेकंड सेशन में प्रेजेंट किया। इन बच्चों ने बहुत बखूबी अपनी बात को रखा, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एंकर शारदा का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन बच्चों ने वाकई में अपनी भरपूर कोशिश की। और आप लोग को बता दूं कि रात में भी हम लोग 1-1:30 बजे तक ये बच्चे और सारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी पूरा रिहर्सल कर करके, प्रैक्टिस कर करके ये लोग देख रहे थे। और ये शायद उन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम आपसे अप्रिशिएशन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और अब जो वैलिडेशन सेशन को जो हरमीत मैम ने शुरू किया उसके लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छी रिपोर्ट मैम आपने पढ़ी और आपको तारीफ भी मिली और ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और डॉक्टर अश्वनी ने हमारा फिर से निमंत्रण स्वीकार किया था, हालांकि वो बहुत बिजी थे और लेकिन फिर भी वैलिडेशन सेशन में सर ने हमें बहुत सारी हमारी अच्छी बातों को बताया और जो हमें और क्या करना चाहिए वो सारी बातें बताई। तो सर आपके सहयोग के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए इस वैलिडेशन सेशन में मैं आपका फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके शब्द वाकई में हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हरमीत मैम ने इसको पूरा कंक्लूड किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हरमीत मैम का। अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अपने जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वाकई में मैं हाथ जोड़ के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने भी हमें गूगल मीट पर देख रहे हैं और जितने भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप लोग वाकई में आप
बहुत धन्यवाद। आपकी सारी जो आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स हमें कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से मेरे बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं कॉलेज से। डॉक्टर पूनम मेरे साथ थी, मैम का आशीर्वाद हमें मिला, और बहुत सारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर और बहुत सारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में, जो या तो गूगल मीट पे देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं। और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और एक चीज और बता दूं कि जब मैं पूरा देख रही थी कि हमें किस किस ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, एमबीबीएस डॉक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर जो एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे लॉयर्स ने हमें ज्वाइन किया और लॉ स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया। जैसे हरमीत मैम ने बताया कि वाकई में जो एजुकेशन है उसमें तो सब कुछ मिक्स है। तो किस तरीके से ये पूरा समाज एक साथ जुट कर जो है आगे बढ़ सकता है इस कोरोना काल में, हम इससे कैसे डट कर मुकाबला कर सकते हैं। मैं सारे ही व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे स्कूल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सारे स्टूडेंट्स बहुत जुड़े हुए हैं, और रिसर्च स्कॉलर्स बहुत जुड़े हुए हैं। और तमाम देश से मैंने देखा कि बहुत सारे स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपके साथ के लिए, आपके प्रेम के लिए। और वाकई में आप लोगों का साथ ही हमें मोटिवेट कर रहा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले तो कन्वीनर सर का, जो हमारे एचओडी सर हैं, अमित सर की प्रेरणा, मोटिवेशन, गाइडेंस बराबर हम लोगों को ये सब करता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फिर से अरमीत मैम का धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की ये इस पूरी ई कॉन्फ्रेंस को, वाकई में आप बधाई की पात्र हैं। फिर मैं दोनों अपने कोऑर्डिनेटर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, डॉक्टर राजेश मैम को और डॉक्टर सुषमा मैम को। बराबर इन लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा, तभी ये ई कॉन्फ्रेंस जो है ये सफल होने पाई। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जो हमारी पूरी और भी ऑर्गेनाइजिंग टीम थी हमारी, जिसमें कि गरिमा मैम, प्रिया मैम, नीति मैम, ये सारी टीम हमारी बराबर लगी हुई है। और बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ ये सब चीजें होना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ, और ईश्वर हमारी इस टीम पर ऐसे ही अपना अनुग्रह बनाए रखे, अपनी आशीष बनाए, बहुत सारे अच्छे काम करने पाए। और यहाँ पर जो हमारे डीएलएड के दो सैम सैम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 18-20 19 जो 21 है, दोनों ही बैच ने जो है सेकंड सैम और फोर्थ सैम, दोनों बैच हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बच्चों, ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहेगा तो हम लोग, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और हम लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। स्टूडेंट टीम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसमें शिवानी, शारदा, आयुषी, प्रेम प्रकाश, नीलिमा और रिंकल। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और आप बराबर हमारे साथ हैं। ईश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और अब मैं उन सभी लोगों का, हो सकता है मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन सभी लोगों का मैं, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस ई कॉन्फ्रेंस में जुड़े रहे, हमें उनका साथ मिलता, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और आपका साथ, आपका प्रेम ऐसे ही हम लोगों को मिलता रहे। और स्पेशल थैंक्स लास्ट में मैं अपने दोनों बेटों का करना चाहूंगी, शुभम का, और जो एमटेक है बच्चा, और वो बराबर मेरे साथ जुड़ा रहा। और स्पेशल थैंक्स टू साक्षी ऑल्सो, और क्योंकि वो भी मैं देख रही थी हरमीत मैम के साथ बराबर जुड़ी रही थी। और हम टीचर्स या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आजकल हमारे बच्चे हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार हम कर रहे हैं। तो इस यंग जनरेशन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हम इस मेवाड़ संस्थान की तरफ से। और मेवाड़ संस्थान आप सबका बहुत स्वागत करता है, हमारे परिवारों का, हमारी पूरी टीम का बहुत स्वागत करता है। और आप सब ऐसे ही मिलकर
काम करते रहें। तो मैं अपने दोनों बेटों का, अनुग्रह का और शुभम का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बराबर बच्चे मेरे साथ रहे और आगे ईश्वर उन्हें और हिम्मत शक्ति दे ताकि वो आगे और भी ऐसे काम करने पाए। तो मैं सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बस अपने बात में ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अभी जो इन दिनों घटनाएं चल रही हैं, कि डिप्रेशन की जो घटनाएं चल रही हैं, अभी हमने सुशांत राजपूत का केस सुना। कल भी मैं अमित सर से बात कर रही थी, तो उनका भी कोई पड़ोस में एक बच्ची है, उसका अभी 1 साल पहले शादी हुई थी और उसके हस्बैंड की नौकरी चली गई, उसने भी सुसाइड लिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे बीच में आ रहे हैं। तो आप सब बिल्कुल होप ना खोएं। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने आप को आप लोग समय दें और ईश्वर पर भरोसा रखें। ये समय भी चला जाएगा, हिम्मत रखिए। और इंसान वही है कि जो ईश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि ईश्वर सब कुछ कर सकता है और ये हमारी एक टेस्टिंग है कि हम कितना अपने आप को मजबूत पाते हैं। तो हमें मजबूत बनने के लिए बहुत जरूरत है। तो आप सबको इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब हिम्मत रखें और अपनी सोसाइटी का, अपने परिवार का और खास तौर से अपना बहुत ध्यान रखें और अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा जगत के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं। अपने स्टूडेंट से रियली आप लोग बहुत प्यार करें और उनसे बातचीत करें, कि पेरेंट्स को हिम्मत दें कि ये सारी चीजें सब सही हो जाएंगी। और जैसे स्पीकर्स ने बोला कि अभी जान बचाने का टाइम है ना, तो अभी हम अपनी जान बचाएं, पढ़ाई भी हो, काम भी हो जाएगा, डिग्रियां भी आप ले लेंगे, लेकिन अभी अपने आप को सेव करें और बहुत क्वालिटी टाइम अपने परिवार को और अपने साथियों को दें। स्पेशली अपने फ्रेंड्स को जरूर याद रखें। राजपूत के साथ जो सुशांत राजपूत है, उनके पास कितने मिलियन लोग थे, जुड़े हुए थे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर और कहाँ, लेकिन कोई एक रियल फ्रेंड नहीं था क्या उनके पास, जो वो अपने दुख दर्द बांट सकते। तो हम अपने दोस्तों को अपने वाकई में अपने करीब रख के उनका हाल चाल पूछते रहें। तो थैंक यू सो मच। ईश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और अजीत सर ने जैसे हमें एक होप दिखाई कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और वेबिनार करें, तो देखते हैं ईश्वर हमें कब मौका देता है उस चीज को करने के लिए भी। तो इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Babita ma'am. And now it is the time for our national anthem. So I would request all those Thanks to all of you. to please stand up for the national anthem. I'm going to play national anthem with अधिनायक जय हे भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
मैं देख रही थी सर, लास्ट में जब धन्यवाद सेशन चल रहा था तो सर थोड़ा भावुक हो गए थे। सर को बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि बहुत सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। थोड़ी सी टेक्निकल पिच रही बीच में, अदरवाइज इट वाज ऑल वेरी गुड। सर आप कुछ बताएंगे? अमित सर। हाँ, बस सब अच्छे से हो गया। और एक मिनट जरा मैं ऑन कर लूँ। और थैंक यू सो मच। सब कुछ ऑफिशियली अब हो चुका है, अब हम बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं। जी यस सर। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। हाँ, सबसे बड़ी बात ये लगी कि बड़ी आत्मीयता लगी। सभी जो गेस्ट स्पीकर थे तो बहुत ही सहज अपनी बात उन लोगों ने रखी है। कहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा उस तरह की इंटेलेक्चुअल टॉक हो रही है। बहुत ही सहज अंदाज से सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा और बड़ी आत्मीयता के साथ में इंटरेक्शन हुआ, तो ये बहुत अच्छा लगा। और लगभग सभी जो गेस्ट स्पीकर थे उनकी किसी न किसी बात को मतलब जो है एक किस्म से असर डाला उन्होंने। और हर गेस्ट स्पीकर की कोई ना कोई बात बहुत अपीलिंग लगी जो है। और अश्विनी सर ने तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में अपनी बात रखी। और मैडम ने जो सुबह इनोगल किया था उसमें बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में चीज़ें डिलीवर हुई। उसके बाद फिर डॉक्टर राजीव सर का जो था उनका बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव था कि सारी बातों को उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में लेकर के जो है रखा। और अजीत सर का बहुत मतलब नेचुरल बहुत वास्तविक बातें उन्होंने इस समय रखी जो चल रहा है होने वाला है। उसके बाद लास्ट में जो हमारे अंजित सर थे उन्होंने बहुत ही नेचुरली प्रेजेंट किया अपना जो थीम था उसका, ये जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था। और बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए और बहुत अच्छी मतलब सिचुएशन को सेंसिटाइज किया कि किस तरह की सिचुएशन सामने भी आ रही है आने वाली है। तो अच्छा लगा। और बाकी आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा शानदार काम किया जो है सब बधाई के पात्र है। और बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें सब लोग जुड़े और सबका बहुत अच्छा कमेंट मैं देख रहा था सभी लोगों का, बाहर से बहुत अच्छे कमेंट्स लोगों ने दिए। और ख़ास तौर से अपने बच्चों का और जो हमारे पास आउट बच्चे हैं बीएड डिलेड के, उन्होंने जो भी प्रेजेंट किया बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने इन सब बातों को रखा। और ये मैं ऐसा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों की का मौका जब इस समय मिल जाएगा तो ये वो निखर करके आएंगे और बड़े बड़े मंचों पर जा करके वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और इससे इन सब चीज़ों से देखिए हम लोग को भी सीखने को मिल रहा है और बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है। और ये पूरे प्रोसेस है, सीखना सिखाना चलता रहता है। एक तरफ से सीखना होता है, एक तरफ सिखाना हो रहा है, एक तरफ से सिखाना होता है, एक तरफ से सीखना हो रहा है। तो ये भी बच्चों के लिए, डीलर के बच्चों के लिए खासतौर से वेबिनार का या कॉन्फ्रेंस का इनको एक्सपोजर देना या इनसे पेपर लिखवाना और इनसे एब्स्ट्रैक्ट लिखवाना, वो कैसे लिखा जाता है उसकी जो भी स्किल्स है वो भी सब इनकी इस समय इम्प्रूव हो जाएगी। और किस तरह से प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करना है, एंकरिंग करनी है, प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें भी की ट्रेनिंग साथ साथ इनकी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन के पीरियड में इनको इस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारी बड़ी गर्व की बात है कि जब हम इस तरह से टीम वर्क करते हैं तो सभी का अप्रिसिएशन करते हैं, वो हमें और मोटिवेट करता है कुछ और अच्छे से अच्छा आगे करने के लिए। ये सब बातें थी थोड़ी जो दिल से निकला वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया सर। हाँ जी, तो कुछ लोग जुड़े हैं अभी सब भी हो गए हैं। हाँ थैंक यू सर। अनीता चौहान मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? मैम अनीता चौहान। हाँ जी अनीता जी बोलिए। अनीता चौहान मैम, ये मैम हमारी ज्योति कॉलेज की एचओडी हैं
तो मैंने परसों मैम को फोन किया, मैंने इनको बताया तो मैम कहने लगी कि हम लोग तो अभी टॉपिक ही फाइनल नहीं कर पाए और आप लोगों ने प्लानिंग भी पूरी कर ली। तो मैम 12% है, आप ज्वाइन कीजिएगा। और मैम पूरी सुबह से लेके अभी तक हमारे साथ हेलो पूरे हेलो हाँ जी मैम। अनीता मैम हाँ अपनी जो वीडियो भी हनी ऑन मैडम कीजिए। हाँ जी मैम, अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए जरा। हाँ मैडम ऑडियो भी ऑन करें? हाँ वीडियो भी ऑन कीजिए, ऑडियो आप कैसे ऑन देखिए। होगा? मैं दिखाना चाहती हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को आपको। हाँ मैं आप लोगों कोई का नहीं। लगातार सुन रही हूँ हाँ जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं हनी मैडम आपको, बाकी सबको, इसलिए कि मैं आपका नाम जानती हूँ, आपका काम भी जानती हूँ। बाकी आपकी सब टीम के लिए भी मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। थैंक यू मैम। धन्यवाद धन्यवाद सभी को, बहुत ठीक है बहुत मैम, धन्यवाद। आपसे फिर मैं बाद में फोन पे बात करूंगी, आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक बाद में लूंगी मैं। नहीं अच्छा लगा, बस मैं बीच बीच में, आप जानते हो मुझे इतना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, फिर भी ऑनलाइन सिखा दिया कोविड-19 ने। हाँ वो सब हमारे बच्चे लगे हुए मैम, साक्षी लगी हुई है पूरा टाइम सुबह से मेरे साथ बैठी हुई है। मैं देख रही थी, साक्षी को देख रही थी मैं। तो बच्चे ही हैं वो सब हमारे, कर्णधार सूत्रधार मझधार में हमारे खड़े हुए सब वही है। वो हमारा तो आप जानते हो मुझे शौक नहीं था, लेकिन वो जब ऑनलाइन एजुकेशन लेने की बात हुई तब फिर ये सब सीखा मैंने। लेकिन अभी आपकी तक तो सीखने की जो है ना इच्छा अभी भी बहुत प्रबल। शिक्षा का ये भी पूरी समझ लीजिए अभी तो आप। जो भी है लेकिन ये भी एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। ठीक है आप मैम, ना बहुत, आपका काम हमेशा हर जगह अच्छा रहता है, आपके सभी थैंक यू मैम। साथियों का साथ, तो इस से काम हो जाता है। जी जी, और आपको बहुत थैंक यू सो बहुत मच मैम। कामनाएं भी, हेलो। धन्यवाद भी, आपने जी हमें जी स्पेशली याद किया उसके लिए भी। हाँ मैम, इस बार हमारे बरेली के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारे कॉलेजेस के लोग, खंडेलवाल हाँ कॉलेज और बरेली कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग जुड़े थे। इस बार बहुत जगह भेजा था ब्रोशर मैंने यहाँ हमने। पे भी बोल दिया था, तो हमारे कॉलेज के भी जुड़े हुए थे 2 लोग, औरों का पता नहीं, शायद सामने सामने अभी 2 लोगों को तो मेरे सामने सामने देख रहे थे, तो इसलिए मुझे पता है। बाकी और लोग घर पे है ना अभी मैडम? जी 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 जी, सारा आप कॉलेज स्टाफ में घर हैं पे अभी इस है? समय? हैं? आप कॉलेज में हो इस समय? हाँ हम लोग और जेंट्स स्टाफ तो कॉलेज में है, और एक मिथिलेश गंगवार है, वो भी है यहाँ पे, बाकी सब लेडी स्टाफ अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, हो सकता है उन हेलो। लोगों ने घर पे अपना चला रखा हेलो। हो। हेलो हाँ हाँ। गरिमा, हाँ हेलो गरिमा, हाँ जी गरिमा। मैम, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि कॉन्फ्रेंस के लिए एचओडी सर, बबीता मैम, आपको, सुषमा मैम को, राजेश मैम को, प्रिया मैम को, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि हमारी टीम ने इतना सक्सेसफुल ये कॉन्फ्रेंस कर लिया। हमारे बच्चों की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रही और हमारे स्पीकर्स भी हाँ, हमारे इनफैक्ट बच्चों ने भी बहुत बहुत अच्छा किया और स्पीकर का तो कोई स्पीकर्स तो जवाब ही बहुत नहीं ही है। अच्छे थे, बहुत ही हाँ अच्छे थे, सभी एक से एक बढ़कर थे। मेन मकसद तो बच्चों को ही सिखाना है, हाँ जी वही जी अगर सीख जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। हेलो 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 थैंक यू मैडम। थैंक यू। हेलो हेलो मैम, फीडबैक के लिए वो आने लगा है मैसेज। हाँ मैंने अच्छा डाल तो दिया था कि फीडबैक मैं बाद में वो करूंगी। ओके, नेशनल वेबिनार वाला जो है उसमें फीडबैक के लिए मैसेज आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, नेशनल वेबिनार के मैं तो इस वाले में नहीं डाला नहीं, था कॉन्फ्रेंस में। इस वाले में भी आ रहा है मैसेज, क्योंकि इस पे भी डाला था ना हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, हाँ तो जब हम अभी फीडबैक का फॉर्म ओपन करेंगे तो जैसे हमने ये अपना लिंक सबको मेल किया था, ऐसे फीडबैक वाला भी सबको ओपन कर देंगे। ओके हाँ तो उसमें डाल फीडबैक दीजिएगा। ईमेल के थ्रू हेलो भेजेंगे। मैं जो हूँ हेलो। ना, मैं उसमें से क्विट हो गई हूँ नेशनल वेबिनार वाले ग्रुप में से, उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा हाँ कि हाँ हाँ, वो है ना, तो और थोड़ा सा सर्टिफिकेट और जो हमारा सोविनियर है वो हम एक साथ ईमेल करेंगे। हाँ ठीक है जी। ठीक है फिर सभी को। ओके मैम, फिर हेलो, लैब का गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके मैम। जी सुषमा मैम। Thank you for this opportunity, especially Amit sir, Babita ma'am.
और बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ है, सबका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ लर्निंग किया है हमने इससे, बहुत कुछ सीखा है आज इससे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ मैं सभी का कि ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली और हम इस सबको मिलके एक ये टीम वर्क था, सब लोगों ने मिलके एक अच्छे से किया थे, हम सक्सेसफुल इसमें सक्सेसफुल हो पाए। तो ये सबका एक टीम वर्क था और स्पेशली अमित सर के गाइडेंस में हरमीत मैम ने किया, हमने सबने मिलके किया, तो सभी को थैंक्स। और जो भी यहाँ भी एट प्रेजेंट हैं, चाहे जो भी प्रेजेंटर्स हैं, सभी ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज तरीके से किया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा कि भाई कैसे हम लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, जो कि आज हमारी पेंडेमिक स्थिति है, जो भी हमारी इतनी हम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन सब से हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो सब हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमें इससे नॉलेज मिली। और जो हम सीख रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही बच्चों को सिखाएं, या सबको जो भी अपने आसपास रिलेटिव्स हैं या जिनको भी हम कर सकते हैं, उनको हम इस एजुकेशन को ज़रूर प्रोवाइड कराएं, इस सब के बारे में बताएं कि आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो, क्या क्या सिचुएशंस। और एक आपकी लाइफ में इस चीज़ से एक और चीज़ मैंने बहुत सीखी कि आप जैसे कि अभी बबीता मैम ने बोला था कि सुशांत के लिए ज़रूरी है कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त ज़रूर हो, क्योंकि दोस्त एक ऐसा होता है ना, दोस्ती दिल से होती है, ठीक है, कभी भी माइंड से नहीं होती है, दोस्ती दिल से होती है, हो जाती है कहीं भी जब हमारे एक थॉट्स मिलते हैं। तो हमारी लाइफ में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपना सब कुछ शेयर करें, और जो कुछ भी ऐसा दोस्त जिससे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जो आगे कहीं हमें उस दोस्त से डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा दोस्त हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। जो भी सिचुएशन हमारी चल रही है इसमें तो बहुत ही ज़रूरी है हम एक दूसरे के साथ सोशल कनेक्टिविटी रखें, सबके साथ सबकी सुख दुख की ध्यान में रखते हुए सबको ज़रूर सुने, सबको ज़रूर पूछें, और सभी का ध्यान रखें हम लोग इस ऐसे जो हमारी सिचुएशन है आज की। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए सबका ध्यान रखें कि किसी को भी किसी भी तरीके से कोई हर्ट ना हो हमारी वजह से, और हम सिचुएशन को जो भी आज की सिचुएशन है उनको ध्यान में रखते हुए आगे चीज़ें कार्य करें कोई भी। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और ऑल एंटायर टीम्स, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। लीव करते हैं, लीव गॉड करते ब्लेस हैं। यू। 2 बजे का टाइम था, 3:30 हो गया, लेकिन हम लोग 3:40 हो गए, 3:40।